You know, good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome to all of you to the second day of World Summit on Disaster Management, WSDM 2025. Ladies and gentlemen, we had a power-packed day one, a lot of fruitful deliberations, the opening session, the remarks by Professor D.K. Aswal, the inaugural session graced by Honorable Chief Minister and Honorable State Minister Independent Charge. Hear it from. I am very honored to welcome you all on behalf of Graphicera Fraternity, on behalf of the organizing committee of WSDM. We have amongst us as a special guest and chief guest Sri Shankar Korangaji, Honorable Rajya Mantri, Uttarakhand Sarkar. We have our very own powerful, dynamic, and the most moving Indian Administrative Services Officer, Sri R. Meenakshi Sundaramji, IAS, Secretary Planning and Development, Government of Uttarakhand. Put your hands together and please welcome them. I'll like to request Honorable Director General UCOST, Professor Durgesh Panji, to present a floral welcome to both the dignitaries. I'd like to request Professor Pant to present a floral welcome to Mr. Rajiv Sinha, IIT Kanpur, the chair of this plenary session. Ladies and gentlemen, it's going to be a very, very powerful session. We have amongst us Professor Rajiv Sinha from IIT Kanpur as the session chair, Dr. Raghavan Krishnan from IITM Pune as an expert, Mr. Arvind Kumar from India Water Foundation, Dr. Rakesh Bhamri from Wadia Institute of Himalayan Geology, and Dr. Sapnamita Videshwaran from Wadia Institute of Himalayan Geology. Professor Gehlot, my apologies, sir. Your name was missing from the list, but then your presence itself is marked. Professor Gehlot, the Director of Wadia Institute of Himalayan Geology, and an institute of national importance and eminence. I extend a very warm welcome to all of you on this pious occasion. Ladies and gentlemen, it's going to be a discussion on water, the most powerful and the most important entity in life. Before I call upon Dr. Swapnamita to moderate the session, I would like to submit that सूखी दरिया को रवानी चाहिए, जिंदगी प्यासी है पानी चाहिए, वो बहुत गुमसुम है अब वो रोएगा, पलकों की कतारों को भी पानी चाहिए. Thank you so much. We'll start with the session. Good morning, everyone. We start our water conclave, and within the water conclave, we are going to host today's scientific session, which will be little technical for everyone. But please try to understand, because there are very eminent speakers today, and they have come from all over the country just to address you.
and disasters and Himalayan disasters. So the name of this session is Himalayan Water and Climate Disasters, Building Resilience in a Changing World. And appropriately, our speakers are going to touch on subjects which are of very pivotal interest in context of Himalaya and the Himalayan ecosystem. I welcome to the dais our chair today, Professor Rajiv Sinha from IIT Kanpur. His specialization is river science, geomorphology. He has worked extensively in river systems and also in modeling, debris flow modeling. And geomorphology definitely plays a very important role in today's context. I now welcome the other speakers of the session, Dr. Raghavan Krishnan. His expertise is climate modeling and analysis. He is a meteorologist and a very, very famous climate person. He has been he is retired director from Indian Institute of Tropical Meteorology, IITM, Pune. He is now adjunct faculty in NIAS, Bangalore. I call to the dais Professor Anil Kulkarni. He is from ISC Bangalore, Divecha Center for Climate Change. He is a very, very well-known glaciologist, has worked decades and decades in glaciers. He is known for his contribution all over the world. We have now Dr. Arvind Kumar from India Water Foundation. He has worked in policies in different ecosystems, but especially today, he is very important because of his expertise in mountain wetlands. And mountain wetlands are something that probably we do not even understand that there can be wetlands in the mountain. So I welcome Dr. Arvind Kumar. I welcome to the dais Dr. Rakesh Bhamri from Wadia Institute of Himalayan Geology. He is a glaciologist, has worked extensively, and he's the best person to give us a status on the glaciers of, in fact, northwestern India, but probably today he will speak especially related to Uttarakhand. We shall now start the session. To touch on what outcomes we want from this session, we want enhanced understanding of the water climate disaster scenario. We want to understand what is the present status of glaciers, our rivers, our freshwater systems, and what impact they have due to a changing climatic scenario. We want to understand key resilience and building strategies and policies, which can be our priority. We want to understand strengthened collaboration for climate adaptation. And also, most importantly, we want to understand what can we outline as the next steps for integrating the water management and climate policy and development for planning and managing disasters in a much better and resilient way. So we look forward to probably how to set up early warning systems, and we want to know that what we can understand to manage water and water related disasters in the Himalayan system. I give the dais to our chair, Professor Rajiv Sinha, sir. Good morning, everyone, and welcome to the session. It's a pleasure to be here, and I thank the UCOS for organizing this session and Dr. Swapnamita for coordinating this very important session on the Himalayan disasters, on river morphodynamics and sediment-related problems, and of course the landslides, since we are sitting in Uttarakhand today. So I'll start with, this topic, and the title of my talk is
very carefully chosen. I have used the word cascading river disasters in the Himalaya. And why I use the word cascading is that we are used to kind of treat the individual disasters in isolation, floods, landslides, cloudburst, etc. But what we have seen in recent years that many of these disasters follow upon each other. And sometimes one disaster becomes the triggering mechanism for the next one. And this is why the cascading term comes here, because and we are not used to dealing with such kind of disasters because we keep waiting for earthquakes, effects, and what happens eventually is a landslide followed by floods, for example. So our preparedness, our understanding has to improve significantly to understand these cascading disasters which are followed one after another. So that's the title. So my first slide is that we started living very close to the places which are vulnerable, which are risky. The land use, land cover had changed in many parts of the planet, and therefore all of these natural processes have become a catastrophe, and that is the fundamental issue which we need to understand. So therefore each of these natural processes, natural hazards, they have changed into catastrophe. And the nature and the impact of these hazards have kept changing through time, and this is where the role of the environmental geologist comes into picture, that our job is to eventually identify these potential hazardous processes, to make them available to the planners and to the decision makers, and then eventually to help formulating the various alternatives. That's the job of the environmental geologist eventually. And therefore, what I say, that the naturalness of the hazards is the philosophical barrier. We need to cross that barrier. We need to understand that each of these processes are natural, and what we need to understand is not when they occur and why they occur. It is also important to understand what are the driving processes and how do we then mitigate them. So rather than treating the disasters, we need to treat the root cause of the disaster if you want to find a long-term solutions, for example. So that's the point I would try to drive in today's talk. Now, what we ultimately need in this kind of analysis is, first, we need to understand the distribution of these hazards, location, where do they occur, what is the local, regional, and global distribution, what is the probability of occurrences, which is often called the frequency analysis, what are the precursor events, can we kind of issue a forewarning, what are the early warnings which we can get of that, scientifically, process-wise, and so on, and then lead to the forecasting. And that all of that depends upon a very comprehensive data and analysis. And of course, when you want to reach to the warning stage for each of these disasters, a very comprehensive scientific analysis of these disasters is required. And that's a standard way all over the world. So this is how the system works. Your data needs to be analyzed. Scientists have to work on that. We look at the review group. We issue the analysis data, and then we issue that results to regional officials, and there is a flow of information. So in disaster management, one of the very key thing is that it is not enough to produce the scientific finding. It is also equally important that the information and the warning reaches to the last mile. And that is where the efficiency of the system, which is managing the disaster, actually comes into picture. So the science has to be translated into action, and the action has to be translated into implementation and reaching to the last mile. That is the important point which I wanted to drive. Now, in recent years, the Himalayan river basins have seen a number of disasters, starting from the Uttarakhand disasters in 2013, the Kosi flood in 2008, and so on and so forth. And in many of these disasters, we have seen that the root cause of the problem is not the severity of the process itself or alone. It is also because the loss and the damage has happened because
of the wrong, unplanned management. What is our current understanding of these, and my fellow speakers will further deliberate on that as well. This is one example. I picked up the June 2013 floods, which happened, which is popularly known as the Kedarnath event. A very large area was impacted, from this area, Mandakini Valley. A lot of people were affected, and and then of course what it followed up was a big loss of life and event as well. Another event which happened in 2014, these are random events I picked up, which happened in July 24, and then that eventually led to a big event again in Sonprayag, big landslide coming up here, and so on. So these are some known events. Then the most recent one, which most of you have remembered, June 24, August 25, the Dharali disaster, which happened again, and and everybody has seen what happened in this disaster. These videos have been viral on the internet. And this is the point I wanted to drive, that what you're looking at here is not a classical flood of water. You're looking at an event which is hyper-concentrated sediment, charged material, which is flowing across the valley and literally destroying everything which came on the way. And that is the point I want to drive, that when these waters, they become charged with sediments, the erosive power and disastrous nature becomes 10 times more than only if water is moving. Okay, and that is where Himalayas are, of course, the youngest mountain chain in the world. They produce a lot of sediments, and therefore sediments are always available in the system. And when they get mixed with water, they become absolutely hazardous. So this is what we need to understand. And so what I'm going to talk about in the next few minutes is how do we understand these river-related disasters. The three topics which I have picked up: river morphodynamics, flood risk, and then the sediment dynamics. What I'm trying to emphasize that here we need to develop much more effective river management strategies without impairing a lot to the rivers as well. We need to understand how do we strike a balance between the human needs and the disaster protection. So this is my first example or slide. I want to just drive upon the fact that the rivers are a very dynamic system already, right? And this is a very famous Lane's model which tells you that the processes within the rivers are primarily governed by the water part or the slope, and then the sediment part as well. And it is a balance between the energy, the stream energy, which is governed by slope and discharge, and the sediment, which ultimately drives the water or the river systems either to upgrade or to degrade. And what we are driving, what we are trying to understand here is that how much of these fluxes of water and sediments have changed through time, what are the drivers of this change, natural versus anthropogenic, and what are the major impacts of these changes on the river processes and morphology. Why it is important? Because we need to understand what is the future trajectory of these changes, what is the implication for the river management, and how do our future rivers actually look like, for example. So going from here, this is how we try to develop the process response framework. We try to look at the water part, discharge, the sediment load part of it, and how these processes are interlinked. That is what is shown here. And you can see that just these two parameters drive most of the processes which are operating in the system, starting from sediment generation to river changes, bed level changes, super elevation, migration of the river, and then eventually floods as well. So this slide very clearly shows that if you don't understand the linkages among these processes, it is extremely difficult to manage and manage any of these hazards as well. So this linkage of the processes is the critical point to understand. Of course, there are many modern techniques now to develop the morphodynamic models, to understand it using space technologies and GIS-based methods and so on. But the fundamental point is that you must understand this process as well if you want to, to develop the sustainable strategies here.
So this is my first example. I just wanted to highlight the point that this is a river which flows very close to Jammu, and again it suffered a very major disaster recently. What we are looking at is that how the morphology of the river and the positions of the channels have changed through time. And you can see these different colors basically tell you that the total zone which the rivers actually occupied. There are some quantitative data in terms of how the channel bed moved up and down, and we demonstrated this work was done a couple of years ago before the recent disasters happened, and we showed that about 50% of the channel bed reduced in the downstream reaches because of the interventions and because of many other, and of course a lot of human occupation happened very close to the river as well. Now, and then we looked at the historical scale dynamics. We looked at the sedimentation stories, and then we connected that to the flood hazard. So we produced these flood hazard maps for the Jammu region, and this was actually a World Bank project. And at that time, these bridges were under construction, and we warned them that don't go ahead with these bridges because they will not survive. This was, you can see this picture was taken in 2018 when we were doing that project, and this entire area was damaged, gone, washed out completely in 2025. So although we said that these are not the right location for the bridge because they were falling in a very high flood prone areas, they still went ahead, and the entire bridge, after mostly constructed, this was totally washed out. Look at the vicinity of the river where the houses were there. These houses are totally unsafe. You have to create a space for the river to do its function and create a buffer and protect that region as well. None of these land use regulations are followed, unfortunately, in many of these places, and that eventually results into a huge damage. This is just an example to show how are we managing the river floodplains, etc., and so on at the moment. Let's move on to the sediment cascades, which is my main topic for today in the Himalaya. In the Himalayan basins, a lot of interconnection processes are operating. You have glacial lake outbursts, we have very strong precipitation happening, a lot of mobilization of the sediment which are happening, and then of course leading to landslides, converting them into debris flow, etc., and so on. So some of the questions which we are asking today is how do we understand these dynamic risks which are involved? How do we call these accumulated sediments as sediment bombs, and we think that the remobilization of sediments can result into a very major impact, particularly the one which I just showed you, the Dehradun event. So how do we understand the relationship between these sediment bombs, the mobilization of these sediments, and then eventually converting into the debris flow, etc., and so on. So there are multiple stages of these sediment-rich flooding. For example, you start with sediment accumulation, you triggered an event, you then start the downstream propagation, and then you start deposition and then remobilization. So that's how the system actually works in this kind of a system, in this kind of a region, and therefore an integrated understanding of the entire process from sediment generation to remobilization to debris flow is actually becomes critical here. So just a quick work which we did recently, this is yet to be published, of the post-mortem analysis of Dehradun disaster. We have been looking at the multiple events. This happened on 5th of August at about 1:30 p.m. caused about 60 deaths and perhaps many missing people. This caused the complete disruption of the NH34, and then of course another event, by the way, happened a couple of hours later at Herschel, and that again resulted into a lot of damage as well. So what the data showed us, we also looked at the land use and cover data sets, that there was a doubling of the infrastructure since 2011 in that region, particularly most of them sitting right on the alluvial fan up here, for example, and that placed the entire community right in the pathway of that flow, which was created by this disaster. So these are some field photographs and damage which I'm sure you have seen a lot in the newspapers as well.
So we did a very quick analysis of the debris flow modeling of the Dehradun disasters. I looked at the geomorphology, morphometric analysis, rainfall analysis, and we ran a very quick RAMS model. And we are trying to say that this trigger for this event was not a singular cloudburst, but a sustained antecedent rainfall about 200 millimeters over 30 days, and that saturated the entire material which was sitting there, the source material, and that got mobilized into the system as well. And our modeling results basically showed that there are about 8 meters of flow heights and about 60 kilopascal pressure, and the deposition extent was very large, which actually matched up quite nicely with the actual inundation which happened here and so on. So the point is that this kind of events like the Raleigh flow is a catastrophic event, but this was yet predictable if we were monitoring those areas well, and that resulted from a very fatal convergence of the inherent landscape susceptibility, recent climate trigger, and of course an acute human vulnerability, failed land use planning, I would say, for example. So these disasters are happening, and if you don't take notice of that quickly, I think they will happen much more frequently in future as well. Let me move on very quickly to the next very important topic I wanted to cover, and that's a sand mining, in the Himalayan region. A very, very common problem, and again leading to multiple disasters in this region. So sand mining is again known to be generating a lot of negative impacts in the system. A complete degeneration of the landscape, as you can see. This is a picture of the Gaula River in the near Haldwani, and you can see how the river looks like today. If you go there, you will actually feel like crying. This is an extreme, extreme impact of sand mining in that region. And what we have been trying to understand, what are the morphological responses of these rivers to sand mining? How do they impact the connectivity? How do they perturb the balance between sediment entrainment and deposition, etc., and so on? And when we looked at the historical data sets like satellite images and maps, this is how it looks. It's just amazing. So we took the base year as 1976. The mining started around 1989 or 1990s, and that's how, this is, by the way, a regulation also came up around the same time, a barrage here, and that kind of regenerated the river a little bit. The blue color is basically the river water line, but then mining started around 90s, and then the river started to degrade completely. As of now, you don't see the water part anywhere down here, for example. It's totally dry, totally ephemeral river. Water flows only for a few days in a year, and most of the river is gone, basically. There's no river, there's no trace of a river. The middle part is even more dramatic. You can see that the nice, multi-channel bedded system was converted into a single channel system because of regulation. The barrage came up, up here, and then, it's been kind of converted to an absolutely dry bed here. All the morphological diversity gone, all the ecology gone, everything gone, basically, right? So this is what we have done to these kind of rivers, by sustained mining. Morphology is gone, and of course we have impacted the hydrology and sediment transport behavior of these systems as well. So we looked at a series of impacts, geomorphic impacts. Look at this bridge, for example. The entire pier of the bridge is exposed because of sand mining. How long and when will that bridge fall is anybody's guess, for example. Look at the river bed. They are completely covered. Look at the terraces, about 11 meters of incision here. You look at the river bed again, mining pits. Look at the excavation, 4 to 5 meters of excavation. Entire truck is hidden behind that, and so on. So this is the extent of sand mining which we are doing. And if you look at the mining rules of Ministry of Environment and Forests, you are only allowed to take out 0.9 meters of sediment from any location, and the two sites of the mining should not be more than about 5 to 10 hectares. Here we are talking about a continuous stretch of 33 kilometers of river being mined continuously, and all the rules are gone to the haywire. So this is what we are doing to the natural systems here. So we looked at the system, we looked at how do they work. This is my specialization. I look at the process response system. So we looked at
what the in-channel excavation is doing to the change in base level. Of course, they lead to extreme erosion, increase of stream power, so they increase the erosive power of the river much more. They result into channel bed narrowing, thalweg fixing, and so on. The selective removal of sand or gravel and leaving behind the coastal material, that produces a very special effect which is called bed armoring, and that bed armoring eventually results into the loss of connectivity of the river from upstream to downstream, fluxes change, stream power change, and again lead to erosion. So the overall effect of all of these is basically erosion here. You also remove the vegetated bars, which ultimately stabilize the rivers and put the sediments in place, and again you lose the entire geomorphic stability as well. So this is how the process works. We have been trying to advise the government on that. We have just submitted a big report to the Ministry of Water Resources, and they are trying to now notify this region and also other states how to stop this. And again, we integrated all the data sets. We actually worked on multiple sections. We mapped the entire river in terms of the severity of the mining, devising our own system of impact assessment and so on. And then we looked at, this is how a highly impact reach will look like, this is how moderate impact reach will look like, and low impact reach will look like, etc. and so on. And all of this has now been converted into a policy guidelines for the government. We have suggested these guidelines, and they are now being notified by the NMCG, National Mission for Clean Ganga. So what we are trying to say, that you must establish a reference state first. You look at the aggradation and degradation zone, you look at the safe mining depths, you look at the river stability, the morphological changes, and then you establish the continuous monitoring and the ecological hotspots as well. So we are not saying, and I must emphasize this here, that we understand that sand is a very important resource material. We are not saying that you must ban the sand mining, but a sustainable sand mining. Himalayas are also very sediment charged rivers. If you do nothing, then also they will lead to other problems. So therefore, the sustainable and systematic extraction of sediments is important, but you must do it from the places where you should be. Not everywhere, and definitely not in a very long stretch of about 30 kilometers or so. So we are trying to do some of that. So I'll close with this by saying that the Himalayan rivers are extremely dynamic systems, and we need to get into the process. We need to understand their behavior and change. And I distinguish these two parameters. Behavior is something which the rivers are used to do for time immemorial. But when this behavior and when these processes, they cross a threshold, they produce a change. And that's what we need to ultimately be careful about. Sediment, as I mentioned, is a major problem in the Himalayan systems. We need to look at much more seriously. They're leading to cascading disasters. And of course, the prediction and the modeling of understanding of these disasters and conversion into the policy guidelines is extremely important to do that. And as I showed in case of the sand mining, similar policies need to be designed for landslide warnings and early warning systems, etc. and so on. So I leave here with this thought that we must start thinking of the river-related mountain disasters as a process response system, and try to get deeper into the understanding of these processes and then design the policies accordingly. I'm sure our Principal Secretary Development and Planning would look into these issues and get into the system that a blind planning is not good for the system. They will come back to you time and again, and you will end up spending much more resources and money than if you do a sustainable and a thoughtful planning on that. Thank you so much for your attention, and I look forward to interacting with you. Thank you. Thank you so much, sir. Should we take a few questions? Anyone? No questions? We can also take it at the end. Yeah, we can maybe do it more and then, things will sure. come up. Thank you. Okay. I now call to the dais Dr. Raghavan Krishnan. Thank you. Can we do the presentation? First of all, good morning to all of you, and I want to thank the organizers
for giving me this opportunity. It's a wonderful platform. And also I really enjoyed the talk by Professor Rajiv Sinha. He really set the stage by starting the cascading river disasters. So today I will focus on something, one of the aspects is about the heavy rainfall and heavy precipitation during the summer monsoon season, and that is also affecting the Himalayan region in a significant way. So I just and especially with climate change that is already happening, it is real now, and we are witnessing more of these heavy precipitation events. And so I will just talk about it in the Himalayan context and what can we do for developing some of advancing our early warning systems. So next slide please. So this is the time series of the global mean temperature. I think it is from 1950s. You can see an increase in the temperature globally, and 2024 was for the first time we crossed the 1.5 degree warming compared to the pre-industrial times. And this is mostly because now it is well established that this is because of the increase in the atmospheric greenhouse gases, mainly carbon dioxide, which has a very long lifetime of more than several hundred years. And this is a greenhouse, this gas can really trap the long wave radiation that is emitted by the earth, and it can warm the surface. And also one of the things I'll show in my next slide, that once there is a surface temperature increases, there will be more evaporation. And because the earth is covered by 70% by ocean, the water vapor in the atmosphere is going to increase. And water vapor itself is a very powerful greenhouse gas. So the warming that is triggered by carbon dioxide will be further amplified through the feedback, through the water vapor feedback. And that can be substantial. I'll show. So the warming is very clear. The carbon dioxide in the pre-industrial time concentration in the atmosphere, which is a well-mixed greenhouse gas, was something like 280 parts per million by volume. Now it has crossed more than 420. Other greenhouse gases like methane, they have also significantly increased. So the warming is happening. So globally you can see the increase in the temperature, the warming pattern, but the spatial pattern is not uniform. Some regions are warm faster, for example, mostly in the high latitudes, and the warming is much faster. We also see warming in the Himalayan region. This has been our climate change report we noted. We looked at the warming over India and warming over the Himalayas. In India, the annual mean temperature had warmed for the period 1901 to 2018 by 0.7 degrees. And now there has been a recent update that came out just few days back, an update on climate change over India. Average temperature over India has risen by approximately 0.89 degrees, close to 0.9 degrees. There's an acceleration from 2015 to 2024. And the Hindu Kush Himalayas have also witnessed accelerated warming by about 0.28 degrees per decade. This is during this period. So Himalayas have been warming at a much faster rate compared to even Indian region. So this is something we have to keep in mind. So this is mainly because of the increase of the greenhouse gases, it is warming. And so if the temperature is going to increase, as I was telling, one of the important consequences of the temperature increase is the increased evaporation from the surface. And water vapor, there is a temperature dependence of the saturation water vapor pressure. So atmosphere tends to hold more water vapor in a warmer climate. And this is a direct consequence of global warming. So in a warmer climate, you can have more water holding capacity. And that is typically, it increases by 7% per degree Kelvin warming. So if you increase the temperature by 1 degree, your water holding capacity is going to increase amount of water vapor by 7%. And the increase in the frequency of heavy precipitation event is also by 7% per degree warming. This is globally. So you increase the temperature 1 degree, your precipitation events are going to increase by 7%. And this is, so this is kind of well established globally. But when you're talking about particular events, Dr. Rajiv Sinha was talking about the Uttarakhand 2023
heavy rainfall and precipitation. And we also did a study on that, why it happened. There's a lot of regional dynamics, the changes in the regional meteorological weather patterns, the atmospheric conditions. So there is a regional component to that. In addition to the increase in the water vapor, the regional monsoon dynamics comes into play, the circulation patterns. And the question is whether we can get some kind of precursory signals, and will we be able to improve our early warning system. That is the focus of my talk. And so we looked at, it was not just, in addition to Uttarakhand, we had looked at similar such events, 34 heavy events over this region. And this was a paper by Vellur et al., my colleague. And so what we find is, and there are several other studies, one of the interesting things that we see is there is a flux of, this is on 16th of June, it was a very rapid advance of the monsoon, very early onset of the monsoon. There was this low pressure system that developed over the Bay of Bengal. It moved westward very quickly, and this is 13 June, and this is a snapshot on 15 June. This was a paper by Robert House et al., and 17th of June. So it carried this huge flux of water vapor from the Bay of Bengal, this low pressure system. And you can see this is the movement of the low. This is at 500 millibar. Typically in the mid-troposphere, about 5 kilometers from the surface, the low pressure moving westward. At the same time, there was an extratropical trough extending almost from the very high latitudes, extending southward. So there was a very strong convergence of the mid-latitude trough and the monsoon low pressure system that led to this massive convection, buildup of convection over that region. And there's already moisture getting into the region. So there is moisture coming from the oceanic and nearby sources, and due to the convergence of this, the monsoon low pressure systems and the mid-latitude trough, there is a very strong uplift. So convection is enhanced, and so once you are pumping in moisture into that place, you can get these very, very intense rainfall events. And like the Uttarakhand, and this was the paper. So in the upper level also you can see this signature of this very deep trough extending almost right from the polar regions. And you have some, in the summer monsoon time, we call this as the Tibetan anticyclone. And this anticyclone becomes highly unstable, becomes very intensified, it becomes unstable. So these deep troughs are extending, and you have this monsoon low pressure system converging into this region and development of these. So you can have this flood producing extreme precipitation in such situation because of the interaction between. Some people nowadays, they are loosely calling it as a western disturbance. I don't want to use that word. It is some kind of a blocking pattern that develops in the mid-latitude, and this low pressure monsoon system is interacting with that, and it leads to these heavy events, heavy precipitation events. And this was, so when we looked at this is from the IMD data, we looked at several stations in the Himachal, Uttarakhand and other adjoining areas. The 24-hour precipitation accumulations in millimeters ending on 17 June can be very high. It can be close to almost 40 centimeters, 50 centimeters and so on. It's very high. One-day rainfall is very, very intense. These are really intense events happening in this region with this elevated topography, and the gradients are very strong. So the potential for flooding is very, very high. And now this I thought I will show, because we are talking about this Dharali event. I asked my student colleague to make some plots, and it turns out that the 2025 monsoon season was also quite wet. It was a very intense monsoon circulation from the ocean. The winds are very, very strong. And I just put this yellow dot right over Dharali, and this is from the reanalysis. This is not the actual observation. So this precipitation, and this is known as the European reanalysis. This comes on a 25-kilometer grid, and this is the daily rainfall. The blue bars are the daily rainfall, and the line is the cumulative rainfall I've accumulated, which is, so the blue bars are shown on the right axis, this is the left axis, and this is the period around the 5th of August around Dharali. This heavy rainfall happened, followed by flash floods and landslides. So I really appreciate that Professor Rajiv brought out, it's not just the precipitation, but also the sediment flux that leads to the disasters. And
So I will concentrate on this precipitation, heavy precipitation that happened during this time. So you can see even with the coarse resolution reanalysis data, the rainfall amounts were close to per day were about few centimeters of rain. And so when there is intense rainfall, these events can become really catastrophic. And we looked at the circulation patterns. Why I thought and we just made these charts of at 500 millibar geopotential on 1st of August, 2nd of August. You can see these are signatures of development of convection. Some low pressure system is forming, and this is a low pressure system on 5th of August. So these signals, you can see they are coming even somewhere from the far, a little bit eastward, not right over that place, but you can see signatures of the development of convection embedded in this region. So when people say it is a locally generated cloud burst, there could be a cloud burst. The question is whether it was locally generated or whether it has the influence of some system coming either from the Bay of Bengal or from the northeast. That is something I will be talking about. And when we look at the circulation pattern at 200 millibar, this is in the upper troposphere, you can see the elongation, this anticyclonic pattern is getting, this is on 1st, 2nd, 3rd, is getting really intensified. So the signatures are there even further downstream. It is not just over this place. So my question is whether we can get some information, some precursory information to be able to forecast this. And one more point I want to reinforce this idea is there was a flash flood in Leh in 2010. And this is a dry desert, by the way. Humidity is very, very less, and the elevations are very, very high, about more than 3,500 meters above the sea level. It's a high altitude cold desert. There's a very nice paper by Rasmussen and House, what led to this flash flooding storm at the steep edge of the high terrain. And it turns out that they did this very nice analysis. I'll show that. This is, you have the Tibetan plateau. So during the daytime when the land gets heated up, you have the development of this deep convection, and these convective cells, they start moving westward. And once you have this surge of moisture coming from the Bay of Bengal, it's a perfect time. It's, you have perfect recipe for this disaster to happen. And so basically you have to look at these mesoscale convective systems, so this is the pattern. This is the 3rd August, 4th August, 5th August. You can see the low pressure system moving from the Bay of Bengal. It is pumping in a lot of moisture. The moisture is being transported towards that region. Leh is further here. And basically these convective cells, the mesoscale convective systems are developing over the Tibetan plateau. This is 6Z, 12Z, 20Z. So daytime it gets this, because of the heating, the convection develop, it starts moving westward. So when these convective cells approach this region in the western Himalayas and you have this flux of moisture, you can get this development of deep convection. So whether we can, so these are from the satellite, Meteosat satellite images, and the reanalysis also is giving some signal. And why I want to emphasize this point is we did some experiment to see what is the effect of climate change on the monsoon heavy precipitation. This is with a very high resolution model. When I say high resolution, or we climate people, even a 35 kilometer grid climate change is, we call it as a high resolution, which may not be in the geology parlance. So we apply a very high resolution in this region to resolve the Himalayan orography, the Western Ghats and so on. And we looked at the future, what happens to the monsoon by the end of the 21st century. This is one of the scenarios, we call it as the middle of the road scenario, where the warming in this, even by 2050, we would cause the 2-degree warming in the SSP 245. And we just remove the simulation for the historical period, that is 1995 to 2014. We see how much change has happened in the rainfall and wind. We see a very clear strengthening of the circulation and increase in the precipitation over the Indian region. And major strengthening, what we call is this in the meteorological parlance, as the Somali jet. The Somali jet really intensifies. And this was an experiment, SSP 245 GHG. Only we have greenhouse gases, no other changes in the land use or in aerosols. If we have only the greenhouse gas, we see a even further strengthening of the
the circulation and intensification of the precipitation. And this was also by my student Ashwin Sagar, his PhD work. And we looked at why the rainfall is increasing over north central India, and we see an increase in this is for the historical experiment and the SSP 245 and the SSP 245 GHG. We see there is an increased genesis. There's more low pressure systems like even monsoon depressions that form in the Bay of Bengal, and they are moving westward. And this westward movement, there's an increased genesis of the low pressure systems which produce a lot of rainfall, and the frequency also increases in the future in these different experiments, and the extreme precipitation above the 90th percentile, it substantially increases. So in the future we can, as the monsoon is going to intensify both in rainfall and circulation, these low pressure systems are projected to intensify, which means we can expect more of these extreme convection to happen. So in summary, what I want to say is human induced climate change is real, it's already happening, and it's affecting weather and climate patterns in every region of the globe, including the Indian summer monsoon, which is a very complex dynamical system. There are multiple scales of interaction involving the land, ocean and atmosphere, cryosphere components. And when we did these experiments using this high resolution model, we are finding a substantial increase in the monsoon precipitation over India, the strengthening of the low level monsoon flow, increased genesis of the west-northwest moving low pressure systems. That means extreme rainfall events are going to increase. Basically the monsoon convection, I want to emphasize the point, the convection over north central India, Himalayan region is going to be substantially enhanced. So that means the flood producing systems in the monsoon Himalayan region are going to increase. This is a real challenge. So what is the way forward? Way forward is we are doing very well in terms of the early warning system. The IMD has done extremely well when it comes to tropical cyclones. I remember the Orissa cyclone which happened in 1999, more than 10,000 people died. But nowadays for the tropical cyclone prediction we have significantly advanced. The loss of lives we have substantially reduced. But when it comes to the monsoon rainfall, still we are having challenges. The loss of lives and also property damages are very extreme. So there is an opportunity for us to strengthen our early warning system, and which means we can improve our weather radars, our Doppler weather radars in the Himalayan region. And this will be an opportunity to monitor the evolution of these mesoscale convective systems. And we also have to, in addition to the weather radars, we have to look at the satellite, the in situ observations. And combining these capabilities, observations, we have to improve a data assimilation, high resolution modeling to represent the monsoon convection or orography. Fundamentally, I want to say that human capacity building is very, very fundamental. We have to enhance our basic research on the Himalayan weather and climate. I think these are the main points I want to tell. And thank you very much for your kind attention. Yeah, happy to take. Any questions? Yes, sir. Thank you, sir, for your wonderful presentation. Sir, my name is Dr. Harish. I am from Indian Institute of Remote Sensing, Yes, sir. ISRO, Dehradun. Yes, sir. Sir, this is regarding cloudburst. This is really a challenge for the researchers and scientific community. In your view, why we are not able to achieve it? The early warning of the cloudburst. Second thing, is it possible to identify the risk areas, or is there any relation with the topography and the cloudburst? Yeah, thank you, sir. I think you raised a really fundamental point. Now, when we say cloudburst, typically they say the amount of rainfall in 1 hour should be more than 100 millimeters. This is a typical genre. And one of the challenges, we don't have enough observations. And from the model experiment, what I showed, maybe I can go back. So there is a possibility of the locally generated cloudburst, because as I said, if you have a sudden incursion of moisture into this region, and there's already convection that has built up, there's convective available potential energy, there is a scope, especially in the orographic region, for the moisture to undergo a forced ascent, and convection can develop, and this cloudburst can happen. Now, one of the challenges is it's so localized.
prediction becomes a challenging issue actually. And no doubt there is a lack of observation. That is a fundamental thing. And the other thing is, there could be an opportunity because this system, as I was telling, it could be this movement of these mesoscale convective systems from the east, maybe from the northeast India or from the Tibet into that region. That is an opportunity. We really have to look at it. Whether they are generated locally or it is coming from something behind. If there is an indication, that could be an opportunity to exploit. So we really have to track these mesoscale convective systems, which means that's why I emphasize that we need to have this Doppler weather radar network and see how these systems are moving, how they are propagating. So if you work on that problem, and of course you need the in situ observations, because from the radars you get the reflectivity, you have to convert them into rainfall. So you need the in situ observations, you need to do that calibration. And once we do so we have to focus on research in the Himalayan region. We need to have a focused radar network plus the in situ observations. My gut feeling is that it may be possible, at least the nowcasting, few hours in advance, we will be at least able to save lives as we have done for the tropical cyclones. Maybe another 10 years down the line, if we start focusing now, probably loss of lives we could minimize substantially. And that is my hope also. So one is, so these recommendations I made, it's a challenging problem. So we need to first of all enhance our observing systems, our weather radar network, look at even the satellite and the in situ observations, and then whether we can ingest these satellite derived reflectivities in the model using high resolution model, improve weather forecasting. But nowcasting capabilities, I am very hopeful, at least few hours in advance. With the improving our observation systems, we will be able to do it. So one of the key is getting to the weather radars. Thank you, sir. Thank you. Anyone else? Okay. Thank you. So हम लोग आज जो आपके सामने लाए हैं स्पीकर्स, वो उनका ऑथेंटिक डेटा और रिसर्च है. ये आपको ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसे स्पीकर्स हमको हमेशा सुनने को मौका मिलता है. सो इसीलिए मैं उनको बोलने के लिए दे रही हूँ. आप सुनिए, जितना समझ में आता है, नहीं आता है तो पूछिए, लेकिन I want them to speak and I want them to continue. We will have one more speaker now, Professor Anil Kulkarni, and then we will have Shri Kurangaji to address us. Pehle Anil Kulkarni sir, please. Good morning to all of you, and it is indeed a great pleasure and honor for me to come here and discuss with you about the Himalayan cryosphere and Himalayan glaciers, as well as how climate is going to change and its influence on Himalayan cryosphere. So already we had a beautiful presentation by Dr. Krishnan, particularly talking about how climate is changing. So I will, for the sake of continuity, I will borrow some of the slides which is already shown by him, so that we can put everything properly in the context. So you can already know there is a fundamental difference between the weather and climate, and it depends upon the time scale. Like weather is about hours and day, it's a spatial scale. So all those things there. So in a sense, we can say is the climate is a weather average over a time. So it is a long term how weather has changed is essentially a climate. So climate change is caused because of the natural processes. We already know that in the history of Earth, climate has significantly changed. It also changes because of anthropogenic activities, because of the human actions. And
human is also the agent of climate change, about which Krishnan has changed. In addition to that, we also have a local versus global climate change. Remember that whatever changes we are observed into the mountains, because we are sitting in the mountains, is not only because of the global climate change, it is also because of the local climate change, and as well as also because of kind of priorities, development priorities we have into the mountains. So all these things are significantly affecting the mountains, and we have to be a little bit clear about it. We should not blame everything on global climate change. If you look into the history of the earth for very long period, so for millions of years, if you look, that earth has very warm climate, historically, around 500 million years back, and subsequently the earth has reduced its temperature, and the Pleistocene time, which is around the thousands of years, is, as you can see here, how earth has fluctuated, and recently you can see how suddenly earth's temperature has gone up. So whatever changes are taking place into the earth system is unprecedented in the history of the earth. History, I don't mean the history of human history, I mean the geological history of the earth, which is millions of years. So it is very unprecedented. All these things has caused because of the human interference. So we should not be any ambiguity in our mind that it is because of the natural causes and the interglacial period will finish and glacial period will come again. It is not going to happen. Essentially because you can see into this figure that when you have naturally, if there is no interference from the human, by this time earth should have been cooled. But earth has significantly temperature gone up, indicating that that human interference is significantly changing the earth system. Therefore, some of the people called it as Anthropocene. That means the period when humans have started to influence the global system. So having said that, as Krishnan has already shown you this figure, which clearly suggests that in the 50s, you have very low, where the India, as compared to India and Himalaya was much cooler than as of peninsular India, and as of now, Himalaya is significantly warmer than the peninsular India. So what it means, as climate change kicks in because of the human interference, the region which are warm in high altitude is going to become much warmer. So Himalaya, so 1.5 degree rise in temperature globally means probably 1.8 or 2 degree rise in temperature into the Himalaya. So Himalaya's temperature rise is significantly higher than global mean. And in addition to that, what has really happened is the amount of precipitation has not significantly changed into the Himalayas, but it's a rainfall, its snowfall component has significantly reduced. So you have two problems. One problem is rise in temperature higher than global mean, and the proportion of the snowfall has also significantly decreased, and end result of that is significantly retreat of the glaciers. So this figure you can see in the Pindari Glacier, how it was in 1936 and how it is now, as of now around 2006. So these changes are unprecedented, and we are observing those changes into the Himalayas. Nothing spectacular about that, and we know it is because of the change. But if you really try to understand what is the situation in a larger picture into the Himalayas, and you can see that we have Karakoram mountain ranges, we have Western Himalayan, Central Himalayan, Eastern Himalayan mountain ranges. So numerous studies which clearly suggest that already Eastern Himalaya is a gone case. That means unless we really start cooling the earth, most of the Eastern Himalayan glaciers are not going to survive by the end of century. So it is really gone case. Central Himalaya has some hope, and the Western Himalaya has some hope, and the Karakoram
you can see here 2000, even great melt is not started in Karakoram. So that is why it is called a Karakoram anomaly, where glaciers are not significantly retreating, and that is only because of its very high altitude. But if climate change continues, it's quite possible that there will be a significant negative mass balance will take place by the middle of century until the end of century. And this red and green, you see, it is depending upon which future changes temperature is going to take, RCP 2.6 or RCP 8.5, depending upon, we don't know how temperature rise will take place by the end of century. There are different pathways to do that. So having said that, what it means is how much is a concentration of snow and glaciers, and which rivers basins are really vulnerable for that. And one of the key things we have to understand is, you can look here that Ganga and Brahmaputra river basin is relatively less vulnerable to the climate change compared to the Indus river basin. And a reason for that is Ganga and Brahmaputra river basin receive the significant amount of precipitation during monsoon time, and most of the precipitation in Indus basin and any other basin where Amu Darya or so many other basins in Central Asia is received by the snow and glaciers melting. They receive water because of the western disturbances produce a lot of snowfall. So these are very sensitive. Indus is a very sensitive river basin in our part of world for the climate change. So we will little bit dwell on the Indus river basin and see what impact it will have in future. So you can really see why it is so, that you can see that it is very high. In the Indus river basin is very high, around 75%, depending upon where you measure, can have a 75%, 60 to 75% water which is coming from snow and glacier melt, and it significantly reduces as you enter into Ganga and Brahmaputra river. So that is one advantage we have in Uttarakhand, we have in Sikkim, we have Arunachal Pradesh, because they are not, it might be sensitive in other contexts, that means precipitation change, extreme event can take place in that context. But in a cryosphere point of view, it is very sensitive. And you can see here, Indus basin receives approximately 60% of water, Ganga is around 20, and Brahmaputra is slightly higher, around 20 to 25% water. So what implication, if we really want to dwell more on Indus river basin, which is very sensitive to the climate change, and it has very large proportion of glaciers compared to the Ganga and Brahmaputra river basin. And you can see this, the water between India and Indus basin, between India and Pakistan is shared as per Indus Water Treaty. And what you can see here, that Satluj, Beas and Ravi, these are three basins are exclusively allotted to India, and Chenab, Jhelum and Indus, Upper Indus, is allotted to the Pakistan. Even though it is in abeyance, but it is in theory, this Indus Water Treaty. When the treaty was written in 1960s, it was decided that India will have 33 million acre feet, 16% of water, and Pakistan will have 177 million acre feet, and 84% of water was allotted to Pakistan. It is based upon the measurement of runoff at that time, and it is also a proportion to the geographical area India has and geographical area which is Pakistan has. So having said that, but at that time, in 1960s, there was no assessment of glaciers. So nobody knew how many glaciers are there, where they are located. So you can look now, only, even though you can go into previous slide and you can see here that, no, 1 minute, you can see, or I don't know, it's going further only. Okay. It's, even though we have got 16% of water which is allotted to the India, and if we could look into that, it's only 5% is glacial store water in eastern river basin.
So the proportion of water available in eastern river is substantially lower than, and 95% glacial store water is in western river basin, which is allotted to the Pakistan. That is first thing we have to understand. And second thing we have to understand, differential glacier mass loss is taking place. That means, yes, previous slides we have seen, Karakoram still has a positive mass balance. So the great melt has not even started. So when many Pakistani scientists say that if climate change is taking place and glaciers are melting, where is the water? There is no water because those glaciers are not yet melting. But you can see here that most of our glaciers are significantly melting. And in the western Himalaya, I have shown that by the middle of century, most of the glaciers will be gone. So you will have a situation where most of the glacier by end of century will be gone in eastern river basin, and substantial melt will start into the Karakoram mountain range. So there will be a lot of water available in upper reaches and very little water available in the lower reaches. So this can strain the Indus water treaty quite substantially, and we really need to work on this issue. So another issue which mountain communities is going to face is low altitude glacier lose mass. I think Bhamri will probably talk about this in more detail, so that there is a substantial taking place, and all mountain communities are living near the small glaciers. Nobody is living in big glaciers, essentially because weather conditions are extreme and it is not conducive for human settlement. So this issue is going to create a new thing, and this is, you can see that this work which is done by our students, you can see that in a Spiti river basin, almost 60% glacier disappear by 2050 and 66% by 2070, clearly suggesting that we now need a strategy to provide livelihood for the people living into the mountains. So some of those ideas have already started to kick in, and one of the such ideas is ice stupas. You can see here that this is extensively used into the Ladakh region. We need to find out under what microclimatic condition this ice stupas can be successful, under what condition it will not be successful. Their attempt made to do it in Sikkim, but because microclimatic condition of Sikkim is substantially different than Leh, making it very difficult to be successful. So there is substantial scope for reserve that. Another area also where risks are going to increase in because of the flash flood from hanging glaciers. You can see here, this is one hanging glacier for which photograph I have taken, and similar flash flood has taken place into the Rishiganga Valley a couple of years back. And you can see here all this thing, and this is our new study which we have done for defense establishment, clearly suggests that there are 219 hanging glaciers in Alaknanda and Bhagirathi Basin, and you can actually model which portion of hanging glacier can fall down and how much risk it can bring to the community. So technologies are allowing. We have seen this picture in Rishiganga Valley, how the flash flood has taken place. So we will not go into, but there are other issues we should also be very careful about it, because as we are developing infrastructure quite significantly, a lot of people are traveling in mountains, particularly winter time, and they are, so you can see the condition of roads in mountains are not very high, and because of that it generates a lot of dust. You can see here how albedo of this snow, which is next to the road, as compared to the albedo of snow in far away, clearly suggesting that all these regions are now when early melt will take place. And if snow melts very early, it is quite possible that you can have early forest fires. So there is a direct linkages between the departure of snow, because it reduces moisture into the soil quite significantly, and forest fire takes place very far. So we should be very careful when we are having significant development activity in high altitude,
and a lot of people are traveling into the mountains. So this is one I have seen this, you will be surprised to know, this is the road which we have in the very dusty road is there, and the vehicle goes on this road, you can say very high altitude, 6,000 kilometers, so it's almost 4,600 meters, very high altitude, you see the road. And then what happens to glaciers, you can see here, within 3 years, how albedo of glaciers have changed, within 3 years. So development activity can also accelerate departure of glaciers very fast. So some of those changes are taking place because of the global climate change. Temperatures are rising, it is leading. Some of these taking place because of local development activity. Some of these taking place because of the local climate change. So we really have to consider all these aspects and then come to the conclusion that how Himalayan glaciers are changing. So this was the idea, which was, one of the idea was put forward when we had 2 years back, not 2 years, a year back, a conference at IISc Bangalore. We thought that one of the idea we can have a high mountain regulation zone. That means how to control development activity in a high altitude region. And another is cryosphere change impact assessment report. So until now, we have an environment impact assessment report, but nobody is thinking how cryosphere is going to change and what impact change of cryosphere will have on infrastructure. It's other way around. Right now, we think what change what impact of infrastructure will have on environment, but it is other way around. You think what if you spend 10,000 crore in building a dam, but if there are a lot many cryosphere is changing around that, and how that dam will be affected because of the changing cryosphere. We need to think other way around also. So I think with this, my suggestions, I think we have potential to improve the resilience of the mountain community. With this, I think I will stop here. Thank you very much. We'll take quick questions if you have. So I'm Dr. V.P. Unial, former scientist of Wildlife Institute of India. So I'm fortunate that I have worked in Spiti as well as the other part of mountains, as well as the Kailash Mansarovar for a long time. So why not we have defined this carrying capacity, how we'll do developments in mountains? Because of the glaciers are residing and there are a lot of pressures on rivers and development programs is going on. Why not we'll study on carrying capacity, what we need to do this? Carrying capacity is a important idea to do that, but it is, I think that is also one idea we should incorporate into our development plan, that how much development activity we can have and how many carrying how to I think it is a good idea to incorporate into it. My name is Rahul Kohli, and I have nothing to do with climate change. I am not a scientific person at all. But I did attend a talk recently, and it was about the Gangotri Glacier. Over there, they raised a question that while the glaciers are melting and receding so fast, they said, why is the water not increasing? Why is the offlow not commensurate with the glacial melt? And there was another gentleman, I think, speaking from Dehradun, from the Geological Survey of India. And he did bring up a point. He said, when they analyzed the offlow of water from the glacier and the offlow of water further downstream, they said it was not the same water that should be coming out of the glacier. So they asked the same question that you asked a little earlier, and some of the Pakistani people have asked the same question as well. Where is the water? Yes, where is the water? And they're talking about underground aquifers.
No, But they're saying nothing, nothing is there, you know. Let us see this figure, which is, let us see this figure. How much is, if you are talking about the Ganga basin, correct? Huh? Then how much is percentage of snow and glacier melt into the system? If you look into this figure, all this is around 0 to 15%, right? This is from snow and glacier melt, correct? Then you take out snow of this. So contribution of glaciers is not going to be 3 to 4%. And that is within the natural variability of availability of water into the system. So some year is the drought year. So some year rainfall is less. Rainfall, glaciers amount is going to come up. But you are not going to notice this because there is no significant change. Because it is not only, it's only we are talking about changes in 3 to 4%. So that is why you are not noticing that water. But you will start noticing it where if you have 75% of water. That is where, so that is where you will start noticing that. I think that is the explanation, but you can still. But there is now lot of analysis is done based upon models and based upon isotope analysis to understand how much actually contribution coming from glacier, snow, rain, and groundwater. So I think that it can explain in that way. Thank you. Thank you. Thank you so much, Professor Kulkarni, for this very, very deep and enlightening session. And what a valid question where the water is that we have to find out, sir. I have been requesting and I'm crying on various forums that the scientists from NASA and everywhere, they keep shouting slogans that look, after spending so many millions of dollars, keep shouting slogans that look, we have found traces of water on Mars, traces of water spending after a few millions of dollars. Whether I am told as a student of management that we have 3/4 of the earth that contains water. So we need to really be very careful that where that water is. Thank you so much for this beautiful question, sir. Ladies and gentlemen, we have amongst us Sri Shankar Kuranga ji, Honorable Rajya Mantri Uttarakhand Session. आपको जाना है, इसलिए मुझे आदेश मिला है कि मैं पहले आपको इनवाइट करूं सर एक सूक्ष्म आशीर्वचन के लिए इस गैदरिंग को. उसके पश्चात हम अपने वाइब्रेंट और ब्रिलियंट IAS ऑफिसर साहब को भी सुनेंगे 2 मिनट के लिए सर, क्योंकि मुझे आदेशित किया गया कि आपको भी जाना है शायद, तो सर के बाद. आज इकोस्ट द्वारा जो ये शिखर सम्मेलन ग्राफी गिरा के इस कॉन्फ्रेंस हॉल में और पूरे विश्व के 50 से अधिक देशों के हमारे वैज्ञानिक, उन सब का मैं स्वागत करता हूं, उनको नमन करता हूं, उनको अभिनंदन करता हूं. उत्तराखंड की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन. हमारे इकोस्ट के DG डॉक्टर दुर्गेश पंत जी, जिनके कारण से ये सब संभव हो पाया और जिनके कारण से पूरे उत्तराखंड के अंदर आज हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जहाँ जहाँ ये आज हम जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग लगातार डिस्कशन में रहते हैं. और इस प्रदेश के हमारे जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं. एक नई सोच और एक नई दिशा के साथ हम सब काम कर रहे हैं. अभी मैं सुन रहा था आप सबके विचार,
और ये हम सबके हमेशा दिमाग में रहता है। वो जिस समय पर जब भी डिजास्टर होता है उसी समय हम उसकी चर्चा करते हैं विद इन 2 डे एंड 3 डे एंड 4 डे एंड 5 डे। वी आर नॉट गोइंग ऑन ए फॉर लॉन्ग टर्म, तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल। तो हम सब लोग उसकी चर्चा, अभी आपने देखा जो सिलक्यारा वाला टनल जो जिसमें आपदा थी, जो हमारा नेतृत्व है इस प्रदेश का नेतृत्व माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, आप ये मान के चलिए कि लगातार 17 दिन तक और 41 मजदूर उस टनल के अंदर फंसते हैं। क्या कौशलता है, क्या हमारा कार्य कुशलता है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, वो सारे के सारे लोग सकुशल बाहर आए। हमारे बीच में हमारे सीनियर आईएएस, हम सबके प्रिय आदरणीय डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम जी बैठे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट जलागम वाटर शेड है, उसमें हम लोग लगातार इसमें वर्किंग कर रहे हैं। जो अभी आपने सारी बातें कही हैं, ये हमारे डिपार्टमेंट में हम लोग उसको वो करना भी चाहते हैं। और मैंने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट में मैं गया, और जो ग्लेशियर जो वार्मिंग की हमारी बात चल रही है, नदियों की हमारी बात चल रही है, और हिमालयाज की हमारी बात चल रही है। केदारनाथ में हमने आपदा को देखा 2013 में, और अभी उसका लेटेस्ट हमने वी आर गोइंग ऑन। आप ये मान के चलिए कि लगातार हम सीख क्या रहे हैं, क्योंकि आप जो ब्रेन यहाँ बैठे हुए हैं वो आप हमको अनुभव देते हैं, वो आप हमको प्रैक्टिकल देते हैं, वो आप हमको कुछ ऐसी चीज़ें सब लोगों के संज्ञान में देते हैं, बट वी डोंट, हम लोग उसको, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग फॉलो करते हैं। और बहुत माइनर चीज़ें हैं, बहुत माइनर चीज़, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, वो हम अपने से स्टार्ट करें। क्योंकि आज हम सब लोग यहाँ पर, मुझे सौभाग्य मिला आपके बीच में बैठने का, क्योंकि अभी रहीम जी ने एक पंक्ति कही थी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। और एक एक पार्ट, क्योंकि भगवान, क्योंकि ये सनातन देश है, और सनातन में भगवान शब्द 4 शब्द हैं। भगवान, भौ से भूमि, गौ से गगन, व से वायु, और नौ से नीर, और अग्नि। यानी कि हम 5 तत्वों से संसार बना हुआ है। भारत ही क्या, पूरा वर्ल्ड, ये पूरा वर्ल्ड, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त देश जो हमारा जो भारत है, और उत्तराखंड उसमें भी विशेष है। यहाँ आपके चारों धाम, यहाँ नदियाँ, यहाँ, और हम मैं एक छोटा सा भी उदाहरण, बच्चे के जन्म से लेकर के भी हम आचमन भी करते हैं तो जल से लेते हैं। ओम यजुर्वेदाय, ये ऋग्वेदाय, यजुर्वेदाय, सामवेदाय, ये ईश्वर प्रदत्त हमारी हमको सब चीज़ें मिली हुई है। आपसे अलग हट करके एक विषय को मैं ले रहा हूँ, आई डोंट नो कि आपको थोड़ा ठीक लगे ना लगे, बट मैंने ये व्यक्तिगत मेरे अपने अनुभव हैं, और हम लोग शेयर भी करते हैं उस बात को। हम हमेशा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग चर्चा करते हैं कि जैसे अभी हमने कहा कि भाई इधर हम सबको चीड़ के पेड़ हटा करके और बांज के पेड़ लगाने चाहिए, तो वाटर जो है उसमें कंजर्वेशन रहेगा। और ऐसे हम लोगों ने कहा कि जो हमारे जो नदियों के पुनर्जीवन, एक एक नदी को हमने उसमें लिया है, 5 नदियाँ भी हमने ली हैं, और मैं आपको उसका थोड़ा बता देता हूँ। क्योंकि जलागम विभाग उत्तराखंड द्वारा सुख से जलागम क्षेत्र की अवधारणा के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों, जल, जंगल तथा जमीन के संरक्षण हेतु जन सहभागिता के माध्यम से अनेकों कार्यक्रम और परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें ग्रामवासी स्वयं अपनी योजनाओं का निरूपण और क्रियान्वयन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जल संरक्षण प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों हेतु ग्राम धसपड़, जिला अल्मोड़ा को उत्तर क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया। ये हमारे विभाग की एक बड़ी उपलब्धि है। और जो हमारा सारा है 2023 में, जिसकी स्थापना हम सब ने की है, एक नए अध्याय में हमने विशिष्ट प्राधिकरण उसको बनाया है। इसी प्राधिकरण के द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों एवं नदियों का चिन्हीकरण, जल उत्सर्जन में वृद्धि और मापन एवं अनुश्रवण आदि कार्य किया जा रहा है। प्रथम चरण में जनपद नैनीताल, चंपावत, पौड़ी तथा टिहरी की 5 क्रिटिकल नदियों शिप्रा, गौड़ी, पूर्वी तथा पश्चिमी नयार एवं सौंग का चिन्हीकरण कर IIT रुड़की
एवं NIH रुड़की द्वारा इनकी विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। सरकार द्वारा एक जनपद एक नदी की अवधारणा के आधार पर अन्य जनपदों में भी समान कार्रवाई अपनाई जा रही है। प्राधिकरण द्वारा विकसित भागीरथी मोबाइल ऐप के माध्यम से आम जन को जल स्रोतों के चिन्हीकरण और उपचार में भागीदारी बनाते हुए अब तक लगभग 6000 जल स्रोतों का चिन्हीकरण किया जा चुका है। हमारा लक्ष्य है कि हम वैज्ञानिक पद्धतियों से इन जल स्रोतों का उपचार करें और वर्षा आधारित नदियों के चिरस्थायी प्रभाव को सुनिश्चित करें। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी की वचनबद्धता की जहां पूरे विश्व ने सराहना की है, वहीं उत्तराखंड राज्य ने भी एक विशिष्ट परियोजना उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के माध्यम से धान की फसलों से उत्सर्जित होने वाली ग्रीन हाउस गैसों को कम करने हेतु देश में अग्रणी भूमिका निभाने की पहल की है। इस परियोजना में 1148 करोड़ रुपए की लागत से अक्टूबर 2024 में मार्च 2030 तक 8 जनपदों में संचालित की जा रही हैं। हमारा जो बेसिक जो हमारे विभाग और हमारे जो लोगों द्वारा जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं, ये जो ग्लोबल वार्मिंग और नदियों के पुनरुद्धार जल संरक्षण की जो हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ संभव तभी है जब आप सब लोग हमारे साथ रहेंगे, हम सब लोग इसमें बैठेंगे, आगे भी हम इसमें चर्चाएं करेंगे। और यूकोस्ट के डॉक्टर दुर्गेश पंत जी हम सबके गुरु जी और जिनका हमको आशीर्वाद भी मिलता है, और इसी चर्चा को बात रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार हम सबको इसमें एक विशेष निर्देश भी दिए हुए हैं। हम सब लोग उसमें लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं बोलना बहुत चाहता हूं, मैं ये मेरा सब्जेक्ट भी रहा है, बट आई हैव टू बी गो। हमारा एक अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सम्मेलन भी है 28, 29, 30, और वो एक पूरे भारत का राष्ट्रीय सम्मेलन है, उसमें भी हम सब लोग को जाना है। आप सब इसी सब बातों को कहते अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मंत्री जी को जाना है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा हमारे यहाँ लॉ विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर डेजी से कि एक ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय की तरफ से एक छोटा सा मेमेंटो स्मृति चिन्ह उनको माननीय मंत्री जी को भेंट करें। आई रिक्वेस्ट वन ऑफ द वॉलंटियर्स, come, hurry up. Ladies and gentlemen, now I'll take this as a matter of privilege and opportunity to invite our very own Shri Meenakshi Sundaram Singh Ji, IAS Secretary Planning and Development. Ladies and gentlemen, put your hands together. Sir, I invite you for your brief address. A person who is keenly interested and involved in the planning and development of this state, by all means, sir. At the outset, I would like to congratulate Professor Durgesh Panji, DG UCOST, and the team of people who are working with him to make this summit happening. In fact, it was started from the previous year, I believe, and it was during this period that the Silkyara tunnel rescue work happened, and after that we had the summit at the same time, and then now it is slowly becoming an annual affair, and it's a very good thing because the state is highly prone to disasters, and this year we had a particularly bad monsoon phase with multiple disasters striking the state.
In fact, in the earlier years also, we used to have one or two disasters almost every monsoon. But this year, in 1 month, we had multiple disasters happening in many parts of the state. There was hardly any district which was not affected in this monsoon. I was very fortunate to listen to these three eye-opening lectures, and I am thankful to Professor Sinha, Dr. Krishnan, and Professor Kulkarni for giving very insightful thoughts. What is the scientific basis for whatever is happening? I stood to gain something out of this, listening to these three gentlemen. एक saying है कि जल ही जीवन है, और जल ही जीवन है is not just a statement, it is not an exaggeration. You know, if you look at the human body, we are made up of 60% of water, intracellular water as well as the extracellular water. All put together, you know, we can even say that we are all walking water bags. So there is no life without water. In fact, life originated in water. Whenever we look for extraterrestrial life in other planets, the first thing we used to watch is whether there is any water. So if there is a water, then there is possibility of life. So if you go by science, then science clearly states that the very first life, the primitive life, originated in water. If you go by religion, भगवान विष्णु का पहला अवतार है मत्स्य अवतार, पानी में लिया गया था. Now, not just in Hinduism, it talks about a great deluge happening, and then the God took the form of a fish to save humanity, to save the religious scriptures, and to save every life in the planet. If you look at the Semitic religions, they also talk about a huge deluge based on water. Moses narrates a story where Noah's ark comes and then saves every species. So this deluge based on water is also there in almost every culture and every religion. So there must have been some solid background of some great deluge based on water happening at some point of time in the human life. So water is both a boon as well as a bane. So without water we don't survive. But how much water do we need? At what time is a very, very critical question. Excess of water is a problem. Scarcity of water is a problem. Water management becomes very, very critical for our survival as a species. When I joined the state, it was way back in 2001. My first exposure to a water-based tragedy was in 2002 when I was doing my district training in the district Tehri Garhwal. So there was a cloudburst which wiped away 3 villages. After that, I have been witness to so many water-based disasters in the last 25 years. The biggest challenges were, Kedarnath, everybody know 2013 disaster. It was a GLOF, glacial lake outburst flood, which wiped away almost everything in Kedarnath except the temple. Then the one thing that people don't know much about is the 2010 floods. 2010 floods were also very, very huge. In fact, in Haridwar, I was the district magistrate of Haridwar at that time. In Haridwar, we had a 100-year maximum flood in the river Ganga. Of course, it was a predictable disaster because we all knew that there has been huge precipitation up in the Bhagirathi and the Alaknanda valley, and we will be getting a 100-year maximum flood in a span of 7 to 8 years. So we could get a 7 to 8 hours of reaction time where we could mobilize our teams to ensure that all people living in low-lying areas were evacuated to safe places, and then ensured no casualty took place.
So in 2013, it was a glow-off and hit immediately. There was no prediction. Nobody knew anything about it. It was the very first day of the monsoon. The monsoon struck immediately on the very first day in June. So these kind of events, and very recently the Dharali flood, about which the scientific background was extensively spoke about in the presentation. So these kind of disasters keep happening here, and by getting to know more and more about the scientific background of how these things do happen, will prepare us to be a little more prepared the next time, little better in our responses the next time. In disaster, we have many components in disaster management. You have to have disaster preparedness, and if there is prediction, then you are better prepared. So can we have better predictive abilities in the future? Then the mitigation measures, of course, what kind of a developmental journey that we have to take. Our Chief Minister keeps on insisting we have to balance economy and the ecology. We do have people living here, so they will have their economic aspiration, nothing wrong in it. Every people living in every region have their aspiration. So the aspirations also have to be met at the same time, not at the cost of damaging our ecology further, which will be self-defeating for us. So these are the critical questions that the government normally faces. Like in the first presentation, it was talked about the mining. Mining should be done or shouldn't be done. Mining is a critical source of revenue for government, critical source of livelihood for many people engaged in that. But it also, indiscriminate mining is a problem. Controlled mining is not a problem. In fact, controlled mining may be desirable at some point of time, where you have a lot of, very recently, the Honorable High Court has completely banned the mining in Ganga bed. Now that is also not a scientific approach, because the sediments keep coming and they'll get accumulated. If they're not removed, then the river changes its course and it may go closer to the village or closer to the human habitations. So they need to be removed, but in what way, in what quantum, has to be scientifically decided. Similarly, another big dilemma that we face is the hydropower projects. There are huge arguments in favor of them, there are arguments against them too. In my own experience, I talked about the 2010 floods of Haridwar. The city of Haridwar got saved because of the Tehri Dam. Because we had huge rainfall in both Bhagirathi Valley and the Alaknanda Valley. Because we had the Tehri Reservoir and Bhagirathi Valley, we were able to hold the water for a certain period in the Tehri Reservoir, and we allowed the Alaknanda water to flow first, and then the Bhagirathi water was released from the Tehri. Otherwise, it would have been much more difficult for us to manage that period. So now there are a lot of people who say that no, reservoirs shouldn't be built. The truth always lies somewhere in between. No, we shouldn't go for extreme ends. How to have the reservoirs, how to generate energy using the water, not losing a critical, the advantage of having a critical resource, but at the same time doing them well, so that it doesn't result in problem. The third is our urbanization. Urbanization keeps happening. Dharali, post Dharali, everybody had come with a comment that why so many buildings here. Now, the solution lies in coming out with a regulatory framework. We do have a regulatory framework, but the regulatory framework is not for the whole state. The regulatory framework has created development authorities or regulatory bodies for certain packets or the larger urban conglomerations. It is not for the whole state. Now, extending it to the whole state will have its benefits, will have its
reactions by the public also. So the elected government always has to tread a very, very safe path. But whenever such things happen, the similar things happened in Joshimath also. Joshimath, there was a land subsidence incident. In fact, when I went there, I saw that 7th floor, 8th floor buildings were there. The 2 hotels that collapsed, they were all 8 floors. They got constructed because there is no regulatory body in existence there. So people used to construct whatever they wanted. So extending the regulatory framework across the state is also essential, and if it can't be done across the state, at least the key pockets have to be identified and then should be brought under the ambit of the regulatory framework to minimize the losses during such disasters. So I'm very thankful once again to the organizers for arranging this wonderful event, especially Professor Durgesh Panji, and also inviting me to listen to this very insightful presentation. Thank you. Thank you so very much, sir, for this brief but quite thought-provoking and very, very important note. And of course, yes, ladies and gentlemen, we are sitting here, people of eminence. We need to understand that, yes, we need to strike a balance between economy and ecology. Thank you so much, sir. As a gesture of honor and appreciation, I would like to request Professor Durgesh Panji to present a memento to sir. Ma'am, it's over to you. We shall continue with our talks now. Thank you, sir, for some insight into how you work in your department. We understand, but I hope that today's talks also help in your planning. So now I shall invite Dr. Arvind Kumar from India Water Foundation. Move this. This one forward, sir. Okay. So I think good noon, everyone, and dignitaries, delegates, faculty members at the outset, and especially Honorable Secretary is here at the outset. I thank Uttarakhand State Council for Science and Technology of Government of Uttarakhand and Wadia Institute of Himalayan Geology for inviting me for this talk. The title of my presentation, Restoring of Wetland Ecosystem for Disaster Resilience. So here is a quick, because a lot of actually discussed, overview of what we will cover today. First, we will look at Himalayan wetlands, a position at the front line of the climate crisis and facing increasing pressure from extreme weather and ecological degradation. We will then briefly outline the crisis itself, how wetlands are under threat due to land use change, infrastructure, development, pollution, and climate impact. Very well said
Secretary Sir. So there is a need of some balance between ecology and economy. So next we will examine the crucial role wetlands play in disaster risk reduction, acting as a natural buffers against floods, landslides, water scarcity. I will also highlight our contribution to India's wetland conservation efforts, showcasing ongoing initiative, research, and partnership. We will discuss the key stumbling block and leading to ecosystem-based adaptation, EBA, as a strategic pathway for resilience. So just give me a brief about me as well. I'm Dr. Arvind Kumar, President of India Water Foundation, and also with the Meghalaya government and Chief Minister Council. So last 15 years, actually, we have witnessed a lot of good development in that particular region, basically the basin programs, Lucratis policy, transportation corridor, and many more. So here we are talking about the Himalaya. Wetlands are not just geographic features, they are frontline indicators of our climate crisis. These high altitude ecosystems are undergoing rapid transformation that signal urgent planetary change. The Himalayas are warming 3 to 5 times faster than the global average. While planet has warmed by about 2 degrees centigrade, high altitude regions are heating dramatically faster, reshaping wetlands that function as water sources, carbon sinks, and the biodiversity hubs. Glacier melt rate have doubled since 2000 compared to the previous 25 years period. This is not gradual change, it's a acceleration as a result. Wetland formation patterns and the long established hydrological systems are being fundamentally disrupted. Between 2011 to 2024, glacier lakes area increased by 34%, leading to rising incidents of GL of and LL of now become frequent, predictable threats, placing downstream communities at direct risk. Monsoon cycles are shifting, extreme flood in monsoon seasons, followed by droughts in dry months. Wetlands that once regulated water flows and now being overwhelmed. Most critically, degradation of Himalayas wetland threaten water, food security. When wetlands fail, agriculture fails, and the livelihood of the billions at the risk. So we were moving past the tipping points. Globally, we have lost 411 million hectares of wetlands since 1970, as a 22% decline. That's an area larger than the entire European Union, gone in just 5 decades. In India, the situation is far more urgent. We will lost 40% of our wetland in last 30 years. Today, we are losing 2 to 3% of the remaining wetlands every single year. At this trajectory, the crisis will soon become irreversible. Between 20 to 25 lakes, wetlands declined 37%, riverine wetlands 34%, sand and beach wetlands 25%, and lagoons 6%. Every category is trading downward without exception. The drivers are interconnected. Urban encroachment, real estate, infrastructure expansion, agriculture pressure, water extraction, pollution, unregulated tourism, all compounded by climate change. High altitude wetlands are especially vulnerable. With the Himalayas warming 3 to 5 times faster than the global average, glacier melt pattern and rainfall cycle are shifting too rapidly for wetlands to adapt. And the consequences are severe. Water scarcity collapses, agriculture productivity falls, biodiversity disappears, and disaster risk, flood, droughts, and landslides intensify. Community depending on wetland for drinking water and livelihoods face immediate danger. The data is apparent. So next slide is about wetlands are not just wildlife habitats,
They are nature's disaster defense system. In hilly and mountainous regions, they are critical infrastructure for community survival. They play various critical functions. Wetland absorb excess water, reducing downstream flooding, intensify, and protecting communities from catastrophic inundation. They act as a natural flood regulator. They mitigate landslide and to erosion control, vegetation and soil structures stabilize slopes, preventing catastrophic failures during heavy rainfall and glacier outburst events. They regulate climate and mitigate drought. Wetlands store the released water gradually, maintaining flow during dry period and buffering against precipitation extremes. Mitigation of glacier lake outburst floods, strategic wetlands downstream act as a buffer zones, absorbing the stock of sudden glacier release and saving lives. Biodiversity and ecosystem services, healthy wetlands support species diversity and natural system that sustain agriculture, fisheries, and water quality. Cultural and community resilience. Wetlands are integral to local livelihoods, traditional knowledge, and community identifying, strengthening social cohesion during crisis. So, we have relations in Uttarakhand since 2009, when I come with the Ministry of Water Resources at that time, and we met the Chief Minister, and after some time with the USEC, so my work in wetland began in Dehradun in 2012, I think, during the release of Uttarakhand Wetland Atlas. So this was the first atlas. I later served as a member hydrology in the committee of Ministry of Environment, Forest, Climate Change, drafting guidelines for the implementation for the wetlands rules 2017, advocating for the inclusion of wetlands in land records. Most recently, just a couple of weeks ago, I had the privilege of meeting Sri Kamlesh Paswanji, Honorable Minister of State for Ministry of Rural Development, where the release of our comprehensive report titled Revitalizing the Wetlands of India Status Report 2025. A QR code is provided on the slide. Please feel free to access the soft copy of this. Actually, when we are drafting this wetland guidelines, there are a lot of issues. So there are some stumbling blocks. We have to have the knowledge, we have the commitment, yet wetlands need to disappear. Why? Let me outline the 7 major gaps crippling our response. First, poor enforcement of policies on wetland management is one of the major challenges facing community-based conservation of wetland ecosystem. In 2021, we organized a program with Ministry of Jal Shakti on 2nd of February, and actually when we talk about the major things in the rules, the polluter pay principle was a stumbling block at that time first. But we say to the ministry that all the rivers, all the water bodies comes under wetland. So wetland have a forest act. So why not use this? So second, data gaps and monitoring failure will lack real-time wetland monitoring systems. Without accurate baseline data and continuous tracking, we cannot measure degradation or enforce protection effectively. Policy and degradation, weak environmental standards mean sewage, industry waste, and agriculture runoff contaminate wetlands unchecked. Enforcement is sporadic at best. Fourth, road construction and tunneling infrastructure project, even earlier speaker are also show some light on that. Environmental impact assessment are inadequate and project clearance bypass wetland protection protocols. So hydrological development and displacement, large scale dams and hydrological regimes. Communities are displaced with minimal consultation and ecosystem impact on
underestimated or ignored. Invasive species and land use change. Uncontrolled invasive species colonize wetlands while competing land uses convert them to agriculture or urban areas without inadequate mitigation. So climate change multiplier, extreme weather, intensify all existing pressure, governance framework have not adapted to address climate-driven wetland dynamics. Strong policy framework exists, but enforcement is missing link. Sir, we have a ISRO program after this. We'll have to finish up a little. Should I stop here? Sir, you wind up. Okay, thank you. Okay, sir. Because Any questions? I have a model here also. So, if you give me 3-4 minutes, I am coming from Delhi, so if you give me 3-4 minutes. So please show the model fast, otherwise, because we are late. No problem at all. Just show you, because I am working with Meghalaya government last 15 years. So we come up with a lot of fund first, then knowledge, then lot of partners over there. And this is I have the one who developed this EBA. To the stage. Thank you. Hello. Very good morning to all. So earlier speaker already highlighted that our Himalaya is warming and it is impacting our Himalayan cryosphere. But sometime Himalayan cryosphere also generate glacier hazards from the Uttarakhand region. And in the end of my presentation, I will discuss what are the challenges which we are facing today to mitigate these hazards. Can I have pointer? Okay. So most of Himalayan glaciers are receding at their mass. So this is in a similar manner. In a lower panel, we can see 4 to 6 supraglacial lake on the surface of glacier. And in 2000, these number of lakes and area has increased. And all these lakes merged together in 2015 and generated a very larger moraine dam lake. We have seen in October 2023, there was a major disaster by a South Lanok lake and it destroyed 3 hydropower plants in downstream areas. So this is the repeated photography of Dokryani Glacier in the Garhwal Himalaya. This glacier we are monitoring since 1991. And if we compare both photographs from 1992 and 2025, so the entire morphology of glacier has changed. Debris cover area is exposed and snow cover area is receding. This glacier has receded about 700 meters at its frontal part. So what is happening in Himalaya? These glaciers are losing their mass very rapidly due to the current climatic warming, as well as earlier we were getting a snowfall in a lower reaches, but nowadays we are getting a rainfall at the height of 5,000 meters and it is enhancing the glacier ice melt. So this is the first case study from the Uttarakhand region. In July 2017, a massive debris flow occurred at the frontal part of Gangotri Glacier by its former tributary Meru Bamak. We investigated this event using a multiple satellite images, digital elevation models and hydrometeorological data set. And our results suggest that this event is closely associated with the frontal retreat of Gangotri Glacier. If we see the data sets from 1935 to 2022, about 1.7 kilometer retreat occurred at its frontal part, and due to this frontal retreat, its lateral moraines become unstable, and before the 2012, the melt water from the Meru Bamak is draining from this left stream, but in 2012, about 10-meter wide gully was developed somewhere here in the left lateral moraine, and due course of time, it increased its width and depth. And during the 3 days continuous rainfall in July 2017, this event was occurred along this channel and deposit a huge amount of sediment at the frontal part of Gangotri Glacier.
We also quantify how much sediment was drained during this event using a DM differencing technique in the right panel. And we can see this is a closer view. This blue color is highlighting here a deposition of sediment, and this red color is presenting here a eroded sediment. This is a graphical method. This eroded area come deposit somewhere here. We published this paper in a Geomorphology Journal, and we also conducted a intense field work, and when we visited there, we came to know that these are not a simple moraines. These contains ice. So these are the ice core moraines, which are very sensitive to the current climatic warming, and they can easily degradable when they come in the contact of water. So these are some, again, repeat photography of Gomukh, which is the snout of Gangotri Glacier, pre and post event. We can see after this event, Bhagirathi River has changed about its course 150 meter, and this sediment was deposited during this event. My colleague also collected a suspended sediment concentration from Bhagirathi River water at Bhujwasa site, which is about 4 kilometers downstream from the Gomukh, and 6 times more suspended sediment concentration was increased in the Bhagirathi River water. And these are some field photographs of this event, and these are the ice cored moraines which are the main culprit for this event. This is second case study from a Chorabari Lake outburst flood which burst in June 2013, and in a normal condition we observed the water level of this Chorabari Lake was about 1 to 2 meter, but during this event on 16th and 17th June 2013, the water level has rise up to 25 meter, and this lake was burst from somewhere here. And during fieldwork, we again came to know that the presence of ice cored moraines. So in both event, permafrost conditions are the main major factor which need to be considered in a future study. So these are landscape change in the Shri Kedarnath Valley using a repeated photography as well as a high resolution satellite images analysis. So about 120 buildings were completely washed away during this event, and about 130 buildings were badly damaged during this disaster. And this is a field photograph of Ghoda Padav. Ghoda Padav is situated about 1.5 kilometer upstream from the Gaurikund towards the Kedarnath temple. And we can see the entire topography has changed. Nothing is visible here. So this is last slide of my presentation, which is showing our challenges which we are facing today to mitigate these hazards. So first is we do not have a baseline information. We do not have a high resolution or a large scale geomorphological maps. We need this if we really want to make a hazard assessment, realistic hazard assessment. We do not have these weather stations, temperature gradient or precipitation gradient data. So we need to install real-time automatic weather station. If really want to install some early warning system, we need a dense network of these sensors. And in a morning session, our chair Rajiv Sinha sir has already said that we need to understand the complex cascading process. We do not know what is happening with the permafrost areas or ice cored moraines, and if there is a 50 centimeter rainfall, what will happen? 100 millimeter rainfall happen, then what will happen? So we need to first install all these sensors, and then we have to conduct a threshold type studies. And we do not know what is the properties of these debris. So I also observe there is a very big gap in our data sharing. Many organizations are working on the same glaciers like a Gangotri or Dehradun. I think we need our nodal agency which can integrate all these things. And in a last, our secretaries have also highlighted this issue. We are making our settlements in alluvial fans and a flood plan. I think we need to make a frame one policy on this. So thank you very much for your kind attention. And if you have companies who run UAVs and LiDAR mapping
we also had a lot of help from SDRF. We had the community to help us. And overall, what we saw, this is something that I would like to bring in front of you today. Just to summarize the whole session that we conducted. Okay, now this is very famous. Now everybody has seen this picture. Next, please. I can control, right? So this was what was before. We see the embankment that they had made. Probably there were floods, and in fact in satellite data we did see that 2014 there was a very bad flood, after which this embankment came up. Now this place is like this. We did a lot of work together. This was a very collaborative work, and for that today I have also called the SDRF person who was coordinating it with us, and also the army who helped us through Mr. Amit Sharma. He is also here today. Now this is what I want to show you. There are streams coming down very steep narrow channels. Now these steep narrow channels were affected throughout, and if we say that it is only the moraine material which has come down, no, it is not true. All the channels, 5 in number, were completely scoured, and landslides occurred in heap because see the kind of narrow gorge, steep gorge. These are the gorges in that, all the gorges are like this. So what we say for the Dharali event is definitely it was a climate induced high intensive rainfall triggered hydrometeorological event. But what we are concerned about is that we have got stations in the valleys, but we don't have our meteorological stations at elevations. We do monitor the larger glaciers. We do not think about the smaller glaciers, the cirques, and these are actually the fastest melting glaciers, the smaller glaciers. Then we do not have a good network. We understood that this was a very short spatial variability of the intensive rainfall, and we cannot even understand how to quantify it, because within that short spatial variability, how do we actually have meteorological stations, or we have, like Dr. Krishnan also pointed out, we are concerned about very short distances. So how to work that out so that we are prepared with more data to go into a forecasting mode and now forecast for even short areas. Then we have to understand how landslide, dam, outburst, floods can happen, not in very big episode, but very small episode, but compounding together and then bringing a very big event. Then also we do not have very high resolution data, topographic data. Now why this is necessary is whether we do LiDAR survey or whatever, we need high resolution topographic data for the mountain states, and we need continuous data. So that something happens, we do a LiDAR survey and then we can see what was before and what is now. Now we have nothing to compare. The pre-evaluation data we did acquire, but we had nothing to compare. So these are some points I wanted to bring out today, and we have paucity of time, so we are winding up fast, and we should move on. Thank you very much.
We have with us Sri Rajendra Nath ji from SDRF, and we have with us Sri Amit Sharma from Matrix Geosolutions. And because of their contribution, we would like to felicitate them today because Sri Amit Sharma had sent his team with all the instruments on volunteering basis, without any charge, without any money, without any expectation, only to be at service during disaster period. So I'd like to call Mr. Amit Sharma and also Sri Rajendra Nath, because Rajendra Nath ji went all the way up to the glacier region and was continuously sending me the feeds and the UAV captures and pictures. We sat down together before he went so that we understand what he needs to capture. So a very, yes, heartfelt thanks to their contribution. Thank you very, very much. I invite Professor Rajiv Sinha sir to please do the honors. Thank you so much, ma'am. Now it's time to, it's time for Thanksgiving. I request ma'am to please do the honors. I'll request Professor Rajiv Sinha sir, the chair for this session, to kindly accept a token of gratitude from the side of the organizers. If you can open this, yeah. If you can open this. आप दोनों लोग करिए सर. I request you to be here, sir, because I'd like to invite Dr. Raghavan Krishnan, the climate modeling and analysis scientist. Yes, now this is okay. Yes. Open it, yes. Professor Anil V. Kulkarni, sir, from Indian Institute of Science, Bangalore. So thank you so very much for gracing us with your benign presence. Dr. Arvind Kumar, the President, India Water Foundation. He has left. So somebody from the foundation, if at all he or she can receive. All right, we'll get it done, sir. We'll have to. Dr. Rakesh Bhambre from Body Institute of Himalayan Geology. And the steering lady for this wonderfully organized function. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Ladies and gentlemen, with this we conclude this plenary session in the name of Water Conclave. And since we are having some paucity of time, we'll be immediately jumping into another session, plenary session scheduled, that was scheduled for 12 o'clock, but then we are running late by 10-15 minutes. The session is on space to safety, leveraging space technologies for resilient planet. The session partners are ISRO, IIRS, and USEC. But sir, I would like to invite Dr. C.M. Bhatt to please take it further from here.
panelists, sir? Ma'am? Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir, for giving this opportunity. Now, I invite you all to remain here. A very interesting session, space to safety. We are running short of time, already 25 minutes almost late, but we'll finish in time. That is our promise. And before starting this session, good afternoon to all the distinguished delegates, eminent scientists present in this particular hall. This session is on space to safety, leveraging space technologies for a resilient planet. We will begin with a keynote presentation on ISRO Disaster Management Support Program, current capabilities and emerging innovations from our keynote speaker, Dr. J.V. Thomas from ISRO headquarters. Then we have a panel of experts will be joining on the dais, and I invite first Dr. J.V. Thomas to, okay. Then next we have in the line Dr. Neeru Jaiswal. Madam, you may please take the seat. Dr. Srijit, Dr. Shyam S. Kundu, Dr. Tapas will be joining online, Dr. Arjit Roy, Dr. Harish, and myself. नहीं अभी तो कुछ नहीं, अभी हमारे सेशन है। पहले प्रेजेंटेशन कर लो फिर बैठेंगे पैनल के लिए। फर्स्ट यू कंप्लीट द पैनल। तपस का लिंक करो, तपस का लिंक करा दो। आपके पास लिंक हो जाएगा, तपस का मीटिंग ले रखी है। जीमेल है तपस का जीमेल, उसको पता नहीं है। व्हाट्सएप पे देना पड़ेगा उसको। व्हाट्सएप बस ना। तपस का नहीं है मेरे पास जीमेल। We have one expert joining online, so little time we will have to share the link from the organizer's end, and then we'll come back. So we will occupy the stage. Yes, you be there, sir. I'll call you.
Okay. Some technical things have to be resolved. Now they are resolved. So again, just a brief introduction about this particular section, space to safety, leveraging space technologies for a resilient planet. We have a keynote presentation, one, and rest we have a panel discussion. Today we have one keynote presenter with us, Dr. J.B. Thomas from ISRO headquarters. Followed by we have seven experts from different organizations of ISRO. Dr. Neeru Jaiswal from SAG, Dr. Srijit from Space Application Center Ahmedabad, Dr. Shyam S. Kundu from Northeast Space Application Center, Dr. Tapas from National Remote Sensing Center joining us online, Dr. Arjit Roy from Indian Institute of Remote Sensing, and Dr. Harish from Indian Institute of Remote Sensing, and myself from Indian Institute of Remote Sensing. So we have tried to bring all the experts from various organizations of this particular ISRO working on the natural hazards with various expertise and long experiences. So this session was with the keynote presentation from Dr. J.B. Thomas. Let me give his brief introduction. Dr. Thomas is a geologist by training. He did his MTech and PhD in Earth Sciences from University of Roorkee and then postdoc from PRL Ahmedabad. Currently as Director of Earth Observation, Application and Disaster Management Program Office, he is pursuing the data utilization of remote sensing satellites, compilation requirement from ministries, users, planning future remote sensing requirements for ISRO. He is Member Secretary to Program Management Council, Space Applications and Planning Committees of Space Application Management Systems. And he is part of various important standing committees. He has served Member Secretary to Standing Committee on Oceanography and Meteorology. He is associated with ISRO's Disaster Management Support Program since 2003 and has almost 26 years of experience working within ISRO. So I invite Dr. J.V. Thomas for his talk on ISRO's Disaster Management Support Program, current capabilities and emerging innovations. Over to you, sir. Now, first we'll have your talk, then panel will come. If panel feels, they will see. They will see. So they will see the slide, then will come. Then we'll join. Good afternoon to all. So I was given this topic, ISRO's Disaster Management Support Program, current capabilities and emerging innovations.
So I will be, I mean, in this panel, all these people in the panel are also working in disaster management program. I will give you a quick overview of the disaster management program, and then based on that thing, panel can interact. You can interact with the panel and for any questions or answers. First slide, please. So this disaster management program of ISRO has started in 2000, around 26 years. Formally, we are running a disaster management support program, and 2000, before that also, ISRO had a program in an experimental mode, in a trial mode we were running, and 2000 we have established the program on disaster management. The objective of thank you. So the objective of this disaster management support program of ISRO is to enable space-based input for effective disaster management by respective nodal ministries. You are aware, ISRO is not nodal ministry for any of the disasters. If you see flood, it is CWC is the nodal agency. Like landslide, it is GSI is nodal agency. Like each disasters, each ministry has been identified. ISRO is only supporting with the space-based informations. So we have, ISRO has gotten under this disaster management program, we have got the space, aerial and ground infrastructure is there. Whatever is output, we are utilizing it for disaster management support. We are trying it out, early warning, we are trying it out, advanced R&D, capacity building, everything we are doing. We have got also a very well-built international cooperation. All database, DSS tools and hazard, vulnerability, risk assessment monitoring, damage assessment, all this thing using the satellite data we are carrying out. And we are in this, all this program is running in liaison with the Cabinet Secretariat, Ministry of Home Affairs, National Disaster Management Agency, SDM, State Disaster Management Agencies, and other nodal departments, nodal ministries, everything we are working in association with them. And we are mainly looking at flood, cyclone, forest fire, lightning, GLOF. Morning session you have heard a lot about the GLOF, landslides, earthquake. All these disasters we are doing it through this satellite-based input. So what are the satellites currently available for this thing? We have got a ResourceSat satellite. We have got two satellites called the ResourceSat series, ResourceSat 2 and 2A, which gives three resolution images, one in 56 meter, one is in 23.5 meter, and also 5.8 meter data we are getting from ResourceSat 2 and 2A. And we have got microwave satellites called RESAT, which is working in C-band radar, and also recently launched NISAR, which is a NASA ISRO synthetic aperture radar, which has got two bandwidths, L and S band, two radars we are operating in the same satellite. And we have got INSAT series for the meteorological applications. We have got the INSAT 3DR and 3DS with 6-channel imager and 19-channel sounder we have. And we have got Cartosat series for the high resolution data, which gives two satellites again in the civilian domain. We have got a 60 centimeter resolution in Cartosat 2S, and Cartosat 3 gives around 30 centimeter resolution. And we also have OceanSat series. In OceanSat 3 currently in orbit. OceanSat 3 is having ocean color monitor, a scatterometer, and these two payloads are there in the OceanSat 3. And we also have got a Saral satellite, which is a radar altimeter for sea surface height.
All this data we are utilizing for remote dam, all the disaster management application support we are utilizing this. In addition, we have got 2 aircrafts for aerial surveys. We also have several UAVs and also ground instruments like Doppler weather radar, automatic weather stations, lightning detection network, and also the course whatever in addition to us, what we're GSI also is having, Survey of India is having the course, that data also is now available for all to use it. So the first one, the NISAR, I have told, NISAR is the latest satellite which has been launched on 30th July 2025. It has completed its Calval operations, and this September 20th only it has come to its final orbit. Now another 2-3 months we will be validating all the data, and that data is going to come out in the open for the public to use. And we have got, today we have got Srijit is there in the panel. Srijit will be able to answer all related to NISAR related applications, everything it can be told. It has got L-band and S-band radar. It will be giving day and night imaging, SweepSAR technology. SweepSAR technology is along with wider swath. We are also getting higher resolution. This is a new technology which has been experimented in NISAR, and it is now operational. And it is a exact repetition path it is following. In 12 days, we will get 2 coverages. One in the day pass coverage and the night pass coverage. Both will be covering. The 2 coverages we will be getting in the 12 days. And because of this exact repetition, we will be able to do the repeat pass interferometry. And we have got now the free data policies there, so the data will be available to all. This data will be useful for solid earth studies, disaster management studies, cryospheric application, and also the ecosystem applications it will be useful. The next is on the flood. Flood disaster, what we are doing. Flood disasters, we have got in the panel our CM Bhatt will be there. CM Bhatt is working on the flood disasters. So we are doing flood early warning system. ISRO has developed flood early warning system for 2 rivers, Godavari and Tapi basins. National Remote Sensing Center has been developed. And also for northeastern region, NESAC is running a flood early warning system. And in the last year, 2025, and this year, 2025, around 200 and all the floods happened in the country has been mapped, and around 280, more than 280 maps are given to the users. All the states as well as disaster management agencies, we have given this data. And flood hazard zonation atlas, we have got last 25 years of data, satellite data is there. So which area is being affected by flood and everything, all this database is there. With that thing, we have made flood hazard zonation atlases, and also flood cumulative flood affected area atlases. All these atlases have been prepared for the country. And also flood vulnerability and risk mapping also have been carried out for the country using this data. Another one area what we are doing is the cyclone. Cyclone, as I have told, we have got inside 3DR and 3DS data. So this real-time data will be used for forecasting intensity. The cyclone, from the origination of the cyclone in the deep ocean, from there, what is the track, what is going to be the intensity, where it is going to strike, and what time it is going to strike. All these things we are doing. IMT is the nodal agency, but we are doing it, that R&D mode, we are doing it for improving these algorithms and capability improving. We are also trying. Today, in the panel again, Dr. Neeru Jaiswal will be there. She will be able to answer all the questions. And similarly, OceanSat-3 scatterometer data. OceanSat-3 scatterometer data. This is the scatterometer data. With this thing, we can get all the wind vectors and how that cyclone, where is the intensity, where is that eye of the cyclone is located.
This can be incorporated into the cyclone modeling, and we can predict whenever a depression is being formed, whether it will turn into a cyclone or not. That can be predicted 4 to 5 days in advance, so that the people, the disaster management agencies, authorities, will get more time for acting on this disasters. Next is on the forest fire management in the country. Almost near real-time forest fire detection, almost using 6 to 8 satellites, whichever is available, globally, whatever available data we are utilizing. And from there, automatically all these active fire locations have been identified, and it is disseminated to the forest fire authorities, forest authorities. But this stubble burning and all, it's a short-lived. Maybe half an hour, one field will burn out in half an hour. If our satellite is not crossing that area in that particular time, we will miss out. So we are developing a methodology using the burned area. One field is burned, that scar will be available for the next day also. So burned area, and which are the areas burned, that can be calculated. And similarly, we are also working on the fire risk index using dynamic factors like temperature, humidity, and rainfall, etc. is dynamically varying. So that parameters, as well as static parameters. Static parameters is not permanently static, but it takes much longer time, like a fuel. Fuel means what is the biomass available for burning, topography, vegetation type, etc. also is being considered, and we are looking at the fire risk index also. The next is the landslide disaster management. Again, Dr. Tapas Ranjan Martha, who is participating from NRC, is working on this landslide disaster management. We are doing the landslide inventory. That is an easiest thing what we can find out. Whenever a landslide is happening, that area from the vegetation, it clearly comes out, and that can be the whole country, what is the landslide area, whichever happened, that is mapped. And the damage assessment, whenever a landslide is happening, using the satellite data, what is the damage happened, that is being mapped. And also susceptibility mapping, district-wise landslide exposure assessment, and also we are doing the experimental landslide early warning. Using the rainfall threshold, which is landslide induced by rainfall. Landslide can also happen because of other reasons also, like an earthquake. When an earthquake happens, that stability can be disturbed, and it can trigger a landslide. But because of the rainfall also, this large number of landslide happens. That landslide triggered by rainfall is being predicted, looking at the rainfall as well as the topography, everything we are trying to predict. And one more project called SILAS, Satellite Integrated Landslide Assessment and Alert System. Dr. Tapas Ranjan Martha is engaged in now doing for developing higher than the area of more than 0.25 hectares size. We are mapped using LIS4 data. LIS4 data is 5.8 meter data, that is I have earlier told resource site data. And the prioritization, from this 28,000, we have also prioritized some of the glacial lakes on selected parameters of lake and dam characteristics. And unsteady flow hydrodynamic model of 15 selected glacial lakes for various globe scenario. In case a globe happens, glacial lake outburst flood happens, what is the scenario? This also modeling has been carried out for 15 selected GLs, and that activity is still continuing. Another one, this thing is the lightning disasters in the country. The lightning causes the largest mortality. In each of this lightning season, we lose several. In the Bihar, Jharkhand area, this lightning is a severe problem. And again, once again, today in the panel, we have our Shyam Kuntu is there. From NISAC, Northeastern region, he is working on this lightning disasters. We have established, National Remote Sensing Center has established around 49 lightning detectors we have already established. And from there,
this cloud to ground, whatever is the happening, this discharges are being, we have from data from 2020 to 2020 onwards, whatever the data is there, that is available for anybody to do the analysis and to know the characteristics and which are the areas prone for lightning. And in northeastern region also using this data, I mean northeastern region around 9 lightning detectors are there. Using these detectors as well as the satellite data, around 2.85 lakhs alert has been issued, and that it has been found around 84% accuracy it has been found. Dr. Kundu maybe will be able to answer more on this thing. Next is database. We have developed a national database for emergency management, NDEM. In this, all our satellite database is there. Also, the front page, this is a front page, it will fetch all the alerts from several agencies. Like CWC, if they are giving some flood alerts, or GSI is giving some landslide alerts, or some snow avalanche studies from the DGRE, some alerts are coming, or IMD, some alerts are coming for the cyclone. All these things real time we will be fetching that thing and it will be shown in the front page. So this is a dynamically, and every time new alerts are coming, it will be shown in this one. And this I mean, it has got a multi-scale geospatial database, decision support system, all this have. And today Dr. Harish Chandra Karnataka is also in the panel. He will be talking, I mean, he will be able to tell you more on the how the portals are being developed, how the AI ML methods are being utilized for all these studies, that Harish Chandra Karnataka will be able to tell you. So international cooperation is, we have two programs we are internationally we are participating. One is the International Charter Space and Major Disasters. Almost 17 international agencies are members to it. And whenever any country is facing a disaster, immediately we can alert the charter. We can activate the charter. All these 17 agencies will provide the data for that particular event. So this, in this, we were the lead for this international charter for this year. 6 months from April to October, we have led the, ISRO has led this international charter. And ISRO, from around 173 disasters globally, we have supported by providing our satellite data and supporting these disasters. Another one is the Sentinel Asia, which is concentrated in the Asia Pacific region. For Asia Pacific region, this is one, and we are the now, ISRO is the co-chair for this Sentinel Asia program. And in the last 2 years, we have supported Sentinel Asia also for 95 disasters. We have supported the international, I mean this Sentinel Asia. Similarly, in capacity building also, we are doing a lot. Annual DMS training programs are there, 5 days program, 1 day program, 1 week program, all this being organized. National database for emergency management specific training we are organizing to users like Ministry of Home Affairs, National Disaster Response Force, all these people we are training in workshops in association with the NDMA, and several things we are trying to do it for training, developing this capacity for utilizing this data. And now, what is the upcoming advancement? There are several satellites we are planning up to 2028, which is already planned. Now, OceanSat 3, I have told. Similarly, similar to that thing, OceanSat 3A is coming in 2026. First quarter itself, this satellite also will be launched. This will be working in tandem with OceanSat 3. In addition to OceanSat 3, we will have sea surface temperature monitoring, and also millimeter wave advanced temperature and humidity sounder also will be there. So this various levels of temperature and humidity profiles that is going to advance the weather monitoring, and it will be supporting all the meteorology related disasters. Similarly, we are going to get the ResourceSat 3 and 3A in 2027 and 2028. This will give 20 meter data for 900 kilometer swath,
and also 10-meter resolution data for around 300-kilometer swath. This will be again supporting the data availability and the disaster management activities. It can be done very efficiently. And the ResourceSat 3S and 3SA are stereo missions. Earlier we had stereo mission in 2005, Cartosat 1. Now that was 2.5 meter resolution. Now with 1.4 meter resolution, ResourceSat 3S and 3SA is going to give higher resolution 3-dimensional data it is going to give. And we are also going to hit HRSat, 3 satellite, high resolution satellites. And also one satellite called Trishna. This is a, with CNES we are going to get this Trishna satellite, which is going to high resolution thermal imaging, and also one G20 satellite, which is environmental and climate change for studying air quality, forest fire, etc. will be studied. And also recently we held one national meet, and all the users have come up and told what is their requirement. From that requirement also we are planning INSAT 4th generation from 3DR's next generation satellite. Now 3DR is having 6-channel imager. In next generation we are going to have 18-channel imager we are going to plan. And also dedicated satellite optical and SAR constellation for disaster monitoring, constellation of satellites for forest fire monitoring, high resolution satellite constellation in addition to HRSat, and also the adoption of advanced techniques like edge processing, on-board AI, event-driven sensing, all this thing as proposed. All this thing we expect the new missions will ensure the data availability for the advanced studies, and also it is going to take our disaster management activities to the next level. So here I will stop, because otherwise next panel will not have any time. This is an overview, and details can be sought from the expert panelists available. Thank you so much. Thank you, sir. You can take the chair. So this format, we thought to have an overview from ISRO side, from Dr. J.V. Thomas, who has a lot of insight, what programs are there in currently and what is going to come. So with this overview, I'd like to invite our panel of experts. Dr. S.S. Kundu, who is heading the Space and Atmospheric Science Division from NESAC. Dr. Kundu. He is an expert on lighting detection and those allied fields. Next, I'll call upon Dr. Arjit Roy, who is heading Disaster Management Support Division at IIRS, expert on forest fire and ecology. Dr. Harish Karnatak, who is heading the GIT and DL, and he's an expert on machine learning and artificial. Next, I'll call upon Dr. Niru Jaiswal, who is scientist at Space Application Center. He has expertise on a cyclone forecast and early warning and those related fields. Dr. Srijit from Space Application Center. He is a senior scientist and has a lot of insights into the earthquake-based. Then I'll just what format we are trying to do is to have a panel discussion, and myself, CM Bhatt from Indian Institute of Remote Sensing, have almost 15 years of experience in the flood and hydrometeorological disasters. So what we'll try to do. With this background, not taking much time, we will go to a panel discussion so that the technology and whatever we are trying to set becomes much simplified. Not taking much time, we also have Dr. Tapas Ranjan Martha, who is joining online. He's heading the Geosciences Division and has a lot of expertise on the landslides. Welcome, Dr. Tapas. Yeah, hello, welcome. Thank you. Yeah. So now, let me ask Dr. Srijit.
we are hearing that NISR has come, and how does it help the Himalayas or the Uttarakhand, in terms of deformation or earthquake? Can you simplify that overall? What is it? Yeah. So, the NISR or the NASA ISRO synthetic aperture radar, as you know, it's a radar. There are two radars on board, one S-band from ISRO and L-band from NASA. So that will be up in the sky and looking at the Earth, taking radar images at every 12 days at the same place. So we have the ascending and descending phases. So in effect, you will get 6 days radar imaging over the surface of the Earth, covering the entire land masses. That includes the forests, mountains, the ice sheets, and entire globe. So the USP of this mission is that the NISR is designed to monitor the Earth's surface dynamics, the slow motion of the tectonic plates, and we can identify the regions where strain is building up that leads to earthquake. It can also monitor the landslide motion or the land subsidence, and it will be very good for understanding the geohazard in that perspective. It can also monitor glacier dynamics and the forest dynamics as well. So that's going to change the way we observe, the way we understand the Earth's surface dynamics. Thanks. Thank you, Srijit. And equally, I just like to take it to Dr. Tapas also, who is an expert on landslide. Dr. Tapas, how do you think this NISR will help the landslide and help us in developing our landslide hazard zonation more effectively than what we are having currently? How does it add on to the strength? Yeah, I hope I am audible. Thank you. Yeah, so NISR has the capability of giving us the slope motion. So the landslides, which what you see most of the damaging ones, they don't happen all of a sudden actually. So the ground motion over a period of 2 years or 3 years, we can pick up that using the NISR satellite data. And we have the expertise, and at NRSC we have the computational infrastructure also to process massive amount of this NISR data, as well as the other data sets, and that will straight away flow into our landslide forecasting model, which we are developing now, which is having a high resolution landslide forecasting model. So I'm sure this NISR data has a lot of application for highly granular landslide forecast in India. Thank you, Dr. Tapas. Now we'll take an equally important problem, that is lightning. Of late, lightning has become a very serious hazard, though like urban flooding was not so important, but it has become important for us. Lightning is slowly coming into our lives. So, Dr. Kundu, you have a very good expertise on this field. Can you tell us in a very plain language how satellites are able to capture the phenomena of lightning, and what you are specifically doing in this field? Yeah, thank you. Yes, satellites can do wonders in terms of measuring the lightning. When there is a lightning, there is a flash. So if we have satellite in the sky, we can actually see that flash and measure it. Normally, whenever there is a lightning, the oxygen, there is a particular channel called 777.4 nanometer that is sensitive to oxygen, and during lightning time, there is additional emission in that channel. And satellite sensors are able to measure that and provide us the information on the lightning. Actually, the first lightning, one of the premier lightning, space-based lightning sensor called lightning imaging sensor was put in a satellite called TRMM. And later on it was put in International Space Station. And this sensor actually first gave us the spatial distribution of lightning across the globe, including our ocean. Prior to that, only we had information about lightning, what is happening over some parts of the land. So, and then when that data since 1998 till 2013, that data was available. So when that data was plotted, then only we could know what is the distribution of lightning over space. And then we saw that over India also, particularly East India and Northeast India, and the belt of Jammu Kashmir is one of the hotspots. There are only 4 or 5 hotspots across the globe, and India is one of the hotspot in lightning.
And then subsequent to that, in the GOES satellite, US satellite, in a geostationary platform also lightning was given. Earlier satellite that I told, TRMM and ISS, these are all polar orbiting, so you don't get lightning data continuously. Only when you have a sensor in a geostationary platform, we get this data. But unfortunately, as of now, in none of the Indian satellite, Sir has already mentioned, none of the Indian satellite has lightning sensors, and therefore we don't have continuous data of lightning over Indian region. There is a satellite, Chinese satellite, FY04, that covers part of Indian subcontinent, particularly the eastern part of the India is covered, but then that data, we don't have access to that data in real time. But definitely, space-based lightning provides data continuously across the border, over ocean. But in India, what we are doing is, in absence of that, we are primarily relying on the ground-based lightning detector data as well as radar DWR data. So DWR data helps in identifying the convective zones inside 3DR and 3DS, even though it is not giving lightning directly. But these satellites, along with the imager, 6-channel imager and sounder, is giving us information about the proxies that are proxies of lightning. So this helps us to identify the convective clouds, the direction of movement of the clouds, at what rate it is growing, because if we combine 3DR and 3DS, we get 15 minutes data. So it's a good enough data to provide, I mean, the dynamics of the cloud growth also can be measured. So even though we don't have lightning imager on board, but these current satellites are also in a way supporting in giving lightning early warning when these are used in conjunction with the data that is coming from ground-based lightning detectors. I mentioned about NRSC has a network, IITM also has a network, and these networks are very fast network. You get lightning data every second from these networks. So combining this ground-based data, lightning, and then satellite imagers, we are able to provide, I mean, IMD is able to give operational lightning early warning at reasonably good accuracy. And ISRO centers we are doing R&Ds to support these operational activities further. Let me just add on to Dr. Kundu, your this particular explanation. How well we are now capable to ingest Doppler weather radar. Actually we are seeing it as a product, but still I find there's a gap in understanding the product and in assimilating in the your products. You have told that you are using it. Yes, yes. So how well the capacity exists? Capacities, I will tell it is very good actually. I mean, if you say or Indian leading institutes like IITM, Krishnan sir is here, NCMR, WF, they have very good infrastructure in terms of running the WRF, learning the numerical weather prediction models, configuring them for the Indian regions. And then recently we have got our Indian forecasting models, the Bharat forecasting system is also operational. So if we talk about how we understand the numerical models and how we understand our region, customizing the models for the Indian region, and even developing new models, we have good expertise. Assimilation, if it is called, inside 3D based satellite images, ground based data are going to models on a regular basis. DWR data also goes to the model. NCMR WF assimilates this data for many of their models. Even at NESAC also we operate a radar at Cherrapunji. So that radar data also we have assimilated into the numerical weather prediction models. But IMD's operational models, sometimes the data is not operationally assimilated, but capability is there to assimilate this data into the models. Thank you. Yesterday, in addition to the thing, our INSAT 4th generation satellite, which is going to come in 2930, that will have a lightning imaging sensor. Thank you, sir, for this information. And yesterday, Chief Minister and I think Minister of Science and Technology, Dr. Jiten Singh, announced that additional 3 Doppler weather radars are coming in Uttarakhand, one close by Haridwar. So we need to have more capacity building in this particular field and utilization also in terms of real assimilation into the model. Next, let me go to Dr. Harish. Dr. Harish, now because since we have a lot of satellites in the platform and a lot of data is coming, and if you read petabytes of data is coming, how this artificial intelligence, machine learning, and all those digital twin, big data play a role in solving DRR problems? Yeah, this is a very relevant questions. Today we are talking about the use of artificial intelligence, data science approach to solve many problems, and disaster risk reductions and disaster mitigations are the important topic. And here the most important is what we have to understand is fusion of multi-source data. So when we fuse this data, and then we can get the meaningful insight of this data. As morning time, we listened the experts. Dr. Krishnan was there, Kulkarni sir was here, and Professor Sinha sir from IIT Kanpur. They also mentioned about the major gap is the observations gap.
So we need to have a good observation. So when we have a good network of observations, maybe from the ground, maybe from space, or maybe drones, then manually we cannot interpret this data, what this data is saying, because there are a lot of challenges in this data. So AI can help us to basically to understand this data better way. And also the AI can help us to basically understand your model outputs, because the physical models are very, very important to understand the disaster phenomena, or process-based models are very important. In this case, whatever model outputs are coming, or maybe direct observation from the satellite, from the ground, so AI can basically directly help us to fuse this data combinedly and to get the insight of this data. For this purpose, definitely the AI awareness or AI education is very, very important. Right now the scientists and researchers, they are expert in their own domain. They are expert in maybe to understand the physics of this, our extreme weather condition and all. But here the integration of this advanced computation approach or AI-based algorithms are very, very important. And we have seen in the recent past, last 2-3 years back, when the ChatGPT came in the market, suddenly a lot of attention was given by the community, a lot of attention was given by the society to how to use this ChatGPT approach for a specific problem of the society. The same way, and we understand the power of the AI, and many companies are working in this directions, and definitely scientific organizations like ISRO is very serious. Our data centers are full with the data, with algorithms, and our the scientists and researchers are basically developing the new methods, models like integrating the large language model to understand the geospatial data, to understand the satellite imageries. And this complex data we can very easily interpret, and we can set up a communication between the decision makers, planners, citizen, and also the scientific data. So this way it is very, very important. And here the most critical thing, what all the agencies those are involved in the data preparation, data analysis, or data utilization has to increase the AI awareness or AI education in their system. Adoption by the agencies will be very, very important. Otherwise, there will be no use of this technology. Thank you, Dr. Harish. Very interesting that we are geared up with this technology, and we will be using and are using currently. My next question goes to Dr. Arjit Roy. ISRO has been working in the field of forest fires, as well as other institutes are also providing alerts. We are providing alerts, and we have a lot of satellites. But how, I have seen that forest fire spread is a very important aspect that has to be modeled, because how the forest fire is spreading, in which direction the forest fire will spread, what are the factors or parameters that will guide the spread of fire. That is now more requirement of the time, not only alerts. So how do you think we are gearing to that side and forewarning the community on the ground through satellite? Thank you. Yeah, you can take this one. So thank you, Mr. Bhatt. In fact, this is a question which is commonly asked, because what we have achieved till now is that we have got a fairly good expertise on detecting and monitoring the fires after it has occurred. But the case is that if you want to really manage the forest fires, you also need to have a forewarning. Or in case the fire has occurred, you need to know the speed and the direction in which it is going to propagate. So there are various models which are able to identify the areas which are at risk in a dynamic fashion, which uses ground-based as well as space-based inputs from for the meteorological conditions, as well as the conditions of the forest in which the fire may occur, especially the calorific content of the fuel, the dryness of the fuel, and the weather conditions. So presently the state is that we are able to very well identify at a fairly high resolution of 1 kilometer what is the probability of fire occurring in the next 24 hours. There are some experimental work which has been carried out, which has been through which we have been able to even model the fire spread, which includes a complex modeling procedure using the connectivity indices like using graph theory,
or network theory, then the weather conditions through WRF and other weather models for the wind direction, wind speed, the relative humidity, the humidity profile of that particular area, and also then we use how the fire spreads from one pixel to the other pixel using cellular automata based algorithms. And the accuracy of these models in specific areas where it has been experimentally tried out, for example in Corbett Tiger Reserve, has been more than 79 to 80%. That is the area which has been predicted by the model for the next 24 hours, and the area which has actually burnt in that area has an overlap of around 79 to 80%. So this is the state of art models which are there. The problem is that these models require immense computational resources. So as and when the computational resources and the computational powers increase, these sort of models will be more and more mainstream, and we will be able to provide them as on demand. Dr. Arjit, for that information on the modeling part. Now I'll go to Madam Neeru, who's an expert on the cyclone. Madam, we have come a long way since 1999 Odisha super cyclone, where we lost a lot of lives, to the recent cyclone Phylline and all. World knows that cyclone satellites are playing their role. But how do you think these whatever new missions that are coming in future or existing strengthen our modeling capability so that we can better predict the storm surge, all those parameters, recently spectrometers that are being launched? What parameters we gain from them, and how do they improve our modeling capability? Thank you, sir. Very good afternoon, giving me this good question. Cyclone is not a system which is restricted to some local scale. It's a very large, horizontal as well as vertical. And satellites are the tool. They give us the data from birth of the cyclone till the death of the cyclone. So to understand that cyclone, whatever we get into the model, we need to have the data from surface to the upper level. And within the cloud, what is happening. And for all three, our satellites are well efficient. We get a different frequency over different platform of the satellite. Like geo-based satellites gives us a data in whatever imagery channels are visible. All those we get from these two satellites in 3DR and 3DS in every 15 minutes. These goes into the models. And we get the spectrometer data, which gives us the information of the lower surface wind vectors that goes into the model. And within the cloud, what is happening that we get from our humidity sounder data, temperature sounder data. So all those within the cloud, what is happening at the surface, what is happening, and at the top of the atmosphere, what is happening, at the mid-level, what is happening by whatever channel, that all goes into the model, that is strengthen the model, and that initialize the model as the cyclone initial parameter that is required. So in that way, we get a very advanced information, and as we get more better initialization of our model, we get the better output. That is the first condition of the modeling. So better initialization we are getting from the assimilation of all these satellite data, and that are actually affecting the advancement in the cyclone forecasting. Computational facility we have advanced from Odisha super cyclone to till date, but the advancement in the observational data set from the satellites and in situ as well also that goes into the model that actually improves our cyclone predictability. Thank you, Dr. Neeru. My other next question will be Dr. Thomas from our headquarters. Sir, how this ecosystem is changing now by the new space policy that we have brought in, and we are new environment where we are supporting the startups, the private environment. How do you think it is changing or will support our disaster preparedness? As you are aware, 2020, the new reforms in space sector has kicked in. The government has brought in the reforms. And 2023 Indian space policy, 2023 has been announced. As per that thing, the data is free for all the government agencies. Without, all the resolution, any resolution, all the data available from our satellite is free for all the government agencies.
and the data up to 5-meter resolution, coarser than 5-meter resolution, it is free for all the people. And the finer than 5-meter resolution, it is available for everybody, but with a fair pricing. I mean, the private industries also. So lot of, I mean, now since the data is available, anybody can take it and also generate the value-added products and go ahead with the. So now lot of private industries are also coming into the picture for data processing, as well as this will increase the availability of database. This is going to help the disaster management activities for the government. I mean, all this private, I mean, earlier around only 5-6 startups were there. Now around 400 industries are working. 400 startups have started working with ISRO in many fields, not only in application, in different fields it is working. So all this data availability is going to support all our country's disaster management efforts, which is, I mean, all the private industry is going to help. Yeah, Dr. Kundu, I know you have a very short time when your flight is planned, and due to delay in session of almost 22 minutes, we are late from our recorded time. I'll have a last question before I make you free from the panel. How well we are prepared to give forecast at at panchayat level or community level? Science is one part, but how accurate or how well we are planned to give forecast for the local public, or how we are doing it in the northeast, your center? Yes, yes, yeah. So yes, it's a very I mean important question, because to save, as sir mentioned, that lightning is the disaster that takes highest life in India. And if you see this, almost 90%, more than 90% of the people who are dying is in rural areas. And these are predominantly the farmers who are working in the open areas. So because in India, particularly the West India, I mean East India, Northeast India, people have normally will be working in the field, and lightning or severe clouds, thunderstorms are seen normally in the late in the evening, or late in the evening. So these are the time when people are in the field. So these lives can be saved. This means if we have a proper plan. Like in Northeast, what we do, using the data that is coming from IITM as well as from NRSC, we plot this data in a GIS domain. And once we plot that data, because this is very dynamic data, every minute data is updating. So, and this lightning is also a proxy for the deep convective clouds. So when you put this data, thousands of lightning events will be there. And then when you put them and over a time series, you can really identify where the convective cloud is, which way they are going. And if we integrate this with RWR and satellite data, we also have a decent idea about how the progress, whether the convective system is growing or it is decaying, in what phase it is. So combining all this, we are able to identify a polygon in which the villages or panchayats that are within this polygon is likely to be impacted by lightning, say in next 1 hour. And based on that, government of Assam has last year or since 2024 started giving early warning to the village level. Not to the public directly, but to the Apada Mitras and the officials who are working at village level or panchayat level. So this is going. Now this year, 2026 onwards, they plan to take it to the public directly through cell broadcasting. In some of these states, this broadcasting message is already operational. In Andhra and some of the states, they have already operationalized this broadcasting taking service from a private agency. Earlier, I don't think it is available. I mean, they are doing it now. So this means we are able to reach to the panchayat level if we want. The early warning system exists in the country. Panchayat level, when we say, we assume that 1 kilometer kind of a special resolution you're talking about. So using this ground-based lighting data that is coming, combined with satellite data and other data, we can able to do that. But if we want higher lead time, say this will give you kind of 1 hour lead time. But many times you will like to have higher lead time. We want to have the warning 3 hours, 6 hours in advance. So for doing this, you need to provide warning using numerical weather prediction models. So as we already mentioned that in India, we are already assimilating radar data and INSAT data also. Plus this ground-based lighting data that is coming from stations, this also can be assimilated into numerical weather prediction model. And if we run the model at 1 kilometer resolution, definitely we can provide panchayat level warning services. So this means warning in a way it is already available. What is lacking at this stage is two things. One is this warning need to go to the public at time. At a time when they are really vulnerable. So farmer will be working on the field, and many times he may not be carrying the mobile. So we need to have mechanism, maybe hooters or some other alarming mechanism need to be put, but at least over the places where lightning is more vulnerable or it is more hazardous.
like entire India is not equally hazardous for lightning. Even in Assam also we did a lightning hazard mapping. We have seen within district also there is a special distribution of lightning. So they can, state government if they want, they can prioritize the areas where it is more hazardous, and they can set up some kind of dissemination mechanism so that it reaches. And third thing probably is, once it is disseminated, people also need to know what they should do. This awareness is the biggest probably factor that is limiting, that is not improving the our performance of lightning early warning systems in terms of improving this human life. Like every year 2,500 life is dead, and then since last 3-4 years, a lot of campaign, a lot of early warning is going on. Still, the casualty figure is not improving. It is still around 2,500 plus minus some hundreds. So people really don't know what they should do during lightning. Many people, what they will do, farmer who is working on the field, they will go under a tree and stand, and that is the worst thing to do during lightning. So probably we need to have lightning arresters at more places. Lightning shelters also can be built, because if you have a pakka house which is grounded properly, is also safe. So what I mean to say is that there is a alert system already available in the country which can go up to panchayat level, but we need to have a good dissemination and good awareness to really save the life that we are losing every year. Thank you, sir. In fact, lightning is becoming a prominent hazard, and every year a lot of people are dying from it. Next question goes to Dr. Tapas. Dr. Tapas, we heard from Dr. Thomas. You can leave, sir. If organizers are there, I'll just like to, we'd like to facilitate Dr. Kundu. Yeah, our program was planned 11:15. Actually, it went to 12:15, so everything. Yeah, please. I'll request Dr. Thomas. I was also part of this, but I couldn't make it because I was in the other session. Space technology वाला यही है ना? I was supposed to be here. I think I can sit at the corner. Yeah, you can. Now already one person has gone. I have space. Sorry for being late. Okay, let me go ahead with Dr. Tapas. Dr. Tapas, we heard that we have a very interesting mission coming, a stereo mission, resource at 3S and 3SA, where we'll have the 3D wing capability. How do you think, we did not have, after Cartosat 1, there was no DM, and all those geological studies do require DM to a higher level, but how do you think your geological hazard or landslide will get benefited with this particular mission? Yeah, so the digital elevation models, basically what you are using now, it's almost more than 10 years of age. And we need a dynamic elevation model, given that topography has a greater role in the occurrence of landslides. I'll give you an example like the Rauntigard in the 2021 in the Samari district, there was a big landslide. It was a rock and ice avalanche, and that created a volume of almost more than 29 billion cubic meter. So that measurement we could do only with the availability of DEM. So we have used the Indian satellite Kato DEM and also the foreign satellite that time. So now if you have our Indian new DEM with the new resources, so definitely we'll be able to identify the actual volume, and we'll be also able to tell how much volume is getting deposited in the river valleys. Let's say Dharali, recent the Dharali disaster. So large amount of debris has flowed from the upslope glaciated areas to the main river valley. So how much material is deposited? That is quite important to know. And similarly, when there's a lake formation, for example, in the Janskar Himalaya, in the Jammu and Kashmir, so that time the government wanted to know how much material is there actually blocking the river valley, so that they can devise adequate strategy to remove those material.
So in a way, the DEM is very essential for post-disaster. As well as if you have a high-resolution DM also, the flow modeling we can do. We can identify what are the areas prone to failure in the glaciated region, how much loose material is actually occurring in those areas. So we can do a flow modeling so that the downslope, the villages, which appears to be quite stable areas, but they are not aware of the risk which is in the upslope areas. So that can be minimized. So these are the ways. And the third part is if we know precisely the slope, then what we call as a landslide susceptibility mapping, which NRSC has of course done it in 2001 with the collaboration from Uttarakhand and many academic organization. We have mapped for the Char Dham Yatra route. So that maps need to be updated. So that has been updated on 50,000 scale by GSI. But if you have a more high resolution DM, so the hazard zonation along the new road alignment, etc., that will be tremendously benefited. So I would say the landslide disaster will be getting a lot of benefit from the high resolution DM. Thank you, Dr. Tapas. Let me at this point also tell you that Uttarakhand is a state where which is actively using space-based assets, and they had a recently state meet which took its inputs from all the stakeholders to the national meet, and a lot of demands for various kind of capabilities were desired in that particular document from that emerged from the state meet under the leadership of Dr. Durgesh Panji at that particular point of time. And let me further just go to Dr. Srijit. Dr. Srijit, this NISR mission it will bring a lot of data. How well we are prepared to process the data and disseminate the data, and what tools are coming up? Because it is an initial stage, people are, a lot of excitement is there among the users. Yeah, so the NISR will generate huge amount of data, that's true. And the beauty of the mission is that the analysis ready data will be disseminated through the NRSC Bhunidhi portal. So the interferograms generated by the NISR mission is already processed in a chain at both NASA and ISRO at NRSC, and the products are available. So everyone need not to process the heavy data because it's a very hundreds of GBs or thousands of GBs of data. They don't need to process themselves. They get the processed data they can use for advanced analysis. So that's for the first time. I mean, some space agencies giving, especially the interferometric and polarimetric product as a part of the mission. So, and if some researcher want to start from the raw data processing, and it's going to be quite expensive in terms of computation and storage as well. Thanks. Dr. Arijit, since you are from a capacity building institute and heading a department over there, and you cater a lot of academic requirements, let me have a view from you how ISRO DMS program is supporting the needs of the people who are trying to look for those kind of scope to have those capacity building initiatives. Thank you, Mr. Bhatt. So ISRO has a dedicated, as Sir has told, that ISRO already has a disaster management support program. So under this program is for the last 4-5 years, we have a dedicated program on advanced studies and capacity building. So as part of this program, ISRO has provided the funding to design and provide capacity building in form of short courses ranging between 1 week to 4 weeks, as well as brainstorming sessions and workshops, wherein all the stakeholders from the state government, central government, academia, and the research community
they are provided the opportunity to develop their expertise in various areas of disaster management, theme-based, as well as we are also collaborating with the leading academic and research institutions of this country to develop new methodologies which are going to be utilized in the upcoming early warning systems which ISRO is going to develop along with the industry and the academia. Madam, since you are also part of panel and time, can you tell me your expertise so that we can just take you one question through? I was from NIDM till recently, and now I am working as independent consultant with World Bank and KFW. I am working on climate change related vulnerability and adaptation measures for enhancing the resilience of road network. Now currently I am working for the transport sector. Many times we actually talk about space technology, the data sets. Indian Space Research Organization, they have very tremendous potential. We all know that. I have been honored to work with ISRO for a while on under the this national database for emergency management. For MHA was the focal point that time for implementing, and through NIDM we conducted a lot of programs on NDM. NDM's initial tools and all, and we also enhanced the capacities of the states at that point of time, state EOCs, and we had a VPN facility at our institute that time when it was located at ITO. But now it's not functioning as of my knowledge is, so it's not working. But this particular project, I just want to tell you like how we have used, the space-based products and IPCC data together to assess the climate vulnerability and risk of transportation infrastructure. So we have done kind of for all the exposed elements, we have actually carried out vulnerability assessment. So we have used this data, space-based data, especially the space-based data, as well as the models like which we generated using SWAT tool, and as well as HECRAS to understand the depth of inundation and future discharge under the changing climatic conditions, and with the use of DEM and land use land cover data, many of those obtained from the NRSC, and also the past flood data, inundation maps, which is prepared by NRSC decision support system, which is also available in Bhuvan portal. So all those data sets are used to identify which are the roads passing through the most hazard prone, flood prone areas currently, and using the IPCC's future data like projected rainfall and temperature and other scenarios, which are the roads which are likely to get inundated in the future. So that data has been, space-based data has been extensively used, and we would able to identify the roads which are going to be the most exposed in future also, not just current but in future also. And the population maps also we used, population maps, and also the land use land cover maps, and adaptation measures are proposed based on that, and the roads are prioritized. This is the work is being done. Thank you very much. Thank you, madam, for giving the insight of type of work you are doing. So it is almost 1:30. We will not come much into the lunch part. No, before your closing, but you are working in, I mean, so many years you are working on flood-related aspects. You are only asking questions. You can also request you to tell what is, I mean, the current flood activities going on, and in the future, how that flood monitoring and the disaster management using the satellite data, how it is going to progress. That also you can maybe you can take 2 minutes. Thank you. From the satellites, this flood is the hazard which has been most well monitored right from the launch of Landsat. Satellites are very important for monitoring of the floods, and ISRO has been operationally monitoring these floods more than 2 decades, and we have a lot of rich repository of past floods, which we have released in the form of flood hazard atlases for 5 states of India, and I was part of few states in that, Assam, Bihar, UP. In fact, we have done for West Bengal and Andhra Pradesh. So these atlases are available in our Bhuvan portal, which tell you what is the extent of flood hazard. And let me now just highlight, these are not only maps.
because these maps have to be translated to ground. Like Dr. Kundu told, it has to go to panchayat level. So there is one example where Assam State Disaster Management Agencies have used our maps not as maps. They have taken those names of villages and then they have translated into ground where the villages are under high risk and what kind of support they require in terms of crops, in terms of public transport or medical facilities, shelters. So all those departments have been guided. That is where the products gets translated into an action plan. For each district, this flood maps have been translated. Same way, our satellite-based products are being translated into an actionable product. And let me also touch into what future is there. At the moment, we have this NISAR L-band, which is will be greatly benefiting the floods in the case of wetlands or where there are forested areas because of the longer wavelengths and deeper penetration. We'll be in a position to estimate flooding on those areas which remain underestimated or neglected at the moment. So that capability will be enhancing. And also currently that SWOT mission is there, Ka-band radar interferometry, which gives you the water surface elevation, dynamics of water from interferometric perspective, and you get a spatial DM at the moment that is not available anywhere, and future missions are trying to look at that perspective, because what altimetry at the moment gives, it is a point-based measurement, but this SWOT, surface water oceanographic topographic mission gives you a perspective of spatial dimension and how the water levels are increasing in the floodplains and inland water bodies, and it can measure river width of 100-meter wide rivers. So that is the beauty of this data, and slowly we are also, a lot of space agencies are thinking towards it, because at the moment it is a single constellation and it is a 21 days gap. So we want to have a continuous monitoring. So future maybe more space agencies will come. So that is where we are heading to have a dynamics of water level. And in the case of flood, we are also doing modeling for a lot of basins, flood forecasting on experimental basis, and flood risk vulnerability studies are being done, as well as we are supporting all the operational needs in the country wherever any GLOF is happening or any hydrometeorological disaster is happening. ISRO is responding through its NRSC, which is an operational center at Decision Support Center is there, which provides operational product which are being uploaded into Bhuvan. So that is how the entire chain goes, and I will not go much. So space is there, and space was there, like in the earlier time it was said that Vidur was there monitoring everything from his room. Vidur, Vidur was translating what was happening in the field, battlefield. So that is the remote sensing was there. It was not remote sensing, but he was sensing from his room what was happening on the battlefield and translating, narrating everything to Dhritarashtra. So that is now, in reality, we are seeing something, sensors are placed and observed in the ground. So these capabilities, because at a higher altitude, continuous monitoring, and they have a vantage point synoptic view, it is facilitating our observations, and we have very exciting missions. With this, I'll thank all our panelists. Yeah, can we take few questions from the audience? Yes, definitely. Yeah, madam. I'm from Sri Lanka. Yeah. Actually, at the moment, we are in the catastrophic situation. I just want to know the effectiveness of it, because I know the gentleman who moderated it and continuously talked about how to get down to the community level or panchayat level. So, I mean, have you measured the effectiveness over the years of these predictions? And also, I would like to know what are the challenges you face in getting it done, and not only remaining at the science level, like in the rooms of scientists, but really, on to the ground and happening and being effective. What are the challenges you see, and how could we overcome them? Thank you, madam, for listening to our talk and sitting in the room. I'll pass the question to Dr. Niru. Dr. Niru will be the best person, cyclone expert. Yes, ma'am, you are very correct. These systems are getting disastrous nowadays. Climate change studies are being done. We do analyze the data.
Now more strong systems are occurring in our basin, like it is occurring, happening the Sri Lanka region also, like recently we found one system near Indonesia, right? That part. A very one-day system was there, but it was like disastrous. Now Ditwa is there. Fortunately, it is not going to touch India as per the forecast is saying. It is just passing by and turning its direction. Yes, the systems are disastrous now. Like in Arabian Sea also, we're getting more and more systems. So ground level, the dissemination thing all is like being done by the meteorological agencies. Like our IMD is doing that part. But based on space agency, we provide the high resolution data, all the information that our database can do provide. Like nowadays, the most challenge over the cyclone field is its rapid intensification. All of a sudden, like they intensify within a day, they exceed 30 knot, 40 knot winds, and that are more disastrous. So that level of information we do acquire, our data sets, our satellites do capture, and that goes to the models and the forecasters, the operation agency do provide the data in a high resolution, that part. So ground level, the dissemination is being done by the that agencies. But based on the satellite, all the observations that we do get, the changes and all that we study and do provide the modeling community. Yeah, Madam, in addition to that thing you asked about the effectiveness. See, the earlier, the disaster, in India, Ministry of Home Affairs is the people who has to act on the ground. I mean, ISRO is only supposed to give the data, and Ministry of Home Affairs is. They also agree that earlier all this cyclone, I mean in 1999 we had a super cyclone we had. In that around 10,000 people was the, and nowadays the recent super cyclone, similar to that 1999 super cyclone, now whatever happening, maximum 2 or 3, that also some building roof has fallen, or something, some maximum 2 or 3 casualties happens. It is in the single digit now the casualties are coming. That is the effectiveness of the system, which is the satellite-based information, which gives that forecast. I mean, many of the time MHA evacuates, the information is going to the local administration and they evacuate the people from that region. Earlier it was, the cyclone forecast was huge. I mean, we may tell around 100 kilometers. If people have to be evacuated around 100 kilometer area, people had to be evacuated. Now, since the accuracy has come down, it has come to 25-30 kilometer area. That much, some few villages, they can certainly evacuate. That is being done because of that thing. Now, the loss of property, loss of life and livestock has come down very drastically. Any other question? Then otherwise we'll wind up with us. Yeah. Good afternoon, sir. I'm Commander Victor Paul from IIRS. I'm a student of PGD course, C-Street. One of the goals of NISAR is to monitor the sea level. And how will it help us in monitoring the sea level around the island territories, Andaman and Lakshadweep area, or the coastal cities like Kochi and Mumbai, which are in news for the reasons of? NISAR is not exactly designed to measure the sea level, because sea level measurements are done using another set of satellite called altimeters. But NISAR can give, in an indirect way, NISAR can give better understanding on the sea level, the relative sea level. That means NISAR can measure the subsidence, the ground subsidence. So if the coastal cities, if they are subsiding, there is an increasing effect of flooding there. Because sea level is rising and if the cities are sinking, there is a flooding will be more. So that way it can better insights how we should plan our cities in terms of long term. This is called the relative sea level rise. And the second thing is that NISAR can measure the glacier dynamics. As you know, the sea level is related to the glacier dynamics. So that is also another way of looking at the sea level by looking at the glaciers. So these are the two applications of the NISAR related to the sea level.
Otherwise, altimeters are there to measure your, yes, Altica is there, and we said JSON, Sentinel-3, Sentinel-3A, lot of missions are there which are measuring the sea level. That can be there. And modeling, you require modeling also. Yes, yes, yes. Thank you. So I thank all the panelists who have joined in this particular session on behalf of ISRO Space Safety for Resilient Society. And I hand it over to the organizers. Thank you so much, sir. What a wonderful session. I am reminded of a dialogue from a Hindi film, sir. I could see a fighter pilot confronting with the head of the state कि सर ज़मीन पर क्या चल रहा है ये हमें आसमान से पता चलता है और हम इसका कंट्रोल ले सकते हैं. So that exactly was reflected in all these deliberations. Thank you so very much. Now, as a gesture of honor and appreciation, we would like to present a memento to all the panelists. I'll request Thomas sir to do the honors, but then it will be my pleasure to present a memento to him first. Thank you so much, sir. Now here we break for lunch, which is going to be extended by 15 minutes or so, and we resume here back at 2 o'clock, 2:15 for the plenary session on Guardians of Himalayas, Voices of Communities session, and the session partner is Gunj. We'll assemble at 2:15 here. अब मैं क्या करूँ उसके लिए?
shall we? Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back after a short break for lunch. This is going to be the plenary session 4 for the Word Summit. Ideally, it is going to be the second plenary session for the day. But previously, we had a very power-packed session from the experts of IIRS, ISRO, and other important organizations dealing with space in India and abroad. Space to safety, leveraging space technologies for a resilient planet. Now, in this plenary session, we'll be taking up a very rather immensely important subject, and that is the guardians of Himalayas, voices of the communities. The session partner is Goonj. I would like to invite Sri Anshu Gupta ji to take it forward from here. I welcome you all to this pious occasion, and I'm very sure that this plenary session certainly will emerge with some very concrete points and action points to take it further from here. Mr. Anshu Gupta. Thank you very much. Although this session is planned for 2 hours, but I don't think we have 2 hours now because things are a little bit delayed. I will cut it short. और हमने ये जो पूरा सेशन था, मेरा नाम अंशु गुप्ता है and we run this institution. We started this institution called Goonj आज से करीब about 27 years back. और मैं यहीं देहरादून का पला बड़ा, उत्तराखंड का पला बड़ा इंसान हूँ, so I've seen this. और तो my role would be that I'll actually introduce a little bit the subject, और फिर हम पूरे अगले 1-1.5 घंटे के अंदर roughly we'll try to do it in 1.5 hours. हम क्या करने वाले हैं? But before that, if I can just invite Purnima जो मणिपाल से आ रही हैं, you know, and come Purnima. Maybe short intro आप लोग छोटा खुद कीजिएगा, just to save on time. Devanshi, morning Bombay flight, evening Bombay flight. No. एक बहुत खूबसूरत सा एफर्ट है, आप लोगों ने देखा होगा IDR करके. Devanshi is one of the co-founder of that. And then we also have Devyani, जो इंडियन एक्सप्रेस से फीचर एडिटर है. तो हमारा ये जो पूरा बैठिए प्लीज़. So what we will do, we have divided this about 2 hours, 1.5 hours in 2 parts. और पहला पार्ट हम लोग ने सोचा कि we should cover the voices of community of people through media and academia, and I'll introduce them. और दूसरा पार्ट we also got people, say literally from Assam, Bengal, उड़ीसा और उत्तराखंड, कश्मीर. तो आप जो दूसरा पैनल में जब आप जिनको मीनाक्षी बातचीत करेंगी, वो जो पैनल है वो बिल्कुल उन लोगों से बातचीत है जो गूंज के बिहाफ पर, गूंज के साथ और बहुत सारे तमाम ऑर्गेनाइजेशन के साथ में बहुत सारी जगह पर दे वर्किंग इन द रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट गूंज, इट्स बीन 27 years ऑफ दिस जर्नी. और ये जर्नी टू बी ऑनेस्ट उत्तराखंड के एक यू कैन से एक डिज़ास्टर से शुरू हुई थी. In 1991 we had massive earthquake in Uttarakhand, और I was a student that time, और मैं यहाँ आया था with my small camera and just wanted to spend some time. I was a young boy doing my college. और एक photo, I don't know if you saw that big exhibition which is happening in the next big hall, and tomorrow also it will be on. वहाँ पर you will see a picture of a person who is wearing old tattered shattered jacket, and उसका title है 2 बोरी 2 gunny sacks. And वो जो jacket है, that jacket was actually made of old jute gunny bags, which you will see.
And that guy was asking again and again कि मुझे एक गर्म कपड़ा दे दो मैं मर जाऊँगा, give me a blanket, give me a woolen or I'll die. And I was not able to connect because many of us who have grown up in the families where if you feel cold and you have access to a blanket beyond your quilt, है ना, यदि आपको एक कंबल मिल जाता है रजाई के ऊपर तो आप ठंड को उतना समझ नहीं पाते हैं that way. But then I realized that what is cold all about, क्योंकि मुझे भी एक टेंट में सोना था and all that, and that was my first encounter कि डिज़ास्टर किस तरह से लोगों को कहाँ कहाँ कैसे अफेक्ट करना शुरू करता है. तो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एंड रेजिलियंस ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ, और देश के तमाम हिस्सों में काम करते हैं. इसे स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ अबाउट 1200 पीपल एंड वर्क इन से ऑलमोस्ट अबाउट 25-26 स्टेट्स. उसी में हम लोगों का एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क वी हैव क्रिएटेड जिसके लिए आज ये बात हो रही है, और दैट एग्जीबिशन वाज इज अप देयर, इज कॉल्ड सार्ड, which is the Societal Alliance on Resilience and Response to Disasters. Because what we realized कि disaster को tackle करना is not just limited to say the government or NGOs or say funding agencies. It's a much larger thing where we need large number of people to participate in that. और उनको they have to bring in their own expertise, they have to learn about it. I mean, the time has come when we start really having separate chapters and curriculums in the education institutes. Because I don't know, you might agree with me, when I was studying, or if at all there was a conversation on disaster, the only conversation was around earthquake. Okay? And teachers always used to tell us that if an earthquake happens, यदि earthquake होता है, go under the table. Okay? Abhi I was addressing a crowd of about 400 plus Jagrati Yatris few days back, and I asked them कि भाई आप तो अब इस जनरेशन से हो, you're from this generation, आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि टीचर ने आपको ये बताया that if an earthquake happens, go under the table? And you'll be surprised to know almost everyone raised hand. Without thinking कि अब आप 15 फ्लोर 20 फ्लोर के घरों में रहते हैं तो टेबल के अंदर जाके क्या होगा सोचिए. टेबल अब आपकी प्लास्टिक की हो गई है, इट्स अ प्लास्टिक नाउ. डिज़ास्टर इवॉल्व कर गए हैं पूरी तरीके से. यू सॉ कोविड एज अ बिग डिज़ास्टर, अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, सुनामी. मैनी ऑफ अस टिल इट हैपेंड इन इंडिया वी डिडंट इवन नो दैट सुनामी का स्पेलिंग स्टार्ट्स विद टी. तो डिज़ास्टर ऐसा इवॉल्व कर रहा है, बट हमारी एजुकेशन, हमारी लर्निंग एग्जैक्टली वहीं टिकी पड़ी है. दैट इज़ द रीज़न दैट वी वर वेरी एक्साइटेड व्हेन वी वर इन्वाइटेड बाय प्रहलाद जी एंड ऑल कि भाई हमको यहाँ पर एक प्लानरी क्यूरेट करनी है और एक एग्जीबिशन लेके आनी है, बिकॉज वी वांट टू इंटरेक्ट अ लॉट विद द न्यू जनरेशन, विद द प्रैक्टिशनर्स इन द फील्ड. इस पूरे प्रोसेस में हमें ये लगा कि व्हाट आर द मिसिंग वॉइसेस. ये जो पूरा डिज़ास्टर का पूरा बात हो रही है, इसमें कौन लोग हैं जिनकी बात हम शायद सुन नहीं रहे या वो नहीं समझ रहे किसी चीज़ को. तो ऑफकोर्स एक एकेडेमिया, और दूसरा हमें आपको मतलब हमें लगा कि मीडिया का बहुत बड़ा और बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल है इस समय, जो कहीं ना कहीं मिस होता जा रहा है. मतलब मेन लाइन मीडिया की जगह बहुत सारी जगह ऑल्टरनेट मीडिया ने ले ली है, ट्रेड मीडिया ने ले ली है, विच इज़ ट्राइंग टू रियली फिल दैट गैप समहाउ. बट स्टिल आई फील, एंड टुडे विल हैव अ स्मॉल डिस्कशन एंड अ लिटिल बिट ऑफ डिबेट ऑन दैट ऑल्सो. स्टिल आई फील कि अभी बहुत करना बाकी है, मीडिया को बहुत करना बाकी है, क्योंकि हमारे लिए तो अवेयरनेस सिर्फ वहीं होती है. तो खबर धराली की आ जाती है बिकॉज धराली वॉज वेरी वेरी बैडली अफेक्टेड. या यदि आप देखें तो लास्ट ईयर वी गॉट लॉट ऑफ न्यूज़ फ्रॉम वायनाड बिकॉज सम 250-300 पीपल डाइड देयर. बट द फैक्ट ऑल्सो रिमेन्स कि केरला के जो बाकी हिस्से थे वो भी डिज़ास्टर अफेक्टेड थे, राइट. और व्हेन एन उड़ीसा साइक्लोन हैपन्स द ओनली न्यूज़ कम्स वेर यू से कि सेफ इवैक्यूएशन हो गया, विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट कि यदि आपने 1 मिलियन लोगों को या 2 लाख लोगों को सेफली इवैक्यूएट कर लिया, जब वो वापस जाते हैं तो उनका लॉस एज इट इज़ होता है. द ओनली लॉस विच वी आर एबल टू सेव इज़ अ ह्यूमन लाइफ, राइट. तो मैं शुरुआत करूँगा मतलब एक बहुत सिंपल सवाल से कि दिव्यानी, आप एक बहुत प्रेस्टिजियस मतलब एक इंडियन एक्सप्रेस से आती हैं, जो हम लोग, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, और वी ऑलवेज लुक अप टू इंडियन एक्सप्रेस फॉर दी ऑथेंटिसिटी. कैसे किसी चीज़ को कम शब्दों में बोला जा सकता है, राइट, और कैसे
you're too focused on human interest stories, right from the beginning, right from those days. तो मैं आपसे शुरुआत करूँगा and then I will go to other people also. Talking about a little bit about yourself, for sure, but more importantly कि आपका क्या रोल है, आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन से आप लोग जुड़े हैं, उसमें क्या रोल है जो आज के टाइम में हमको प्ले करना चाहिए, गिवन एवरीथिंग इज़ सो चेंजिंग सो फास्ट. मतलब क्लाइमेट चेंज के बारे में आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले लोग मजाक उड़ाते थे. आज लोगों को समझ आने लगा है कि नहीं, आप इसे जो भी नाम दीजिए बट सच तो है, हो तो रहा है, कुछ तो हो रहा है. वो So I'm the national features editor at the Indian Express, and I've worked with the Express for all my life, basically. So I've worked with different departments, and we've led, news teams. We've assigned stories. We've followed up. So I think in those 20 years, I have seen a change. So earlier it was that something happens and you send people there, right? You get the information out. But over the years, we've been we track vulnerable areas through the year practically. I'm not saying it's ideal or that, lot still needs to be done. But now, especially with climate change, there is such a lot of conversation in our newsrooms that now it's kind of followed as a beat which it never used to be. Yeah. So that's a beat. And we are looking at it, in fact, through different lenses, through communities, through even culture, So that I find is a big shift. The other thing I also find is that over the last few years, if you see, there's been a rise in explanatory journalism. So through that, we've been we work closely with experts in the field too. So if a Dharali happens and, the initial reports, they're quick to say that it's because of a cloud burst or something. So we won't stop at that, right? So we will talk to as many people, and we do take in many times, even if you see in these high-powered committees, whether it was the Char Dham project, so we will take the dissenting voices too. We will talk to the experts on that. So kind of to put it out on the table and start a conversation. So I think that needle has moved. And what is the role of the community voices? I mean, the people who are affected, because the most unfortunate part is that the moment you start talking about disaster, everyone who is affected is called a victim of a disaster. Yeah, right? yeah. And then often we also think that by giving 10 kg rice to a family, we have done enough, because someone who has already lost everything which that person collected in the last 3 maybe generations, right? Yeah. So what is that media take on that? Yeah. How do you really bring out those stories of maybe resilience and courage and a whole lot of that instead of that victimization? So I feel, though TV has done a lot in that sense to bring out the first visuals are there, so that the scale of a disaster, you find out from the first visuals, right? So I'm not dissing that. But I think sometimes if you see on television that the way the victims are shown, or it's just that immediate loss, which is important too, but none of the voices around, which I feel print does more, especially if you see these days with kind of long form podcasts. I see more of that coming. So talking to the community, and also it's just, they're not just victims. If you see in Wayanad, how the crisis, how they responded themselves, yeah? So they are just not victims, they're people with agency. And even if you see, I'll talk specifically maybe of the Express coverage, say of Dharali. My colleague here, Aishwarya, has done a series of stories. So in that, she's spoken a lot to the community. So they've spoken of how, they had they were always apprehensive, but also a bit of introspection within the community themselves. Because sometimes what's happening is in our big infrastructural projects, because everybody is so gung-ho, local communities these days sometimes themselves are people who know what can happen, but still when you're looking at the short-term gains,
you do tend to sometimes forget what can happen long term. So for instance, in her stories, there were a lot of introspective voices from the community themselves, that, we built too close, say, to the river, because we saw one person build, that hotel was successful, so we said, okay, let's start too. So I think increasingly that's happening too. And also to learn from them. Yeah. Purnima, over to you. Is the academics doing enough, or can the academics really do more? Because one question which we have been raising, that the kind of institutions, like if you see Graphicera, or if you see any other private university right now, or I'm saying the urban education system, जो भी इंसान यहाँ पे पढ़ रहा है, at the end of the day, आज के टाइम में, that person will become the decision maker. Okay? Right. जो अभी village education का हिस्सा है, that maybe that generation will take one more generation to come up to the decision making thing. And if this entire group of decision maker is not well informed, doesn't understand the nuances of something, then of course it's a problem. और शायद यही वजह होती है कि हम लोग जो डिज़ास्टर जिस तरह से हैंडल होते हैं, जैसे उनके बारे में कॉन्वर्सेशन होती हैं, वो हम नहीं समझ पाते हैं. Any take on that? Okay, so namaskar, my name is Purnima, and I am a social worker by training, and Anshuji has also introduced me as an academician. That's been about 10 years of my life. And we are currently sitting in a university. I am an academician, and I have to say that the way we understand knowledge is very limited. So I'm sure this place has a lovely library, and of course there are a lot of digital resources and tools available. But our definition of knowledge still is very narrow. हम उसे बहुत ही narrow तरीके से सोचते हैं. So one of the things that Devyani, you were also talking about is when we think about local knowledge, जब हम local knowledge की बात करते हैं, so then we don't bring this knowledge into the people who tomorrow will be the ones making the decisions. So if you look at the role of academia itself, it could be in 3-4 different ways. So one is, of course, curriculum and teaching, how we teach disasters. The second is research. What kind of research do we do with disasters? The third is, how do we translate that into replicable models? अब वो policy हो गए, innovations हो गए, कुछ भी. Lekin, even now, 2 things. Number one, let's not forget that when we do research in anything, it requires a lot of resources. काफ़ी पैसे जाते हैं research करने के लिए, और अच्छे frameworks बनते हैं, models बनते हैं वगैरह. But इतने सालों से, and I was doing little reading, last 2 साल में more than a few thousand papers have come out, many of which are talking about models of disaster relief. And how many of those models, and of course there are people's time, energy, and a lot of money that has gone into creating those models. But have we tested to see how much of them works in different contexts? Though वो model बनाने के लिए, who are the people we have spoken to? So एक होता है consultation कि हम communities के साथ बैठ के बात करें. Of course things have become much better कि लोग at least communities के साथ बैठ के बात ज़रूर करते हैं. But communities are not co-creating these models. ऐसा नहीं है कि किसी community member ने कहा है कि अच्छा ये काम नहीं करेगा और this will work well. So one, we are creating these models, these frameworks, these solutions. लेकिन उसकी utility क्या है? वो इस्तेमाल कैसे हो रहा है, and is it really effective, and how that needs to change from time to time, that is something that we are still not very sure about. And as we design future research, it is important to design future research keeping something like this in mind, where the community takes the leadership, especially people who are traditionally considered to be vulnerable in the community. Like women. Of course, don't forget that there are 3 very, very strong women sitting on the panel, and I do not consider ourselves to be vulnerable in any way. But having said that, there are communities where the vulnerable population do not get into this kind of conversation about making decisions, making policies, etc. And from a curriculum point of view, which is the last thing I'd like to say about this, is that we are teaching people disasters. We have courses on disaster management, but the focus is very much on scientific understanding of disasters and how innovation and science and technology can solve disasters, or at least address
disasters. But again, are we focusing enough on how people deal with disasters on a day-to-day level, how people predict disasters within their own spaces, and how does that train convert into curriculum? Iski baat hum abhi tak kar nahi rahe. So I think that's a role that academia can really play. And to be honest, हमने इसीलिए इसको the way we planned this entire plenary, कि ये सब academia और media के बाद we also hear the voices from the community. क्योंकि उनमें से जो लोग आपसे मिलेंगे आज, उनमें से काफ़ी लोग उन disaster affected areas से आते हैं. बिल्कुल. And to be honest, when they became a part of the team, गूंज की टीम का, when they were actually handling those disasters in their areas उस टाइम में. और जो एकेडमिक्स का एक बहुत बड़ा गैप मतलब मुझे जैसे समझ आया, मैं और मीनाक्षी बोथ ऑफ अस आर फ्रॉम IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, और हमारा एक ब्रांच धनकनाल में भी है, एंड मेनी अदर प्लेसेस वी हैव दोज ब्रांचेस. और हम लोग वी वर टॉकिंग टू द पीपल वहाँ पर, सीनियर मोस्ट पीपल, कि भाई क्या यहाँ पर कोई एक प्रॉपर करिकुलम है अबाउट द डिजास्टर, जबकि वो नेक्स्ट डोर हो रहा है. बट शायद अभी वहाँ पर भी हमने उसको उस लेवल पे नहीं डाला है. And we are actually training people to become journalists, and then those journalists go in the neighboring areas and report without that kind of understanding of the community. I mean, maybe that is the reason कि बहुत ज़रूरी है ये होना. एक रिस्पॉन्स हो सकता है कि हम जो डिजास्टर्स से अफेक्टेड हैं उनको क्या सिखाएं, बट आई थिंक द वे टू टर्न इट इज टू से हम उनसे क्या सीखें. सो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट वी हैव नॉट रीच्ड. देवांशी, IDR ने पूरी एक आई थिंक इसकी बहुत सारे लोग, यू गाइज मस्ट सी IDR. ओके, देवांशी विल टेल यू लिटिल बिट, बट उसके यहाँ से जाने के बाद ज़रूर उसको देखिएगा. एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है ऑफ द स्टोरीज इन लेसर वर्ड बट वेरी पावरफुल स्टोरी. और एक चीज़ जो हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं उसके लिए वो ये है कि ये लार्जली प्रैक्टिशनर्स लिख रहे हैं. तो आपने प्रैक्टिशनर्स को जर्नलिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, और वो अपनी कहानियाँ उसमें लिख रहे हैं, अपने रादर एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं. तो माय वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, व्हाट रोल IDR शुड प्ले, कैन प्ले, इज प्लेइंग इन दिस एंटायर जर्नी एंड फोकसिंग ऑन द डिज़ास्टर. बिकॉज देखिए, क्लाइमेट चेंज पर बहुत सारी बातें हो रही हैं. अब तो पिछला आजकल का बज़वर्ड है, और बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं उसके साइंटिफिक चीज़ों पर, या ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वो सब रियलिटी है. बट वो लास्ट माइल के इंसान उससे कैसे अफेक्टेड है, उसकी क्या कहानियाँ हैं, उससे क्या सीखा जा सकता है, मतलब उत्तराखंड के लोगों से क्या सीखा जा सकता है, क्योंकि इतने लार्जर रेगुलर डिजास्टर्स के बीच में लोग रहे हैं, बट स्टिल दे आर एबल टू कम अप. What is the role of IDR there? Thank you. Hi everyone, my name is Devanshi, and I think यहाँ पर बैठकर my age is becoming very evident. Anshu doesn't need any notes. You know, Devyani's notes are printed on paper. These notes are a notebook, mine are on my phone. So if you see me looking at my phone constantly, I'm just looking at my notes. Hybrid. No, Anshu, thank you for asking that. I think the difference, IDR is not a traditional news platform. We don't cover any news. Like Anshu said, we have non-profit practitioners, we have community members, people working in CSR and philanthropy directly writing for us. So one of the things that have come up that both of my panelists said is we need to, how do we center community voices and what do we count as knowledge? At IDR, we do center lived experience as knowledge also. So we are saying that if you have lived, if you are living at the front lines, or if you are dealing with disasters on a daily basis with climate change, you have some expertise that other people can learn from, and we do encourage then those people to write and publish on our platform, and we help them do that. I will just say, okay, so I think IDR's role is for strengthening the information and knowledge structure that exists around disaster management, and more importantly, making it more accessible to a larger number of people. So we have done very little, but I think we can do more on trying to figure out how do insights from the front lines, from community members themselves, how do they get heard by people sitting in decision-making seats. I think right now we are one of the only platforms where you can have an article written by somebody who is a farmer sitting right next to an article written by somebody who is a philanthropist, and they're both
being read by each other also. We should do more on documenting the systemic gaps that are there and the efforts being done to address them from across the country. And I think what you said about like lessons from each disaster being documented, so it's not just the relief efforts, but what have we learned and how do we keep that on a shelf that's being referenced so that we can build and grow from there. And then also figuring out how we can get people who are in policy to learn from people who are in non-profit, to learn from people who are in business, to learn from people who are making funding decisions, and how do you close that loop. But I think overall, we're looking at how do we make knowledge more visible, how do we make it reach more people, how do we make it more accessible, so how do you put it out in a way that people want to engage with it, if not 2,000 words of text, then a video, if not a video, then a reel, if not a reel, then on ChatGPT. How do you put it out? And then how do you also make it in a way that it makes taking action easier? So how does it reach more people? How do they understand it? And then how do they take action? So just building up on your point, I mean, Yeah. and I think largely we said the same thing. So there's huge amount of wisdom in the community, right? मतलब जैसे if you see when the Uttarakhand 2013 disaster happened, जो biggest asset था यहाँ का वो थे शायद जो adventure tourism के लोग हैं, okay? Because they understand the geography of this, the nature of the river, the topography of this, and they were the first responder to that. उसी तरह केरला, तमिलनाडु when things happened, the fisherman community was the thing. तो अभी हमें लगता है कि हम उनकी नॉलेज को कैप्चर नहीं करते हैं. कोई एक रील बना लेता है और उसको कहीं डाल देता है कहीं पर, तो हमको लगता है वाह 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 बड़ा अच्छा काम किया, राइट? बट टू बी ऑनेस्ट they have that systemic knowledge. They understand how to deal with it because they deal with it in so many disasters. हमको तो कभी कभी डिजास्टर का पता लगता है कि जब कोई बहुत बड़ा हो गया तो पता लग गया, बट अदरवाइज हाई टाइड, लो टाइड, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स कीप हैपनिंग. तो आई जस्ट वंडरिंग, और वैसे भी क्या है कि इंडिया में थोड़ा डिमीनिंग है कि व्हेन पीपल लाइक अस, you know, people like us, you see the language, okay? When we do something, it is innovation. But when you talk about the people in village India, that's called जुगाड़. हम जो करेंगे उसको innovation बोलते हैं, और यदि गांव का कोई इंसान करता है तो उसको बोलते हैं जुगाड़, जबकि शायद वो सबसे बड़ी innovation होती है. और एक और चीज़ जो मैं हमेशा लोगों को याद दिलाता हूँ कि हमारे देश के किसानों ने, I mean, they must have come out with 8,000, 10,000 different variety of rice, but अभी भी हम farming को unskilled profession बोलते हैं. तो if we can call farming after having 10,000 different variety of rice unskilled, so you can imagine कि बाकी जो भी कुछ वो लोग करते होंगे वो तो unskilled ही हो गया एक तरीके से. तो हम 4 लोग बैठे हैं, थोड़े अलग अलग सेक्टर से बैठे हुए हैं, ना, including me. My simple question is that what kind of a structure do we create जिससे कि ये knowledge ना सिर्फ कैप्चर हो बट वो जाए लोगों तक, राइट? वो एक मेन स्ट्रीम हो, वो हिस्सा बने डिजास्टर की रेजिलियंस और रिस्पॉन्स और किसी भी तरह का एक्टिविटी अराउंड डिजास्टर. व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर शुड वी क्रिएट? एनीथिंग इन एनीवन्स माइंड? I think it will change if the media doesn't look at it as just an episodic thing. You know, there has to be a continuum. It has to be a sustained, continued. And I can speak about the Express. So we do a lot of stories on change. Change in that sense and talking to communities. So for instance, there is an article, I can share it later also. It's not from the Himalayas, but from the Sundarbans. It's a colleague of mine who's been going there repeatedly and generally on her own, actually, not even so much by the office, now by the office, but she just she's looking at disasters, climate change, and in a normal way, not when a disaster happens. So she did like a very good 2,000 word story, say, or maybe even more than that, on one village, which was, it's one of the last villages on the Indian Sundarbans, and which was battered by cyclones, and I think Cyclone Naila in 2009. And then a local geography teacher who grew up there with women, because, you know, women, mothers are the people who
who are on the front line of all and who face it. And they kind of rebuilt, restored this whole mangrove forest. And subsequent cyclones that have come, the embankments haven't been breached. So she went in 2003 because she's been reporting on her own, really primarily from the area. So because she knows the local people, she hears their stories. So she went when there was no disaster, there was nothing. And she did this beautiful story and how those mangrove forests actually also are like a carbon sink now. So after that, there were many people who got in touch with her, who wanted to help this, who wanted to come and kind of replicate it. So this is, I think, an example of looking at community knowledge. And when there is nothing had happened then really. So I think if we did more of it, if we covered it almost like we cover like a beat like that, I think that it will eventually happen. I think I want to say the same thing, just add on to it to say, can we change who we look at as an expert? Like who do we, I mean at IDR and me also, like we say all the time that we are not actually experts. Like I know I'm sitting on this panel, but the only thing I can claim to have any expertise is communications, because I write and edit all day, every day. But the reason we don't take any bylines at IDR is because the person whose knowledge it is, can we flip who we think is worthy of learning from? And then we'll change what we think is worthy of learning, and then hopefully we'll start asking different questions. Just to add to this and kind of referencing what both of you said, I had a lovely conversation with one of the Gunj team members whom you will be speaking with or listening to in the next next half an hour, 45 minutes. So Prashantada was speaking to me and he's from the Sundarbans. And one of the things that he was saying is that one of the major forms of livelihood is crab fishing. So crab fishing, which is kakra fishing, is one of the major forms of livelihood. But when this person, due to disasters, has to then shift to migrate to Calcutta, Bombay, etc., their skill of crab fishing has no value. So interestingly, somebody who has a very specific, almost technical skill is then categorized as unskilled labor and then gets paid as an unskilled laborer. Like Anshu, you also said, if a farmer is considered to be unskilled labor, the whole point of that is that we have a very narrow definition of skill and of knowledge. So we say that unless we know the specific kind of compartments to put knowledge in, कि उसकी एक theory होनी चाहिए, फिर उसकी एक practicality होनी चाहिए, और उसकी एक एक application होनी चाहिए. But if we don't go beyond that, if we don't say, like if you take the same the crab fishing example, one is literally to catch the crab, but there is also watching of the current, there is knowing the cycle in which the crabs can be fished, when they cannot be because they are laying, or they are procreating, etc. So understanding that, and like you said, the carbon sink. So you're looking at the same thing, and the moment we give it a name that more of us understand, then that becomes knowledge that we are ready to consume. And so when we are, as academicians or researchers, I think our job is then to look at knowledge and to say, it's not about whether I understand it, it's about me finding new ways to understand it. Lovely. So before we move to the practitioners from the field, एक आखिरी सवाल मेरा आप लोगों से कि हमें ऐसा लगा when we were creating SARD कि एक बहुत ही trust based, experience based and multi-actor, multi-sectoral partnership की ज़रूरत है. I think that's how we'll be better prepared, because अभी क्या है कि disaster का I think जिसको नहीं समझ आ रहा है वो उसकी problem है. Otherwise disaster is not limited to a particular geography. It does not affect a particular kind of community or people. I think ये पिछले कुछ साल में प्रूव हो चुका. लगातार हम पूरे यदि आपका यूएस में, यदि बांग्लादेश में साइक्लोन है, फिलीपींस में साइक्लोन है, तो यूएस में भी उतना ही साइक्लोन है. यदि इंडिया में फ्लड है तो स्पेन में भी फ्लड है. बहुत सारी जगह को जिनके बारे में आप सोचते ही नहीं थे. Now those areas are also getting affected with whatever reasons जो भी हों. अभी हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे. Climate is one important part, but many other reasons also. So any idea or imagination about this trust-based
एब्सोल्युटली रेडी नेटवर्क, तो ऐसा ना हो कि हर जगह हम पोस्ट डिज़ास्टर रिस्पॉन्ड करना शुरू करें, क्योंकि डिज़ास्टर स्पेशली हमने नॉट ओनली इन इंडिया, इन मैनी कंट्रीज वी हैव सीन that how if you do not respond immediately and if you do not stand with people immediately, they get into a vicious cycle of debt forever. और फिर वो जो उधार और डेट होता है वो नॉर्मल डिजास्टर से बड़ा डिजास्टर हो जाता है. सो एनी आइडिया, एनी थॉट ऑन दैट बिफोर वी कंक्लूड? और उसमें आपका क्या रोल हो सकता है? लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट कि यदि ऐसा कोई मल्टी सेक्टोरल किया जा सकता है तो उसमें आप एज एन इंस्टीट्यूशन और द काइंड ऑफ इंडस्ट्री यू आर इन, आप क्या रोल प्ले करते हैं? I think, like I said, agar media in a sustained fashion karega, so we will build those partnerships. But of course, the media also, when it's dealing with government agencies or others, has to be a bit careful also, so as not to lose your independence also. Because the problem also is if you always, kind of network with them, go with them, you might not also hear the voices that sometimes, so the media, I feel, of course, see, already I think there's more data sharing with state agencies, disaster agencies, wo rahega, and I think that will build by, but I think they also have to tread it carefully, so because there are many voices, many people will speak to you, won't even speak to you so openly if you are part of a thing. So I think that balance has to somehow be maintained. As universities and as academia, we assume that our job is to give knowledge. But we cannot forget that our job is also to create knowledge. But most importantly, and the only way creation of knowledge will happen is if we are willing to receive knowledge. If we are willing to look at different forms of knowledge and receive. And one of the things that you were saying is about, are we hearing voices? Absolutely, very, very critically important to hear noises. But we also have to, again, referencing something that you said, is we also have to understand that our definition of expertise is very, very limited. So if we think about, let's say, in a particular situation of disaster, if we say, okay, we have certain solutions, are we understanding people who have been solving similar problems? Of course, disasters have become much more unpredictable now, but there are people who've been solving similar problems for years. So one is to say, and of course, let's not forget that as academicians today, we are giving a lot of importance to young PhDs who would have studied one particular disaster scenario for 4 or 5 years in depth, absolutely. But we are calling them the expert. I'm sure they are the expert, but they're studying that knowledge from people who've lived the disaster for 30, 40 years, and we are not considering them to be the experts. So kind of changing that, उसको थोड़ा सा बदलना is very important. नहीं, और PhD के पूरे टाइम पीरियड में तो डिजास्टर का नेचर भी बदल जाएगा. हाँ जी, बिल्कुल. The way things are happening. बिल्कुल. In 5 years you'll find कि भाई ये PhD हो रही है, but ये तो बदलता जा रहा है यहाँ पर. So वो जो trust based आप बोल रहे हैं ना, so unless we create that network where people are willing to listen, people are willing to exchange ideas, and you're providing a space where nobody feels that there is a power dynamic, at least जितना कम हो सके, उतना, unless we do that, it is not going to change. Thank you. And then just to add, I think when we talk about collaboration or like multi-stakeholder things, we know that the center of it all is the relationship that you hold. But I think one other aspect is who are you choosing to have that relationship with, or who are you inviting to get a seat on the table? So like earlier, Anshu, you mentioned something about the tsunami, and a friend of mine was telling me that in the tsunami relief and the disaster relief camps that were set up, the bathrooms were not disability friendly. They were not wheelchair accessible. There were no bathrooms for trans people. They weren't allowed to use any bathrooms. Dalit people weren't allowed to use bathrooms. And all of that could have been avoided if you had different people at the seat of the table, having a seat at the table saying, hey, have you considered us? And I think part of this, like if we're saying we need to build stronger relationships, build trust, one part of it is, of course, who has a seat, but then the second part is who are we asking for feedback from? What is the feedback loop that we're creating with community members? What is the feedback? Are we taking inputs from people who are not like us and seeing if the system was built to serve them and not just built to serve
the people sitting around and making this. Add one thing, that even the media, I think, is becoming better, but has to be more conscious when we are going out, even if it's elections, it's not even disaster, to seek out people. Because, generally the voices that come are the people who come there and talk loudly. So women, marginalized, caste, whatever. So we ourselves also have to make that effort. हाँ मतलब वो साउंड बाइट का गेम है तो जो ज़्यादा जोर से बोले वो 2-4 उसको लोग सुन होते हैं ले। वो सब चैनल में दिखते हैं वहाँ पर एग्जैक्टली एंड दैट हैपेंस इन डिजास्टर्स आल्सो एग्जैक्टली दैट हैपेंस इन डिजास्टर सो ब्यूटीफुल। तो इसके बाद में हम लोग अभी आप जो सुनेंगे वो वॉइसेस सुनेंगे आप असम से और सुंदरबंस बंगाल से उड़ीसा से कश्मीर से और उत्तराखंड से राइट। तो इसका मे बी इसका सेकेंड लेवल दैट्स हाउ वी हैव डन दिस पैनल। But thank you very much. I think it was a beautiful discussion and I think जो हम लोगों को शायद समझना पड़ेगा कि हम सबको अपनी दुनिया थोड़ी बड़ी करनी है, okay? और जब हम अपनी दुनिया बड़ी करेंगे when we really grow our world, we cannot ignore disasters to be a part of it because वो अब reality है। और जब हम लोगों ने गूंज initiate किया था तो one very important statement which became the lifeline for us, that why do you wait for a disaster in the world where half the world does not need a disaster? Because economic and social poverty itself is a disaster. और यदि हम लोग normal time में prepared रहेंगे, if we are prepared, fine. If we understand the access to the bathroom to the people with disability in the normal times, in the tough time also, you don't have to give a second thought about it. Because then automatically it will happen. तो I think ये जो ज़रूरी है हम सब के लिए जो आज बैठे हैं यहाँ पे और सुन रहे हैं कि हमको किसी डिज़ास्टर की वेट नहीं करनी है ऐसे किसी भी बारे में सोचने में to think about these things. But it's a part of life and it needs to become a part of life. Thank you very much. Over to Meenakshi and हम लोग अपने जो next panel के लोग हैं उनका यदि वीडियो चल गए तो आधे मिनट के छोटे छोटे वीडियो से will introduce you to those people. Thank you so much. Thank you so much. So good evening everyone. So after the exciting session about the multi-actor stakeholders involvement in disaster, now we are going to listen the community voices from the people who really live in the disaster with the communities. So first I invite Ms. Anjum Manaza from Kashmir to the stage. Now Mr. Mrinal Kumar Datta from Assam. Mr. Prashanta Sarkar from Sundarbans.
नमस्कार सबको, मेरा नाम मीनाक्षी गुप्ता है और यहाँ पे इट्स माय ऑनर कि मैं एक ऐसे सेशन को मॉडरेट करने के लिए हूँ जो शायद इस पूरी कॉन्फ्रेंस में एक इकलौता सेशन है जो बिल्कुल देश के बिल्कुल दूर दराज क्षेत्रों से जो लोग डायरेक्टली डिज़ास्टर्स पे काम कर रहे हैं उन लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। जैसे कि अंशु ने बताया कि यहाँ पे जो पैनल है वो वेस्ट बंगाल से लेके कश्मीर से लेके उड़ीसा तक और उसके अलावा कई क्षेत्रों में काम किए करे हैं जो लोग, उनका पैनल है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। मैं हमारी बात थोड़ी पहले से शुरू हुई है अंशु की बातचीत से कि कैसे कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं जो मिसिंग है। तो यहाँ का पैनल जो है वो बिल्कुल उन लोगों के साथ कई डिज़ास्टर्स में काम कर चुका है। तो मैं एक सवाल सबसे एक सिंपल सवाल पूछती हूँ कि एक तो थोड़ा सा आप अपने बारे में, अपने जो आपकी जर्नी रही है डिज़ास्टर्स के काम को लेके, उसके बारे में थोड़ा बताइए। और इस बात का ज़रूर जिक्र कीजिए कि सबसे मुश्किल क्या होता है एक डिज़ास्टर के बाद किसी कम्युनिटी के साथ काम करने का, जो पूरा आपका काम रहता है उसमें सबसे मुश्किल बात क्या लगती है आपको? कौन शुरू करना चाहेगा? वहाँ से शुरू करें, शिव से शुरू करें, उत्तराखंड के लोगों से। सभी को नमस्कार। मैं शिव नैथानी हूँ, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। अभी धराली की बातें चल रही थी तो धराली अपने घर से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है। तो डिजास्टर तो सबसे पहले तो मेरी जो जर्नी है 2014 से गूंज एनजीओ के साथ शुरू हुई। उससे पहले ऐसे ही पहाड़ के नादान बच्चे थे और पता नहीं था कि सोशल वर्क कैसे होता है। अपने आप से तो करते थे थोड़ा बहुत, लेकिन जब गूंज से जुड़े तो उसके बाद जो है बहुत सारे डिजास्टर में हम लोगों ने काम किया है। तो डिजास्टर के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि उन लोगों को उनके भरोसे पे कायम रहना। और जो एक जब भी कोई डिजास्टर होता है, हमने 2013 जो आप लोगों ने केदारनाथ उत्तरकाशी में जो फ्लड हुआ था वो सबसे बड़ा डिजास्टर था। अभी 2025 धराली में आप लोगों ने देखा ही है वीडियो के माध्यम से। तो उसमें लोगों की जो आशाएं होती है, लोगों को जो गांव के लोग होते हैं जो अफेक्टेड होते हैं, उनको हमसे एक आशा होती है कि जो हमारा मतलब गांव का जो नुकसान हुआ है, जो रास्ते, उनके जो खेत मकान ख़त्म हुए हैं, तो वो किसी से ऐसे नहीं चाहते कि वो हमारा मकान बना के दे या हमारा जो है, क्योंकि गांव के लोग जो है अपने में ही ऐसे होते हैं, वो रास्ते भी खुद बना सकते हैं। लेकिन उनका ये कि ये हमारे साथ खड़े रहे, खड़ा रहना उनके साथ जो है वो उनका जो है सबसे बड़ा भरोसा होता है। बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, बहुत सारे जो डिजास्टर के बाद जो रिलीफ मटेरियल होता है वो वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं और उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। तो उनको लगता है कि ये सिर्फ हमको एक राहत के नाम पे जो है देने आए हैं, लेकिन उसके बाद जो है वहाँ पे नहीं है। तो उनके साथ खड़े रहना, एक टाइम पीरियड था उनके साथ रहना, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और गांव के लोग होते हैं वो उनके पास जो है उनके पास टेक्निक है, उनके पास एक्सपीरियंस है, जो चीज़ हम नहीं कर सकते वो लोग करते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, उनके भरोसे पे कायम रहना। अंजुम, मैं आप पे आती हूँ। आप कश्मीर से आती हैं। अगेन बहुत मुश्किल एरिया है, जोग्राफिकली भी और वेदर वाइज भी और वजहों से भी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि सबसे मुश्किल क्या होता है जब आप किसी कम्युनिटी के साथ जो किसी बड़े डिज़ास्टर को फेस करके निकलती हैं, उनके साथ आपको सबसे मुश्किल किस चीज़ में आती है? क्या देखती हैं आप उनकी सबसे बड़ी मुश्किल को? नमस्ते सभी को। मैं मुनाज़ा अंजुम हूँ जम्मू एंड कश्मीर से, और मैं जम्मू कश्मीर के मतलब बीच में रहती हूँ, सेंटर ऑफ JNK। और जो जम्मू डिवीज़न का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट रामबन। तो मेरा जो फील्ड एरिया है वो भी रामबन से ही मैं ऑपरेट भी कर रही हूँ। तो वो पूरा हिली एरिया है, मतलब सारा ही पहाड़ी एरिया है।
और उसमें जो मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने फेस किया है, मतलब ग्राउंड पे काम करते, वो है कि लोगों तक पहुंचना। क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ख़त्म होती है जब कोई भी डिज़ास्टर होता है, लिंक रोड सारे बंद हो जाते हैं। उसके अलावा जो रामबन का मेन जो इस साल हुआ वो है लैंड सिंकिंग, जिसमें बिल्कुल 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पूरा स्ट्रेच निकल जाता है, जिसमें ये भी रहता है कि हम तो चल रहे हैं लेकिन ज़मीन निकल रही है। वो सबसे बड़ा चैलेंज है वहाँ तक पहुँचना। और दूसरा ये है कि सुबह तो हम जाते हैं फील्ड में, लोगों से बात करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, लेकिन वापस आते आते अंधेरा हो जाता है। जो रोड कनेक्टिविटी है वो भी नहीं है। जिनका जो डिज़ास्टर अफेक्टेड लोग हैं, किसी का घर नहीं है, वो हमें इतना है कि हमें साथ रहते हैं कि आप लोगों को वापस जाना है, लेकिन उसके लिए अंधेरा अगर है तो लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स है नहीं, रोड बिल्कुल नहीं है, छोटे छोटे रास्ते हैं। उसके लिए वो एक जो पाइन ट्री है जिसको हम चीड़ का दरख्त बोलते हैं, तो वो लकड़ी काट के उसको एक कपड़ा बांधते हैं और उसी को मशाल जिसको हम बोलते हैं वो जलाते हैं। तो टॉर्चेस या जो भी चार्जिंग सिस्टम है वो बिल्कुल बंद होता है और उसी लकड़ी के यूज़ से वो हमें मेन रोड तक पहुंचाते हैं कि आप लोग सेफली पहुंच जाओ मेन रोड तक, क्योंकि जंगली जानवर है उनका भी खतरा है। बाकी लैंड सिंकिंग है, क्लाउड बर्स्ट है, या ज़्यादातर जो है वो लैंड स्लाइड्स है। और इसका मेन जो है मे बी रामबन में 3-4 प्रोजेक्ट्स है, जैसे बागलेहार डैम है, सावला कोट का है, या डूल हस्ती प्रोजेक्ट है जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में है। तो हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। हो सकता है वाटर सीपेज की वजह से कि अंदर अंदर से पानी चल रहा है, उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स का ज़्यादा रहता है। तो ये मुझे लगता है ज़्यादा चैलेंजिंग यही है कि कम्युनिटी तक पहुंचना, हमारा वहाँ तक पहुँचना, सामान कैसे हम पहुँचाए जब रोड बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए हम खच्चरों का इस्तेमाल करते हैं कि उनके थ्रू हम सामान लेते हैं। और उसका दूसरा चीज़ ये है कि अब अगर खच्चर भी नहीं है, जिन लोगों के पास है वो आ नहीं सकते, रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म है, तो उसमें हम एक जिसको हम मतलब ट्रॉली भी बोल सकते हैं कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक हम एक ट्रॉली का यूज़ करके, जिसमें हम खुद भी चले जाते हैं और उसके थ्रू सामान को भी पहुंचाते हैं, या तो खच्चर या तो ट्रॉली जिसके थ्रू हम जाते हैं। तो ये मेन 2-3 चीज़ें हैं जो काफ़ी चैलेंजिंग है, जो मैंने खुद फेस की है। ओके, काफ़ी मतलब जो विजुअल पिक्चर भी दिमाग में आ रही है वो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि डिज़ास्टर के बाद तो वो स्थिति और भी बहुत बुरी तरह से रिस्की भी हो जाती है, वहाँ पे काम करना भी और वहाँ पे रहना भी। संयुक्ता, मैं आप पे आ रही हूँ कि उड़ीसा जो है अपने आप में बहुत खूबसूरत स्टेट है, बट लगातार साइक्लोन्स से जूझता रहा है। और पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि पहले एक टाइम होता था, साल का एक सीज़न होता था जहाँ पे आपको पता होता था कि ज़्यादा साइक्लोन आएंगे, बट अब ऐसा हो गया है कि लिटरली कोई भी टाइम हो सकता है साल का जिसमें साइक्लोन आएंगे। उसमें लोगों के चैलेंजेस क्या हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, थोड़ा उसके बाद बारे में बताइए अपने एक्सपीरियंस से। समस्ती को नमस्ते, मैं उड़ीसा से हूँ। गूंज से मैं 2019 से जुड़ के काम करती हूँ। मन की डिजास्टर था कि लोग तक कैसे मैं पहुँचूँ, और ऐसे करते करते गूंज में शामिल हुए। और जैसे डिजास्टर की बात करें तो उड़ीसा एक ऐसी जगह है, हर जोग्राफी ऐसे होता है कि जैसे जंगल, पानी और सारी चीज़ उसमें होती है कि ऐसे साइक्लोन तो हर साल ही आता है, जिसके उनका आदत हो गए लोगों की। तो वो जब अक्टूबर महीना आता है, सब में सतर्कता अवलंबन करते हैं कि नहीं, अक्टूबर महीना आ गया, ज़रूर कुछ ना कुछ साइक्लोन तो आएगा। इसके लिए लोग थोड़ा सा अवेयर रहते हैं खुद को, और जैसे कि बच्चे को कोई किसका घर है, कुछ चीज़ है, उनको लगे कि हमारी ये ख़त्म हो जाएगा। बेसिकल देखा जाएगा तो उनका डिजास्टर का टाइम जितना वो जिसका पास जितना होता है उतना ही उनका पास चला जाता है। लास्ट में वो आते हैं, जब 5 में पहुँचते
एक साल में, तो फिर डिजास्टर आने के बाद वो जीरो में आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, उनका जो इनकम का ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। उनमें से बच्चे का एजुकेशन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और साइक्लोन के जो बाद उनका जो फीलिंग वो बहुत इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि हम लोग को डिजास्टर का टाइम ही जाते हैं। डिजास्टर के बाद जो सिचुएशन होता है, दिल दहलाने की बात है, जहाँ जानवर से लेकर उनका खेती तक चला जाता है। बहुत दुख होते हैं कि हम डिजास्टर के बाद उनका पास जैसे वो उनका इनकम का डेवलप हो जाए, कुछ राहत को वो चले, हमको उनका साथ शामिल होना जरूरी है। इनकम अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती हो जाती है, और सारे जो उनके जो भी डेवलपमेंट के काम उनके आसपास हो रहे होते हैं वो सब रुक जाते हैं या ऑपोजिट मतलब माइनस में जाने शुरू हो जाते हैं उसके चलते। तो मैं मृणाल, आप असम से आते हैं। असम तो मुझे लगता है कि जब हम छोटे से लेके अभी तक हम लगातार सुनते थे मॉनसून के टाइम पे कि रोड्स बंद हो गई या उससे संपर्क टूट गया इसे इतने एरिया से, और वो कड़ी जो है वो सिलसिला जो है लगभग चला ही आ रहा है, वो रुका नहीं है, वो बढ़ा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, उसका क्षेत्र बढ़ा है। आपके देखते देखते में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी हैं और ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं लोगों को, आप बताएंगे थोड़ा सा इस बारे में? यहाँ उपस्थित सभी को प्रणाम। मेरा नाम मृणाल दत्ता, मैं असम से हूँ। तो असम के बारे में सब लोग जानता ही है, हर साल फ्लड आता है। फ्लड ऐसे आता है, असम ऐसा ही है, चारों तरफ पहाड़िया राज्य है, अरुणाचल, मेघालय, भूटान, और असम ऐसा ही है, असम एक कटरा जैसा ही है, बीच में असम है। अरुणाचल पहाड़ों से जब फ्लड आता है ना, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि आज फ्लड आएगा। जब बाढ़ आता है उन लोग पता ही नहीं चलता है कि आज बाढ़ आएगा। ऐसे सिचुएशन आ जाता है कि कोई चिंता करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। ऐसे बारिश आता है तो रातों रात 12 बजे 1 बजे बाढ़ आ जाता है, घर बार सब टूट के तोड़ फोड़ के ले जाता है। लेकिन एम्बेंगमेंट भी टूट जाता है, क्योंकि हम लोग तो, मैं तो बेसिकली तो ट्राइबल लोगों का साथ ही काम करता हूँ, और ट्राइबल कम्युनिटी बेसिकली पैदाइश से नदी का किनारे में रहता है, और ऐसा ही होता है उसी समय सब कुछ चला जाता है और बाकी रोड वगैरह कुछ नहीं होता है, जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, बूट वगैरह कोई नहीं, कुछ नहीं होता है। उसी समय वो लोग क्या करते हैं, जो बनाना है ना, बनाना का बूट बनाता है, बना के वो लोग वहाँ का ऊपर घर भी नहीं है, ज़मीन भी सब कुछ लेके जाता है। उसका बाद वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी जो बनाना का ऊपर खाना बना के खाने के लिए मजबूरी हो जाता है। उसी टाइम ऐसा लगता है देख के, हम क्या सिर्फ वहाँ पहुँचते हैं सिर्फ बात करने के लिए, लेकिन जो इंसानियत है ना, हम लोग जाके जब हम जाते हैं उसका बाद उनका बात सुनते हैं ना, उसका बाद हम लोग इतना दुख पहुँचता है। सिर्फ हमारा साथ ऐसा ही होता है, तो हम क्या सिर्फ बात करके सिर्फ उसी जाके जो हम लोग देखते हैं ना, उसी से हम लोग का बहुत दुख लगता है। और ये भी है कि सिर्फ हम बहुत लोग ऐसे ही है, सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए जाता है। अभी तो फ्लड आ गया है, लोग फ्लड में चला गया है, लेकिन लोग कोई लोग होता है कि सिर्फ फ़ोटो, उसी टाइम रेस्क्यू करने के लिए कोई चिंता ही नहीं करता है, सिर्फ फ़ोटो के लिए फ़ोटो खींच रहा है, लेकिन लोग जा रहा है, कोई चिंता नहीं है। हमारा साथ ऐसा होगा तो हम लोग का बहुत से का अभी जो फ्लड आया है उसी समय ऐसा सिचुएशन था, बहुत से लोग एम्बैंकमेंट का ऊपर सब लोग खड़ा है, इतना बड़ा बारिश आया है, घर भर तो सब कुछ पानी है, जाने के लिए भी जगह नहीं है, कहीं पे रुकने के लिए भी जगह नहीं। वो लोग एक ट्रिपल के ऊपर वो लोग जी रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी नहीं है। हम जाके तो उनका साथ बातचीत किया है, उसका साथ वो हम बुलाए, हम लोग आए हैं, आपका जो दुख है हम तो समझ रहा हूँ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आप लोग का साथ कुछ तो करने के लिए, लेकिन
जो हम लोग वहाँ का बात करके वो लोग खड़ा हुआ है ना, उससे वो लोग बहुत प्रेरणा पाते हैं। लेकिन वो इंसानियत, हम क्या दिया है क्या नहीं दिया है ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो इंसानियत है, कुछ हो गया तो उनका साथ हम बातचीत करके एटलीस्ट उनका तो सहायता करना बहुत ज़रूरी है। और चैलेंजेस तो बहुत है। आई थिंक वो चैलेंजेस के बारे अगर बात करनी शुरू करेंगे तो शायद आज का पूरा दिन उसमें ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों की बात हो रही है। प्रशांत, तो आप वेस्ट बंगाल में काम करते हैं, सुंदरबंस में काम करते हैं, और वहाँ पे बहुत सुदूर इलाका है। मुझे मालूम है कि कलकत्ता से अगर आपको सुंदरबंस भी पहुँचना है तो कई कई घंटे लग जाते हैं। थोड़ा सा अपने काम के बारे में, थोड़ा सा आप जो दिक्कतें आप देख रहे हैं वहाँ पे लोगों की, जो डिज़ास्टर्स के बाद है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ें क्या सामने में आ रही हैं? पहले सभी को नमस्ते। मेरा नाम प्रशांत सरकार और मैं वेस्ट बंगाल सुंदरबन से आए हैं। तो सुंदरबन का एक बहुत सारा आइलैंड है, तो बासंती एक आइलैंड है, उसी आइलैंड से मेरा मातला रिवर का बगल में मेरा घर है। तो मेरा जो एक्टिविटी एरिया है वो रिवर क्रॉस करके दूसरा एरिया में जाना पड़ेगा, और भी कभी कभी टाइम मेरा जो एरिया है उसी पे काम होगा। तो मैंने भी देखा जो जब डिज़ास्टर आती है ना, तो हर साल में, तो अभी डिज़ास्टर का हर साल डिज़ास्टर आती है, तो मैंने जो देखा जो डिज़ास्टर का सिचुएशन ऐसा तरीका हाल होता है। जो आइला का टाइम मैंने देखा, जो 2009 में जब आइला आया, तो उसी में सारे गांव में जब पानी घुस रहा है, तो मेरा घर भी पानी के अंदर चले गया। तो मैंने देखा उस टाइम में मेरा बॉयज़ भी थोड़ा छोटा है, मैं स्टूडेंट भी था, तो मैंने वो पानी के अंदर खेलने भी लग गया, क्योंकि ज़्यादा पानी घर के पास आ गया। कुछ मछली है इधर उधर घूम रहा है, उसके बाद मैं थोड़ा मछली पकड़ने के लिए व्यस्त हो गया। तो कुछ टाइम के बाद मैंने देखा जब इतना पानी बढ़ गया ना, तो मेरा घर के अंदर पानी घुस गया, तो मेरा जो ज़मीन है वो तो पानी का अंदर चले गया। और ये जो पानी है ना, ये पूरा सॉल्ट वाटर है। तो ये है बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो सॉल्ट वाटर एक बार पानी ज़मीन के अंदर घुस जाएगा तो 8 से 9 साल तक उस ज़मीन में कोई खेती का काम नहीं होगा। तो ये जो लोग जिसका ज़मीन पानी में डूब जाता है, तो उन लोगों का वहाँ पे जॉब तो सिर्फ वही है, मछली पकड़ना है, जंगल में जाके ककड़ा और हनी कलेक्ट करना है। तो जिन लोगों के पास ज़मीन है वो खेती में काम कर रहे हैं। तो जिनका पास ये ऑप्शन डैमेज हो जाते हैं ना, तो उन लोग माइग्रेंट के लिए वो बाहर कोई दूसरा स्टेट में चले जाता है, क्योंकि उनके पास अर्निंग सोर्स नहीं है। और ये जब सिचुएशन आती है ना, तो क्या होता है ना, उनका जो घर का जो छोटा छोटा बच्चा है उनका देखने का ही कोई नहीं रहता है, क्योंकि उनका पापा और मम्मी घर भी नहीं है। तो उनका जो एजुकेशन सिस्टम होता है सुंदरबन का उनका जो जनरेशन, वहाँ पे एजुकेशन का डिसबैलेंस का एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका गार्जियन नहीं है, तो उनका बच्चे को कौन ख्याल रखेगा। तो एक प्रॉब्लम के साथ अरेक प्रॉब्लम कनेक्टेड है। वो सिर्फ सॉल्ट वाटर ज़मीन पे घुस गया, उसके बाद उनका अर्निंग स्टॉप हो गया, उसके बाद उनका इफेक्ट दूसरा उनका बच्चा के ऊपर आ गया। तो सिर्फ इसी करके ना पूरा सोसाइटी में ये रोलिंग हो गया अभी, क्योंकि हर साल में कोई ना कोई डिजास्टर आएगा। तो क्या होता है, सुंदरबन का जो लोग रहते हैं, तो उनका जो ज़मीन है सबका ये सब नहीं, मेरा घर अच्छा होना चाहिए, मेरा घर का सब ने ये एक पॉन्ड होना चाहिए, मेरा घर का इतना तरीक़ा से मैं डेकोरेशन करना है। जो शहर में जो लोग रहते हैं उनका तो एक सपना है, सबका अपना अपना ज़मीन का किस तरीके से डेकोरेशन करना है। तो सुंदरबन में जो लोग रहते हैं उनका ये सपना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ करना है ना, तो उनका ये दिमाग में आएगा, तो हर साल में कोई ना कोई बाढ़ आएगा, कोई ना कोई साइक्लोन आएगा, तो हमारे सपना टूट जाएगा। तो सपना देखने का मन नहीं, ये लोग भूल गया जो हम किस तरीके से सपना देखेंगे। तो हम सभी लोग ये बोला जो आप कुछ नहीं कर सकते तो आप थोड़ा सपना भी तो देख सकते हैं ना। तो सुंदरबन लोगों के लिए सपना भी देखने की मन नहीं कर रहा है। ये एक पूरा उनका लाइफ का सिस्टम है। और उन लोगों के साथ मैंने जब काम के लिए क्योंकि सुंदरबन ये बाढ़ रुकने के लिए गूंज का
साथ मैं 2019 साल से मैंने जुड़े रहे गुंज का फेलोशिप का साथ। तो उस साल में मैंने देखा जो मैंने एक्टिविटी स्टार्ट किया गुंज का CFW एक्टिविटी से का साथ। तो उस टाइम से मैंने मैनग्रोव प्लांटेशन करने के लिए गाँव वाले के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जो किस तरीक़े से, क्योंकि सुंदरबन प्रोटेक्ट करने के लिए मैनग्रोव एक लार्जर लेवल पे पार्ट है। तो मैनग्रोव ज़्यादा जिस रिवर बाउंड्री का साथ मैनग्रोव ज़्यादा है वहाँ पे रिवर बाउंड्री नहीं टूटेगा। तो मैनग्रोव पहले मैनग्रोव प्रोटेक्शन करना है। तो मैनग्रोव प्रोटेक्शन कौन करेगा, क्योंकि बाहर का कोई लोग तो वहाँ पे नहीं रहता है, सुंदरबन का जो लोग रहेगा उनका भी वो भी प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। तो उनका भी वो एक्टिविटी का साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। और इसी का एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कौन लोग जाके रिवर बाउंड्री में प्लांटेशन करेगा, क्योंकि वो एक दिन का काम नहीं है, पूरा 2-3 साल लगेगा एक पेड़ बड़ो होने के लिए। तो एक लंबा टाइम का वो एक्टिविटी है। तो इसी तरीके से हम गाँव के साथ जाके किसी का कंपनी के साथ पहले मीटिंग करता है, जो आपका जो ये ज़मीन में सॉल्ट वाटर घुस जाएगा तो आपका, तो मैंने जब वो साइकिल बाता है तो उसी हिसाब से गाँव वाले के साथ मैंने कनेक्ट करते हैं, जो ये पानी घुसना नहीं चाहते तो हम मैनग्रोव प्लांट करना है। तो पहले मैनग्रोव सीड वो कलेक्ट, वो पूरा एक प्रोसेस है, 4 महीने लगेगा वो पूरा मैनग्रोव सैपलिंग प्लांटेशन करने के लिए। तो ये 4 महीने तक वो गाँव वाली खुद अपना से जुड़े रहे। और बेसिकली हमारे साथ गाँव वाली जो कनेक्ट कर रहे महिला दीदी लोग भी जुड़ के ये काम ज़्यादा कर रहे हैं। प्रशांत, मैं 1 मिनट में मैं आप सबसे ये पूछना चाहती थी, क्योंकि अक्सर जब बात होती है डिज़ास्टर्स की या डिज़ास्टर अफेक्टेड लोगों की, उनके बारे में बात ये होती है कि वो कैसे अफेक्टेड हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है। हमने भी अभी मतलब 10 मिनट यही बात करी कि क्या क्या मुश्किलों की बात हुई, बट इससे पहले भी बात हुई और ये जिक्र हुआ कि बहुत कुछ सीखने के लिए है उन लोगों से। उन लोगों की बहुत सारी समझबूझ है अपनी जगहों के बारे में। उसके बारे में आप लोगों ने अपने काम में क्या सीखा, क्या देखा कि जो आप लोगों को लगा कि ये अलग कुछ हुआ, जो शायद आपके दिमाग में है कि इतने सारे लोग यहाँ पे डिज़ास्टर की कॉन्फ्रेंस में जमा हुए हैं, काश कि ये देख पाते कि वहाँ के लोगों का सिर्फ विक्टिम होना या उनकी प्रॉब्लम्स नहीं है, उनके पास कुछ ऐसा भी है जो दुनिया को देखना चाहिए, समझना चाहिए। इसके बारे में अगर संक्षेप में सब लोग बताना चाहेंगे थोड़ा थोड़ा अपने अपने क्षेत्र से, तो शिव आपसे शुरू करते हैं कि आप अपना उत्तराखंड का थोड़ा सा बताइए, और उसी तरह से हम जैसे पहले बात किए, बट कोशिश कीजिए कि बहुत छोटे में बता पाएँ। प्रशांत शिव को देंगे प्लीज़ माइक। थैंक यू। देखिए, डिजास्टर में तो बहुत कुछ देखने को मिलता है और कम्युनिटीज़ से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे आप लोग जब देखते होंगे टीवी अखबारों में, तो जब डिजास्टर आता है तो वहाँ पे अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं बचता है, घर बार किचन राशन इत्यादि कुछ नहीं बचता है। लेकिन वहाँ पे जो है सामूहिक भोजन बनता है। वहाँ पे लोग जो है इकट्ठा होके एक जगह पे सबके लिए खाना बनाते हैं। तो किसी के घर में अगर दाल है तो दाल लाएगा, किसी के घर में चावल बचा तो चावल लाएगा, किसी के घर में नमक बचा तो नमक लाएगा। लेकिन किसी भी तरीके से वो व्यवस्था करके जो है वो सामूहिक भोजन बनाएंगे, ताकि कोई भी वहाँ पे जो है कोई भी परिवार का बच्चा भूखा ना रहे। ये सबसे बड़ी सीख होती है। आप यही चीज़ जब देखेंगे कि जब हम लोग भी जाते हैं, और इवन हम तो चलो मैं तो लोकल हूँ, आप कोई भी लोग, आप शहर के कोई भी लोग गांव में उठ के जाओ डिजास्टर के टाइम पे, तो उनके पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं होगा, खुद के रहने के लिए उनके पास कुछ नहीं होगा बचा हुआ। लेकिन वो आपको ज़रूर पूछेंगे कि भैया आपने खाना खाया, आपके लिए खाना बनाएं। वो कुछ भी करके आपको जो है भूखे नहीं आने देगा। ये गाँव की पहचान है कि जो गाँव में गया वो भूखा नहीं आ सकता। ये वहाँ से सीखने को मिलता है कि कैसे जो है वो इतनी बड़ी मुश्किल में होके भी अपने बारे में नहीं सोच रहा है, वो जो आया हुआ है उसके बारे में ज़रूर सोच रहा है। ये सीखने को मिलता है, देखने को। दूसरा, वो जो उसके बाद वो जो काम करते हैं,
जो प्रभावित हो गए, कोई कैजुअलिटी है या कुछ भी है, वो आपस में लोगों को आपसी भाईचारा ऐसा होता है, आपसी संबंध ऐसे होते हैं कि वो वहाँ पे एक दूसरे की मदद के लिए जो है अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि वहाँ पे आपदा आई हुई है, वहाँ पे मैं भी मर सकता हूँ, मेरे साथ भी नुकसान हो सकता है। वो कूद जाएगा, उसको नदी पार करनी है तो करेगा, वो कैसे भी करके अगर सामने अगर कोई किसी जो है दिक्कत में फंसा हुआ है तो वो उसको ज़रूर बचाने का प्रयास करेगा। ये बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है। ज़रूर। और गूंज के काम में मेरे ख्याल से हम लोगों ने ये भी बहुत देखा कि कैसे वही कम्युनिटीज़ जो अफेक्टेड होती हैं वो ही अपने तालाब, अपने पोखर को रिपेयर करने का काम भी करते हैं, साफ़ करने का काम भी करते हैं। वो आगे बढ़ के अपने गांव को दोबारा से नॉर्मलाइज करना, अपने पाँव पे खड़े होने का काम भी वो बखूबी निभाते हैं उस रोल को। अंजुम, आप बताना ही थी अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि आपने बहुत कुछ उन अफेक्टेड कम्युनिटी से सीखा। वो आप कल मेरे ख्याल से जिक्र भी कर रही थी कि वो कैसे बड़े मुश्किल रास्तों से निकल के आते हैं, अभी आपने कहा भी, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि सीखने वाली यहाँ के लोगों को क्या जानना चाहिए लोगों के बारे में। जैसे शिव जी ने बोला कि हमें बिना खाने के वो वापस आने नहीं देते हैं, भले ही वो कहीं से भी अरेंज कर रहे हैं। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि शाम को अगर हमें वहाँ रुकना है कि वापस जाने का टाइम नहीं है, रोड नहीं है, तो दूसरी चीज़ जो हमने उनसे सीखी कि हमारे लिए चाहे वो तारपुलिन अरेंज करके एक टेंट जैसा बना देते हैं, खुद बाहर सोएंगे वो, लेकिन हमें वो बाहर सोने नहीं देंगे। और एक चीज़ जो है जो जम्मू कश्मीर में मैंने मतलब कॉमन देखी डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ में, वो ये है कि वो हरी सब्जियां एक गड्ढा खोदते हैं, उसमें वो मतलब रख देते हैं कि विंटर्स में डिज़ास्टर का आना ज़्यादा होगा, तो वो उस टाइम पूरा एक मोहल्ले में, एक कम्युनिटी में वो आपस में वो शेयर करते हैं। और इसके अलावा ये चीज़ है कि मतलब रिकवरी एक शॉर्ट प्रोसेस नहीं है, इट्स ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो वो कैसे इस चीज़ से बाउंस बैक करते हैं, काम भी कर रहे हैं, अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से रिबिल्ड कर रहे हैं। और ये चीज़ें मतलब बहुत काम, जैसे जो यहाँ ऑडियंस में है उनको तो, लेकिन उनको ज़्यादा इस चीज़ का पता नहीं होगा, वो तो न्यूज़ चैनल्स के थ्रू सुन रहे हैं, लेकिन जो हमने देखा है ग्राउंड पे कि लोग कैसे गड्ढों में सब्जियां रख रहे हैं कि इस टाइम पे वो यूज़ करें, तो वो हमने भी अपने घरों में वही चीज़ हमने भी अपने घर में यूज़ की है कि नहीं, आने वाले टाइम पे इनकेस कोई ऐसा डिज़ास्टर आता है तो हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। हमने खुद पे भी अप्लाई की। और संयुक्ता, आप कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में? बस थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल कम है, हम रैप अप करेंगे। एक दिल को छू जाने की बात है। फ्लड हुआ था, जैसे कि उसी बंद टूट गया, एक टूट जाने के बाद पूरा घर पलट गया, उसमें से एक बच्चा और एक औरत ने फंस गए। लेकिन गांव वाले जैसे बोल रहे थे कि हम कैसे मिलके उनका जान को बचाए, क्योंकि वो पक्का मकान था, बचेगा तो बचाए। फिर माँ को बचाते समय इतना पानी का था, स्रोत का बहुत ज़्यादा प्रखर था, जिसके वजह से उसका शरीर में कपड़ा नहीं था। फिर भी लोग मन में था कि हम उसको कैसे किसी तरह हम इसको बचाएंगे, उठा के भी लेके आए हैं साथ में। वो एक चीज़ बहुत बड़ा है, जैसे बोल रहे थे, इतना गांव लोग मिलके बोल रहे थे कि हम कुछ ना कुछ हम एक जीवन तो बचा ही दिए, कि सब कुछ सुनना चाहिए कि बाद में आएंगे, ठीक है, लेकिन वो जो चीज़ है रियलिटी, आप थोड़ा सा भी मतलब आए हैं डिजास्टर के बाद आए हैं, फ्लड के बाद आए हैं, तो हमारे ये जो कहानी सुन रही है, कहानी ये सच है। ऐसे है कि वो औरत खुद बोल रही थी और सब चारों तरफ भी लोग, उनका भी जो फैमिली मेम्बर है वो भी रो पड़े हैं। धन्यवाद। तो आप सब ने सुना कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैं समय की कमी के कारण और जो दो स्पीकर्स हैं उनको नहीं बोल पा रही हूँ,
बट आप लोग ज़रूर इन सबसे बात कीजिएगा। इनके पास बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो ये बताती हैं कि शायद जो हमारे गाँव में लोग हैं, जो लोग इन डिज़ास्टर्स को फेस कर रहे हैं, शायद उनको देखने का नज़रिया शायद हमें बदलने की ज़रूरत है। उनकी बात सुनने का, उनसे वहाँ के नेचर के बारे में समझने की बात जो है, वो शायद एक बहुत बड़ा इनपुट है जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सॉल्यूशंस में या आइडियाज़ में बहुत एक इनपुट और एक बड़ा कारगर रोल प्ले कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच टू दिस पैनल एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। Thank you so much, ma'am and honorable members of the plenary. It was a fantastic experience sharing, that is learning directly from the mouth of the people, those who have suffered and seen what disaster meant to them. Quite a learning, huge round of applause for them. It's time, I request Dr. Blala Adhikali sir to please honor them with a gesture of honor and appreciation, a memento. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस प्लेनरी सेशन गार्जियंस ऑफ हिमालयाज वॉइसेस ऑफ कम्युनिटीज़ के बाद जो प्लेनरी सेशन हम करने जा रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी पावर पैक्ड, वेरी इम्पैक्टफुल and directly involving the people, those who are people of substance, people of strength, people of importance. And this session will speak about the cooperation for resilient Himalayas and developing Himalayan corridors. And the paper speaks that the session partner is going to be the people of eminence and power from government of Uttarakhand itself. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for the members of plenary. और इस सेशन के लिए हमारे पास न सिर्फ उत्तराखंड राजनीति बल्कि संपूर्ण भारतीय राजनीति के पुरोधा एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हमारे इस सत्र के मुख्य अतिथि होंगे, माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, जो कि एक एमिनेंट पॉलिटिशियन हैं, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, फॉर्मर गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, एक बहुत बड़ा कद, एक बहुत बड़ी काठी न सिर्फ उत्तराखंड की राजनीति में बल्कि संपूर्ण भारत की राजनीति में। सर, मैं ग्राफिका विश्वविद्यालय परिवार प्रबंधन और आयोजन समिति WSDM 2025 की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इस प्लेनरी सेशन के अन्य सदस्य गणों के रूप में मैं डॉक्टर विंध्यवासिनी पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, अगर वो अपनी गर्ममयी उपस्थिति से मंच की शोभा बढ़ाएं।
I would like to invite Dr. G.S. Rawat, senior scientist, as they he will be the moderator and coordinator for the session. हमारे इस सेशन में माननीय विधायक टेहरी विधानसभा क्षेत्र से श्री किशोर उपाध्याय जी को उपस्थित होना है। संभवतः वह और हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर हरीश कर्नाटक जी, सीनियर स्पेस एंड रिसर्च साइंटिस्ट इसरो। हरीश कर्नाटक जी, Dr. Manoj Pant ji. So I would like to request you to grace the dais. I would like to request Professor M.M.S. Chauhan, Honorable Vice Chancellor, G.B. Pant University, to please grace the dais. कहाँ हैं? बुलाओ बुलाओ। हाँ, दुर्गेश पंत सर। He will not sit here, but he has to be here. मैं डॉक्टर G.S. रावत इस सत्र के मॉडरेटर और सीनियर साइंटिस्ट से अनुरोध करता हूं कि वे पुष्पगुच्छ देकर माननीय अतिथिगण का पारंपरिक स्वागत करें। ले जाओ। अच्छा, और भी है। एक और ले जाओ, ले जाओ। सर बाकी सब लोगों को भी एक एक देवियों और सज्जनों, इस सत्र की महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें हम सिर्फ उत्तराखंड हिमालयी राज्य की या उत्तराखंड के हिमालय की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के हिमालयी राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। उनको समन्वित करके एक हिमालयन कॉरिडोर बनाने की जो पहल माननीय प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से और उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हमने शुरू की है, उस पर प्रकाश डालेगा ये सेशन। इसलिए ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सभागार में अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय कोश्यारी जी को सुनना अपने आप में एक सौभाग्य है। मैं श्री G.S. रावत सर से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस सत्र को आगे बढ़ाएं। इस सत्र के मुख्य अतिथि माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, महामहिम राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, और इस मंच के पैनलिस्ट और इस सभा में आए हुए सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं।
ये सेशन जैसा कि अभी बताया गया था, इट डील्स विद द कोऑपरेशन फॉर रेजिलिएंट हिमालय एंड डेवलपिंग हिमालयन कॉरिडोर। ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का एक इनिशिएटिव है। जैसा कि ऑल ऑफ यू नो, सभी जानते हैं कि उत्तराखंड हैज़ बीन consistently faring extremely well in achieving the sustainable development goals। आप लोगों ने पेपर्स में सुना होगा कि कुछ पिछले 2-3 सालों से उत्तराखंड हाँ, मैं माननीय विधायक टेहरी श्री किशोर उपाध्याय जी का भी इस सत्र में स्वागत करता हूं। और हाँ, आप कृपया एक बुके देकर विधायक जी का स्वागत करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में आने के लिए सर। तो मैं ये कह रहा था कि उत्तराखंड ने पिछले कुछ सालों में जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जितने मानक थे उनको बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया। और उत्तराखंड, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे हिमालयन आर्क को अगर एक हम गार्लैंड की तरह देखें, माला की तरह देखें, तो उत्तराखंड एक बीच में स्थित है। और ये पश्चिम हिमालय और पूर्व हिमालय के सारे राज्यों या फिर प्रदेशों या फिर जो हमारे नेपाल भूटान से लगे हुए जो नेपाल और भूटान राज्यों से भी इसका एक अच्छा संबंध है। तो ये उत्तराखंड इस भूमिका में, एक तो नॉलेज हब ये उत्तराखंड में इतना अच्छा है कि यहाँ पर जितने भी सरकारी संस्थान और ज्ञान की कमी नहीं है। उत्तराखंड ने कई चीज़ों में SDG के अलावा और चीज़ों में भी कई चीज़ों में आगे प्रोग्रेस किया है। तो इन सब को लेते हुए जो उत्तराखंड गवर्नमेंट की ये सोच है कि क्यों न एक पूरे हिमालयन रीजन में एक नॉलेज नेटवर्क हो और उस सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जितने भी जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो भी डेवलपमेंट में, कंजर्वेशन में और अन्य कई फील्ड्स में काम कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। और वहाँ पे एक ऐसा इस पूरे रीजन में एक ऐसा वो बनाया जाए, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म कि उसमें हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के और भी मुद्दे और अधिक सुदृढ़ हों। और उसके अलावा रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इस पर्टिकुलर वर्ल्ड समिट ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पूरा थीम ही सिक्योरिंग और गेटिंग द इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर फॉर डेवलपमेंट, फॉर डिज़ास्टर रिस्क रेजिलियंस, ये उसका थीम है। तो इन सब को देखते हुए ये माना गया कि इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग इन सारे चीज़ों पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे और पैनलिस्ट से हम लोग इन चीज़ों पे विचार वो करेंगे, आमंत्रित करेंगे। तो पहला हमारा जो एक गोल ये था इस पर्टिकुलर सेशन का कि डिफाइनिंग द हिमालयन कॉरिडोर विजन। इस पूरे हिमालयन नॉलेज नेटवर्क का, इस वैसे कॉरिडोर इसका नाम दिया गया है, पर इस पर भी चर्चा हो सकती है कि क्या इसका विजन होना चाहिए इस पूरे नॉलेज नेटवर्क का। दूसरा ये है कि हम पूरे अंतर राज्यीय यानी कि राज्य के हिमालय के राज्यों में ही नहीं, आसपास के पड़ोसी देशों से जो मित्र राष्ट्र हैं उनके साथ कैसे हम लोग कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। थर्ड ये है कि साइंस और पॉलिसी के अलाइनमेंट को कैसे हम स्ट्रेंथन करेंगे। फोर्थ हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो डिज़ास्टर रिस्क रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए, उसकी स्ट्रैटेजीज बढ़ाने के लिए क्या हमें आगे करने की ज़रूरत है। और फाइनली जो एक्शनेबल रोड मैप है, आप सभी जानते हैं कि जो प्लानिंग कमीशन ने जो भारत सरकार में एक बहुत ही एक हाई लेवल का एक जो बॉडी सेट क्रिएट किया था कि हम पूरे हिमालयन रीजन के डेवलपमेंट के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाएंगे। इसी लाइन में गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने भी एक
हाई पावर एक बॉडी का वो किया है, कंसेप्ट किया है, और उसमें प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी उसके कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। और उनका रोल ये होगा कि हिमालय के अन्य राज्यों के साथ भी तालमेल बिठाकर उनसे जो उनके गुड प्रैक्टिसेस हैं अन्य राज्यों में वो हम लोग सीखेंगे, और उत्तराखंड ने जो गुड प्रैक्टिसेस और अभी जो चीज़ें अचीव की हैं उनको भी और राज्यों के साथ साझा करेंगे। और हमारे जो मित्र राष्ट्र हैं पड़ोस में, नेपाल, भूटान जैसे राज्यों के साथ, इवन चाइना के साथ हमारे संबंध सुधर रहे हैं कि कैसे हम हिमालयन रीजन के लिए हम एक ऐसा हब बना सकें नॉलेज शेयरिंग का और एक्सपीरियंस शेयरिंग का। तो ये हमारे उद्देश्य हैं सर। तो सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर सेशन के लिए मैं कमेंट्स और उनके सुझाव आमंत्रित करूंगा। मेरे ख्याल से सबसे पहले मैं शुरू करूंगा मनोज पंत जी से। आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें, उसके बाद हम लास्ट में मेरे ख्याल से माननीय पूर्व राज्यपाल कोश्यारी जी से हम लास्ट में उनके आशीर्वचन और उनके विचार सुनेंगे। यस, पंत जी। इस महत्वपूर्ण सत्र के मुख्य अतिथि श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, महामहिम पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे विधायक टिहरी श्री किशोर उपाध्याय जी, मंच पर आसीन अन्य सभी महानुभाव और सभी श्रोतागण, सबसे पहले तो मैं आप सबका इस सत्र में स्वागत करता हूं। और ये जो समिट हो रहा है, इस समिट का एक बहुत महत्वपूर्ण सत्र ये है, और मुझे बड़ी खुशी हुई जब हम लोग देख रहे थे इसको। हमने प्रोफेसर पंत से भी इस बात को कहा था, और वाकई ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है जिसमें हम इस हिमालयन कॉरिडोर की बात कह रहे हैं। जैसा डॉक्टर रावत ने भी बताया, कॉरिडोर शब्द अपने आप में इस पर भी हमें चर्चा करनी होगी, क्योंकि कॉरिडोर तो हिमालय का एक ऑलरेडी बना ही है। तो हम किस कॉरिडोर की बात कह रहे हैं, इस कॉरिडोर में हम क्या करने जा रहे हैं, इन तमाम बिंदुओं पर हमारे सभी लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे। मैं विशेष रूप से, चूँकि मैं नियोजन विभाग को देखता हूँ, मैं निदेशक हूँ उसमें, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक इकोनॉमी एंड इकोलॉजी के बैलेंसिंग को लेकर के एक जो विज़न है, उस पर काफ़ी कुछ काम भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अभी बात कही है, आप सभी जानते हैं, आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड राज्य अभी जो लास्ट जो रैंकिंग आई है नीति आयोग की, पूरे देश में छोटा राज्य होने के बावजूद पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक छोटा राज्य होने के नाते उत्तराखंड राज्य लगातार 2018 में ये 10वें स्थान पे था, फिर ये 9वें स्थान पर आया, फिर चौथे पे आया, और फिर फर्स्ट इसने अपना छोटा राज्य होने के बाद केरल, तमिलनाडु और बड़े बड़े राज्यों से इसने अपनी को आगे बढ़ाया। तो स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक हम आज जिस कॉरिडोर की और जिस विषय की बात कह रहे हैं, तो हमारा भी ये मानना है कि हम नीति आयोग में भी ऑलरेडी एक हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल बनी हुई HSRC। 5 प्रमुख मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक तो सस्टेनेबल टूरिज़्म, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। टूरिज़्म तो है ही है, हम सस्टेनेबल टूरिज़्म की बात कह रहे हैं कि इस पूरे हिमालयन कॉरिडोर में टूरिज़्म एक बड़ी एक्टिविटी है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में की बात कहें, चाहे हम हिमाचल की बात कहें, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात कहें, चाहे हम लद्दाख की बात कहें, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें। तो टूरिज़्म हमारे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो बट इट शुड बी सस्टेनेबल। तो यहाँ पर एक चर्चा का विषय होता है कि सस्टेनेबल टूरिज़्म की हम बात कह रहे हैं, तो वो एक बड़ा मुद्दा है कि सस्टेनेबल टूरिज़्म इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इज़ हम कहते हैं कि स्किलिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल। तो स्किलिंग किस पर, स्किल को आप सब देख रहे हैं, यहाँ पर कई स्टूडेंट भी बैठे हैं, तो हम हिमालयन स्किल की बात कहते हैं। हिमालय के अगर पूरे एग्रोक्लाइमेटिक जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, अलग अलग टोपोग्राफी के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो हमें डिफरेंट तरीके के जोन हमें मिलते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग उस पर स्पेशली हम अगर अपने हायर हिमालय, मिडिल हिमालय को देखते हैं, तो जो हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा
लोग उसी पे डिपेंडेंट भी हैं। तो वो उसके लिए को लेकर के हम हिमालयन स्किल पे एक बड़ा मुद्दा हमें लगता है कि इस पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता होगी। जो HSRC ने भी हिमालयन स्किलिंग की बात की है, चाहे वो बी कीपिंग की बात हो, चाहे वो फ्लोरिकल्चर की बात हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर की बात हो, चाहे वो नेचुरल फार्मिंग की बात हो, चाहे वो लोकल लेवल पर जो भी प्रोड्यूस होते हैं उस पर भी स्किल हम किस तरीके से कर सकते हैं, या अन्य भी जो स्किल है उसकी बात भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो निकल करके आता है। तीसरा मुद्दा आता है ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर। तो ये हालांकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है नॉर्थ ईस्ट को लेकर के, जहाँ पे झूम खेती जो है हमारी होती है, जहाँ पे कल्टीवेट करते हैं, फिर काटते हैं, उसको जलाते हैं, फिर नई खेती वहाँ पे शुरू करते हैं। तो लेकिन नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट, इवन हिमालयी राज्यों को अगर हम देखते हैं, जब हम कश्मीर की बात कहते हैं, जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं और हिमाचल की बात भी करते हैं, तो वहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जितना नॉर्थ ईस्ट के लिए है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम किस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन की बात को यहाँ पे कर पा रहे हैं, कैसी एग्रीकल्चर और कैसा हॉर्टिकल्चर और किस तरीके का हम मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट और हब्स वगैरह को हम कैसे, जो हमारा बहुत बड़ा पोटेंशियल एरिया है उस पर हम क्या बात कर सकते हैं। ये भी उस HSRC की रिपोर्ट में, हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल की एक रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है। तो वो एक बड़ा मुद्दा है जिस पर हमें ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर को हमें देखना है। और फिर एक मुद्दा हमारे पास इस सारी चीज़ों को देखने के लिए, जो सुबह से हम देख भी रहे थे, स्पेशली जब हमने वाटर वाला जो हमारा सेशन चल रहा था और हमारा पूरा क्लाइमेट चेंज को लेकर के सेशन चल रहा था, तो हमने देखा था कि एक डेटाबेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो जो हमारा स्पेशल डेटा है, जो जियो बेस्ड डेटा है, जो GIS बेस्ड डेटा है, इसकी आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और पर्टिकुलरली हमारे हिमालय राज्यों के लिए ये एक बड़ा ही अहम रोल अदा करता है। सुबह से हमने कई लेक्चर अटेंड करे और उस पर बड़ा ज़्यादा बहुत उस डेटा के बेसिस पे जो एनालिसिस की थी वो वाकई बड़ी आई ओपनिंग थी। वो इस तरीके का डेटाबेस हमारे पास तैयार होना चाहिए और ये इत्तेफाक से, और हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास स्पेशली हमारे राज्य में राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग हो, चाहे वो FSI हो, चाहे हमारा कोसी कटारमल का जो भारत सरकार का एनवायरनमेंट वाला इश्यू हो, चाहे हमारा यहाँ मृदा संरक्षण भूमि संरक्षण वाला इश्यू वो हो, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हमारे पास खुद हमारे राज्य में हैं। तो ये हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं। तो इस डेटा को मैक्सिमम कैसे यूज करके हम इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारे लिए बड़ा मुद्दा होगा। तो इन्हीं विषयों को लेकर के मैं समझता हूँ कि हमें अपनी सारी रणनीति आगे बढ़ानी होगी जिस पर हम अधिक से अधिक अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकेंगे। तो मैं चूँकि नियोजन के मैं ऑलरेडी नियोजन को देखता हूँ, इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं अनुरोध करूँगा कि उसी लाइन पर अगर हम आगे बात करेंगे तो आगे रहेगा। थैंक यू वेरी मच। पंत जी, now I'll request Dr. Chauhan, Honorable Vice Chancellor, GB Pant Agriculture University, for his remarks. ओके, थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा नमस्कार। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मैं ऐसे डायस को शेयर कर रहा हूँ जिसमें परम आदरणीय हमारे श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र जैसे राज्य के जो राज्यपाल रहे हैं और जिनका आशीर्वाद हमेशा पूरे उत्तराखंड को ही नहीं पूरे देश को मिलता है। साथ ही हमारे बड़े जो हमारे प्रखर नेता हैं, MLA साहब हमारे श्री उपाध्याय जी, और इसके साथ साथ जितने भी हमारे बुद्धिजीवी हैं जो आपके सामने हैं डायस पर, और साथ ही साथ हमारे जो ऑफ द डायस हैं वो बैठे हुए हैं। श्री डॉक्टर प्रोफेसर जो है दुर्गेश पंत जी ने मौका दिया यहाँ पर आने का। मैं क्योंकि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से आता हूँ, तो जो विश्वविद्यालय जिसका कि पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में नाम है, एंड दिस इज़ द नंबर 1 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया which was established long back in 1960 and has done marvelous job in terms of having a green revolution, and therefore it has been noticed as the harbinger of green revolution.
तो हमारा, क्योंकि अब ये विश्वविद्यालय हमारे उत्तराखंड में है और सबसे बड़ा इसका योगदान तो रहा ही है, पर अब विशेष योगदान पिछले 25 सालों से उत्तराखंड के लिए है। जब मैं अपने वैज्ञानिकों के बीच में बैठता हूँ और एनालिसिस करता हूँ कि उत्तराखंड का इस विश्वविद्यालय की ओर से क्या योगदान होना चाहिए, तो पिछले 2-3 सालों में हमने कहा है कि हम उत्तराखंड को एक ऑर्गेनिक स्टेट बनाएंगे और अब नेचुरल स्टेट की भी, हम नेचुरल फार्मिंग स्टेट की भी हम उसको बात करते हैं। तो जहाँ तक हिमालयन कॉरिडोर का सवाल है, ये जैसे कि कहा गया कि पंत साहब ने कहा कि सबसे मुख्य योगदान जो हमारा यहाँ पर, जो हमारे मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, छोटे किसान हैं, छोटे छोटे जोत हैं जिनके, उनका कैसे विकास हो। क्योंकि कोई भी कॉरिडोर, कोई भी जैसे गलियारा जिसे बोलते हैं, तब तक अच्छा नहीं माना जाता जब उसके आसपास के लोग सक्षम और समृद्ध ना हो। तो पन्नगर में हमने कहा है कि पन्नगर का अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग और इसमें जाना है तो सबसे बड़ा ये है कि 3 भागों में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो हमारे जो लो लाइन एरिया है, जिसमें हमारे जो ये हरिद्वार, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी और ये सारा क्षेत्र आता है। एक उससे ऊपर वाला एरिया है जिसमें हमारा पौड़ी है, अल्मोड़ा है, ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और एक उससे ऊपर वाला है जिसमें कि हमारा ये चमोली है, उत्तरकाशी है, ये वाले डिस्ट्रिक्ट हमारे आते हैं, पिथौरागढ़ है। तो आप ये मान के चलें कि जो हमने कहा कि जो केमिकल फार्मिंग हम जो करेंगे, और वो भी जुडिशली हम इसको करेंगे, वो करेंगे लोअर एरिया में। और जो मिडिल एरिया है, जो हमारा जैसे पौड़ी है, अल्मोड़ा है, उसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। और जो उससे ऊपर है उसमें हम नेचुरल फार्मिंग की ओर जाएंगे। क्योंकि देखो, एक चीज़ आप ये मान के चलेंगे, जब तक हम अपने किसानों की आमदनी नहीं बढ़ाएंगे तब तक इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि अब आमदनी कैसे बढ़े। क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को करेंगे तो उनको पहले बीज और इस सब चीज़ों से प्रोत्साहन देना पड़ेगा, ऑर्गेनिक सीड उनके लिए लाने पड़ेंगे। और मैं पिछले 3 साल से जब विश्वविद्यालय में कुलपति हूँ तो मैंने कहा कि ऑर्गेनिक सीड पैदा करो। तो फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग हमने शुरू कर दी है, जो कि ऑर्गेनिक सीड पैदा करेंगे, जो हम उसको जो है डिस्ट्रिक्ट को देंगे, जिसमें अल्मोड़ा है, पौड़ी खासतौर से है, और टिहरी का भी कुछ एरिया है। और जो ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें हमारा पूरा जो है उसको प्योरली नेचुरल में रखेंगे। बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कई बार ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग का। मैं यही कहूँगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो हमारे ऑर्गेनिक तौर तरीके से इंटरवेंशन होते हैं उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, जिसमें हम गोबर की खाद है और ये सारे चीज़ें हम उसको करते हैं। और ये बायो पेस्टिसाइड्स का भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो नेचुरल फार्मिंग है उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। अब ये क्यों हो रहा है, मैं क्यों इसको कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ कि अगर आगे आने वाले दिनों में आपने देखा होगा कि लोगों का रुझान बढ़ा है कि ऑर्गेनिक और नेचुरल ही प्रोडक्ट हम इस्तेमाल में लाएं। तो ये सब चीज़ें, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। पन्नगर विश्वविद्यालय इसमें जितने भी ट्रेनिंग है, जैसे ऑर्गेनिक का है, जैसे जिसमें हमारे पूरे आते हैं, जैसे मधुमक्खी पालन है हमारा, हॉर्टिकल्चर में ट्रेनिंग है हमारे, कृषि विज्ञान केंद्र हमारे जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा ट्रेनिंग करना, समय समय पर ये सब चीज़ें करना। तो पन्नगर का योगदान इसमें हमेशा रहेगा। और मेरे ख्याल से जिस हिसाब से हम मोटिवेट, और हमारा जो है डेयरी फार्मिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे पलायन हो चुके हैं उसमें जो ज़मीन पड़ी हुई है वहाँ पर, उस ज़मीन को हम फॉडर के लिए इस्तेमाल करेंगे, ऑर्गेनिक फॉडर। और बड़ी डिमांड हो रही है, मैंने देखा कि नीचे अगर आप पन्नगर के आसपास भी जाएंगे तो ऑर्गेनिक फॉडर की डिमांड हो रही है। इसी ढंग से जो नीचे भी हैं, जैसे मेरठ के आसपास जाएंगे, जो डेयरी है वो ऑर्गेनिक फॉडर की ढूंढते हैं। तो ये देखने के लिए हम स्किल डेवलपमेंट में पन्नगर का मुख्य योगदान इसमें होगा। और जिससे कि और समय समय पर जो भी हम सीड पैदा करना है, जो नो हाउ करना है, उसको जो हनी में हमें योगदान देना है, तो उसमें पन्नगर विश्वविद्यालय लगातार इस दिशा में कार्यरत है। और आगे इसको, ताकि हमारा हो
हिमालयन कॉरिडोर जो हमारा सपना है ये सच होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच चौहान जी, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पर, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे पूरे हिमालयन रीजन का एक बहुत बैकबोन है, तो आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और इन चीज़ों को हम लोग नोट करेंगे। आई होप आवर reporters are making note of all the suggestions. Now I'll request Professor Pandey to kindly give his brief remarks about his ideas of cooperation for resilient Himalaya and developing the Himalayan corridor. Thank you, sir. Thank you very much. हम सबके परम श्रद्धेय और हम सबके संरक्षक, अब पूरे देश के लिए गर्व के लिए परम आदरणीय कोश्यारी साहब, सचमुच में सर आपके साथ डायस पर बैठना बड़े सौभाग्य की बात है। हम आपको तहे दिल से श्रद्धेय प्रणाम करते हैं। क्षेत्र के एमएलए किशोर उपाध्याय जी, वाइस चांसलर जीबी पंत यूनिवर्सिटी प्रोफेसर चौहान साहब, इस कॉन्फ्रेंस के कन्वेनर श्री पंत साहब एंड माननीय प्रहलाद अधिकारी जी, डॉक्टर जी.एस. रावत साहब, डॉक्टर मनोज पंत जी और इस सभागार में बैठे हुए हम सबके प्रेरणा स्रोत और हम सबके गुरु प्रोफेसर विनोद के शर्मा सर, जिन्होंने भारत देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे संस्था के संस्थापक रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं इसमें, प्रोफेसर जोशी साहब जेएनयू में प्रोफेसर हैं, हिमालय पर बहुत काम कर रहे हैं जोशी साहब, और हम सबके लिए बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। दिल्ली में रहते हुए भी हिमालय पर दिल से जो काम कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिया से आए हुए प्रोफेसर रिचर्ड जॉनसन साहब, हु इज़ वर्किंग विद द कोलैबोरेशन विद द जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन स्टडी। और साथ में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, हिमालयन कॉरिडोर। साथियों, कॉरिडोर होता क्यों है? इफ यू सी द कॉन्सेप्ट राइट एट द टाइम ऑफ आवर लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो सबसे पहले भारतमाला प्रोजेक्ट लाए, नेशनल कॉरिडोर प्रोजेक्ट लाए। कॉरिडोर होता क्यों है? इट इज़ ए लिंकेजेस बिटवीन द डेवलप्ड एरियाज एंड अंडर डेवलप्ड एरिया सो दैट एंटायर कंट्री कैन बी डेवलप। हमारा एक बाह बड़ा मजबूत, दूसरा कमज़ोर है तो शरीर मजबूत नहीं हो सकता। वी नीड ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री टू बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ। सिमिलरली उत्तराखंड, दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ सर। हिमाचल प्रदेश से एक इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर लगे, परमानेंट फैकल्टी मेंबर लगे। 5-6 महीने बाद वो अपनी जॉब छोड़कर हिमाचल वापस चले गए। मैंने पूछा क्यों जा रहे हो यार? कहा यार हम इससे ज़्यादा अपने हम सेब के खेत में कमा लेते हैं, यहाँ क्यों टाइम बर्बाद करेंगे, दिल्ली के पोल्यूशन में क्यों रहेंगे। एक वो भी स्टेट है। एक यहाँ उठाकर देखिए तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस हॉस्टल में मैं प्रोवोस्ट हूँ, इंटरनेशनल हॉस्टल में, वहाँ कम से कम 12 कर्मचारी हैं मेस में, 12 में से 10 अकेले उत्तराखंड के हैं। तो बड़ी गंभीर विषय है सोचने वाले कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर पलायन क्यों हुआ। सर ने बिल्कुल सही बताया, जब तक हम आर्थिक समृद्धि नहीं लाएंगे तब तक लोग पलायन करते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि जो लोकल लोग हैं, किसान हो, ग्रामीण निवासी हों, हर जगह एक समृद्धि आनी चाहिए। ये समृद्धि कॉरिडोर के माध्यम से ही आएगा, चाहे वो कल्चरल कॉरिडोर हो, चाहे बायोलॉजिकल कॉरिडोर हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे वो इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, हर तरह से। और जिस तरह से उत्तराखंड इस समय प्रगति कर रहा है, खास करके जो विलेज टूरिज्म डेवलप हुआ है, होम स्टे इकोनॉमी डेवलप हुआ है, साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर डेवलप हो रहे हैं। कितना आसान होता है दिल्ली से मनाली पहुंचना। दिल्ली से मनाली जाने में कोई नहीं खींच सकता, क्योंकि यहाँ पर लाखों बसें चल रही हैं, एक से एक लग्जरी बसें चल रही हैं। लेकिन वही दिल्ली से जब किसी को आना होता है अल्मोड़ा, तो 10 बार सोचते हैं, क्योंकि ये उतना लंबे रूट का अच्छी लग्जरी बसें नहीं हो पाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना होगा। साथ में वी हैव टू थिंक ओवर सर कि हमें बॉर्डर एरिया का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हमें ध्यान रखना कि हमारे पड़ोस में उत्तराखंड के पड़ोस में चाइना है। वी हैव टू enrich our border areas also so that we can challenge any issue in the future.
तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम सब लोग सुनेंगे। कोश्यारी साहब को ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, लेकिन इसके लिए, इस सत्र के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छा है। और ये कॉरिडोर के माध्यम से उत्तराखंड हमारा और समृद्ध हो, हम बार बार आएँ उत्तराखंड में और समृद्धि को देखें, यही मेरी शुभकामना। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने कही कि कॉरिडोर को बड़े लार्जर पर्सपेक्टिव पे हमको देखना पड़ेगा, चाहे इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन और चीज़ें हों। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय विधायक श्री किशोर उपाध्याय जी से, वो अपने विचार संक्षेप में रखने की कृपा करें। मान्यवर, ये हिमालय कॉरिडोर और कैसे उत्तराखंड इसको आगे बढ़ाए, इस पे अपने विचार अगर आप साझा कर दें। एक बार भारत माता की, भारत माता की। हमारे मंच पर विराजमान और हम सबके संरक्षक, आप मेरे तो तब भी संरक्षक थे जब मैं इस पार्टी में नहीं था, और हम दोनों, मेरा सौभाग्य रहा कि जो पहली निर्वाचित विधानसभा बनी, मुझे कोश्यारी जी के चरणों में बहुत कुछ विधानसभा में सीखने को मिला। और हमेशा आप कोई भी नवाचार या कुछ अलग करता है तो उसको आशीर्वाद देते हैं। तो मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ इस मंच पर। हमारे मनोज जी से लेकर के आप तक जितने हमारे विद्वान जन यहाँ बैठे हैं, मैं तो शिक्षार्थी हूँ, किशोर हूँ, तो इसलिए शिक्षा ग्रहण करता रहूँगा जीवन भर। और सामने भी हमारे बहुत विद्वान सब लोग बैठे हुए। मैं नाम के औपचारिकता में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत बधाई देता हूँ। मैं बधाई इसलिए भी देता हूँ कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, ये रजत वर्ष चल रहा है हमारा उत्तराखंड का, उस उत्तराखंड आंदोलन को आरंभ करवाने में मेरी भी गिलहरी जैसी भूमिका रही। तो ये 25 वर्षों के उपरांत उन्होंने एक वैश्विक और पूरे विश्व में जो आपदाओं से संबंधित विषय हैं, 3 दिन का यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया है। एक छोटे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं पंत साहब से, दुर्गेश जी से, और वैसे भी आज नवमी है और इस समय तो 2-3 जगह जो है दुर्गा पूजा भी हो रही थी और वो दुर्गेश हैं, तो इस हिमालय और उत्तराखंड को, वे दुर्ग के ईश हैं, तो उसकी रक्षा करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं आपको भी बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन जो सस्टेनेबिलिटी और हिमालयन कॉरिडोर की आपने बात की है, क्योंकि मैं इससे बहुत आज से नहीं, 88 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। 91 और 92 में तो मैं एंटायर प्लानिंग कमीशन को टिहरी और उत्तरकाशी लाया था। लेकिन जो सस्टेनेबिलिटी की आपने यहाँ पर बात की है, मेरे विचार से हम उस पर सोचते नहीं। और एक ग्राफिक जो एरा जो विश्वविद्यालय है, मैं तो शुरू से जो है इसके जो संस्थापक हैं उनके संघर्ष को भी देखा है। मैं परसों एक इसी तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हिमालय पर दिल्ली में भी था, और मुझे परसों ही जो है दुर्गेश जी ने बताया कि आपने कोश्यारी जी के संरक्षण में यहाँ कुछ सीखने के लिए आना है। एक्चुअली क्या है जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपका 5-7 मिनट का समय लूँगा। तो एक बड़ी भारी जो है अच्छी वहाँ पर एक मीटिंग थी, उसमें मुरली मनोहर जी और डॉक्टर करण सिंह दोनों थे।
और वो थी हैबिटेट सेंटर में। सब कह रहे थे कि साहब जो है, जैसे मेरे कुछ मतभेद भी रहे, कोश्यारी जी से मतभेद रहे टिहरी बांध के बारे में। मैं नहीं चाहता था, इसलिए नहीं कि टिहरी बांध जो है वो कोई दूसरे कारणों से सुप्रीम कोर्ट तक भी गया मैं, न बने, इसलिए कि उससे हमारी एक आध्यात्मिक, धार्मिक, और सबके मन में होता है कि शरीर छूटने के बाद एक मुट्ठी राख जो है वो गंगा में पहुँचे। तो सब कह रहे थे वहाँ सड़क नहीं बननी चाहिए, वहाँ बांध नहीं बनना चाहिए, वहाँ रेल नहीं जानी चाहिए, वहाँ एयरपोर्ट नहीं बनने चाहिए। मैंने कहा तुम बहुत अच्छी बात कह रहे हो यहाँ, लेकिन ये जो हैबिटेट सेंटर बना है, जब मैं 81 में था पीएम के साथ, और जब हमने एशियाड 82 आयोजित किया, मैंने कहा हैबिटेट सेंटर और आईआईसी जो है दोनों, मैंने कहा यार कृपा करो इसको हटा करके और यहाँ पेड़ लगाना शुरू करो। मतलब दिल्ली में, मेरठ में, गाजियाबाद में, मुंबई में, मद्रास में, चेन्नई में, वहाँ सब कुछ होगा। सारे के सारी चीज़ें आप हमारे ऊपर थोप दोगे कि किशोर उपाध्याय अगर 30 किलोमीटर पैदल चलता है तो उसको ज़िंदगी भर पैदल ही चलता रहे। सबसे बड़ा भारत को, आप सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी के लिए यहीं पर जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जरा 3-4 मिनट के लिए अपनी सांस रोक करके दिखा दो। सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए ना, कोविड ने दिखाया ना आपको। फिर हमारे गुरुजी को पता है, मैंने अल्टीमेटम दे दिया अपने छोटे भाई निशंक जी को। मैं भूख हड़ताल पर था, मैंने कहा भाई अब तो मैं पानी पीना छोड़ दूंगा। सारे डॉक्टर्स आए, उन्होंने कहा किशोर उपाध्याय ऐसा मत करना, मैक्सिमम 3 दिन 4 दिन, नहीं तो एनी वाइटल ऑर्गन विल फेल, किडनी विल फेल सबसे पहले। तो 3-4 दिन से ज़्यादा तो जिंदा नहीं रह सकते हो ना। तो 73% हमारा उत्तराखंड इस देश को आपा ददाति जीवनम, जल देने का काम करता है। अगर आप नहीं हैं तो ये देश भी नहीं है। और उसके बाद मैंने कहा भाई हमारे श्रीदेव सुमन जी तो 84 दिन तक रहे, अपने वर्तमान को उन्होंने हमारे भविष्य के लिए कुर्बान कर दिया। तो मैंने कहा बिना खाए मैं कितने दिन रह सकता हूँ? बोले मैक्सिमम 90 दिन। तो हमारा फोकस किस पर है कि साहब बहुत बढ़िया जो है किशोर उपाध्याय जैकेट पहना रही, इसमें अगर मान लो पानी ना हो और 4 दिन आपको बंद कर लें तो क्या इसको पियोगे क्या? तो हमको सबसे पहले, जैसे पुष्कर सिंह धामी जी ने एक फोकस किया हिमालय पे, हमने जब ये हिमालय बचाओ वाला कार्यक्रम किया था तो दिल्ली में हमने एक कार्यक्रम किया था, उसमें हमने कहा कि भाई एक हिमालय दिवस होना चाहिए। उसमें डॉक्टर जोशी भी थे, बहुत लोग थे, लगभग 700-800 लोग थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। और फिर ये हुआ कि 9 सितंबर को हम जो है वो हिमालय दिवस मनाएंगे। और इस बार के हिमालय दिवस में जिसकी चर्चा आपने अभी की है, वो हिमालय परिषद बनाने की, मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का। मैंने उनके कान में कहा, मैंने कहा ये सब दिवस मनाते रहेंगे लेकिन कुछ आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा जो कनेक्ट कर सके, जो आपने कॉरिडोर की बात की है, जो जम्मू कश्मीर से लेकर के, जब मैंने और सुंदरलाल बागुना जी ने जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक की यात्रा की, तो मैंने कहा इन सब को जोड़ी। पहले उसमें हिमालयन जो हमारे स्टेट्स हैं उनको जोड़े, फिर हमारे जो हिमालयन जो देश हैं, प्रदेश, और उसके बाद देश। और हिमालय तो सबका है। जो अभी सबसे बड़ी आपके सामने जो त्रासदी आने वाली है, आपदा का ये कार्यक्रम उसी का एक अंग है। आप सोचो कि जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं, यहाँ तो बहुत वैज्ञानिक मैं देख रहा हूँ बैठे हुए हैं, कि 2050 में गंगा में एक बूंद पानी नहीं होगा और हिमालय पर एक बूंद बर्फ़ नहीं होगी। तो ये जो पीछे बच्चे बैठे हुए, जो यहाँ कुछ हैं मेरे ख्याल से बैठे हुए, जो यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो इनकी चेहरे की तरफ देखिए और इनके जो बच्चे होंगे उनके चेहरों के बारे में सोचिए। तो इतना बड़ा जो आपने यहाँ पर ये वर्ल्ड समिट ऑन डिसास्टर मैनेजमेंट 2025 का किया है, तो सबसे बड़ी त्रासदी तो ये आने वाली, अगर पानी नहीं होगा तो फिर कोई भी कैसे बचेगा।
तो उससे बड़ी त्रासदी तो कोई दूसरी नहीं हो सकती है। तो मेरे विचार से आज मैं बहुत आभारी हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि कोश्यारी जी का जो अनुभव है, उनका अनुभव यहाँ हिमालय से लेकर के और जो समुद्र है मुंबई से लेकर के पूरे देश और पूरे विश्व में है, तो हम उनको सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपने मुझे यहाँ पर अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरी बातों पर विचार भी करेंगे। अगर मैंने कुछ भाई थोड़ा कड़वा भी कह दिया होगा तो ये तो मेरा अधिकार है किशोर होने के नाते, तो मुझे क्षमा भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं एक सेकंड, मैंने एक बार सीएम साहब से कहा, मैंने कहा भाई आप मन में ये क्यों नहीं सोचते हो, हम ये क्यों सोचते हैं। मैं कोश्यारी जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, हम ये क्यों सोचते हैं कि हम छोटे राज्य हैं, हमारे खाली 5 सांसद हैं। अरे मैंने कहा आपसे शक्तिशाली कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर नहीं है, कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है जो 73% भारत की जनता को जीवन देने का काम कर रहा है। पर ये गौरव हमको अपने मन में धारण करेगा, तब वो चीज़ें फलीभूत होंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा सौभाग्य है कि मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी को, महामहिम पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र को, सर 15 मिनट तक, उससे 15-20 मिनट तक आपके आशीर्वाद सर, आप बहुत कुछ कनेक्ट करेंगे ये हमें पता है सर, तो आपका आशीर्वाद। नहीं, इतना तो क्या है। आपको शायद इनको भी समय की सीमाओं में कैसे बांध सकते हैं। आज सबसे पहले तो आप सबको बधाई कि आप सब हिंदी में बोल रहे हैं। एक आधे हमारे विदेश के हैं तो दे मे नॉट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर स्पीकिंग यार, पर मेजॉरिटी को तो हिंदी आती है। तो इसलिए तो सबसे पहले तो इस समिट की सफलता की मैं इसीलिए बधाई देता हूँ। आज यूकॉस्ट उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और ग्राफिकारा की ओर से आयोजित इस वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट तथा कोऑपरेशन फॉर रेजिलेंट हिमालयन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द हिमालयन कॉरिडोर, इस परिसंवाद में यहाँ पर उपस्थित हमारे भाई विधायक श्रीमान किशोर उपाध्याय जी, अपने वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी, मैं सोच रहा था बिंदेश्वरी पांडे कुछ और बोलेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए, हम तो छोटी जगह के हैं, वहाँ अल्मोड़ा खतियाड़ी यूनिवर्सिटी मानी कॉलेज से पढ़े हैं, तो कुछ और बोलेंगे तो सीखेंगे। तो मैं तो आया इसीलिए था, पहले मैं पीछे बैठा पीछे लिए था, आप लोग कुछ बोले कुछ मैं भी सीखूं, क्योंकि सीखने का तो कोई अंतर नहीं है। पर पांडे जी ने कम बोला। भाई दुर्गेश यहाँ पर है नहीं, दुर्गेश जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी मित्रों, छात्र भी हैं यहाँ, स्टूडेंट्स भी हैं कुछ, अच्छा जी यहाँ कुछ हैं। आप सबको मैं इस कॉन्क्लेव के लिए, इस सेमिनार के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक प्रार्थना की, मैं मास्टर रहा हूँ और यहाँ ये यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर और प्रोफेसर्स हैं, तो ये कभी प्रोफेसर लोग किसी भी स्टूडेंट को डांटते नहीं हैं। अगर वो आपस में बोलने लगे बच्चे तो प्रोफेसर डांटेगा नहीं, क्योंकि उसकी उम्र के हम उम्र होते हैं बराबर, तो डरते हैं। अब मैं चूँकि प्राइमरी का मास्टर रहा हूँ तो मेरी आदत है कि बीच में अगर कोई बोले, कोई खड़े होके जाए तो मैं तुरंत डांटता हूँ, मैं बोलना भी बंद कर देता हूँ। नहीं वो जा रही ठीक है, बोर हो जाओ इससे तो पहले चले जाएं, ठीक है। तो इससे पहला बिंदु ये है कि जितना बड़ा विषय है, जितना इम्पोर्टेंट विषय है,
उस इम्पोर्टेंट विषय में सबसे पहला काम क्या है कि हम अगर उस पर चर्चा कर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं भी आ रहा है, हमको लगता है अरे ये बोलने वाला क्या बोल रहा है, हम तो इससे ज़्यादा जानते हैं. And many of you knowing more than Bhagat Singh Koshari, because you are young, you are latest, you have got the latest knowledge. So I don't have got the I don't know about AI. What is AI? I only know AI means Adhyatmic intelligence. So इसलिए that I do not know. मैं WhatsApp चलाना भी नहीं जानता हूँ, मैंने कहा नहीं चलाऊँगा. तो आप सब लोग वैज्ञानिक हैं और नए ज़माने के वैज्ञानिक तो छोड़िए, छोटे छोटे बच्चे आजकल यानी कितनी चीज़ें जानते हैं. तो इसलिए मेरे बोलने में जितनी देर बोलूं, बोर भी हो जाओ तो थोड़ा बैठे रहिएगा तो अच्छा लगेगा मुझे. मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले मैं कवि कुलगुरु कालिदास जी को उद्धृत करना चाहूँगा. कालिदास जी कहते हैं आज से 2000 साल से ज़्यादा पहले पैदा हुए हैं. तो उस समय कालिदास कहते हैं, कालिदास वॉज नॉट बॉर्न इन उत्तराखंड और इन कश्मीर और इन अरुणाचल. कालिदास वॉज बॉर्न इन उज्जैन और समवेयर देयर. लेकिन वो क्या कहते हैं अपने उसकी किताब के प्रारंभ में, अस्तुत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वोपरयस्य तोय निधि होगाय स्थितः पृथिव्याम यो मानदंडा. ऐसा लगता है कि ये क्या है, हिमालय ये देवतात्मा है, इट्स डिवाइन. आप जब डिविनिटी जोड़ देते हो, जब किसी को आप केवल मट्टी पत्थर और बर्फ नहीं समझते हो, and you think that Himalaya is not merely some soil, some earth, not merely some snow or this and that, but it is a divine thing given by God to us. तो आपका भाव एकदम बदल जाएगा. आप तब ये सोचेंगे कि हिमालय के प्रति मेरी क्या कर्तव्य होना चाहिए. व्हाट शुड बी माई ड्यूटी फॉर हिमालय, सेविंग द हिमालयाज. तो आपके चिंतन में अंतर आ जाएगा. वन यू थिंक इट एज ए ओनली सिंपली एज ए मटेरियल प्रोडक्ट ऑफ द गॉड और व्हाटएवर दैट बी, तो फिर आपके चिंतन में, आपके थिंकिंग में वो बात आएगी नहीं. तो इसीलिए मुझे लगता है कि जब हम हिमालय की चर्चा करें तो सबसे पहले कालिदास जी के उस जमाने में, आज तो दुनिया में people coming all over the world are coming to Himalayas for the last more than 200 years or so. और शायद हिमालय पर the westerners have done more work than our own Indian people इसलिए 150-200 सालों में. तो लेकिन तब जरा बताइए कि 2000 साल पहले जहाँ आने जाने का कोई साधन नहीं थे, तब हिमालय के बारे में लिखना और उसको पृथिव्याम मानदंडा, माने ये दुनिया का, वर्ल्ड का इस स्टैंडर्ड, एक प्रकार का ये सब जो पृथ्वी का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो मानदंड ये हिमालय है. तो और जस्ट इमेजिन, इवन बिफोर कालिदास, द फर्स्ट इंडियन पोएट Valmiki, those who wrote, or they never wrote Vedas, those who saw the mantras of Vedas, they are quite different. And after these Vedas, Upanishads, for the first time came as a poet, Valmiki. He wrote Ramayana. And in Ramayana, क्या बोलते हैं वाल्मीकि जी, रामचंद्र जी की जब प्रशंसा हुआ, गुण बोलते हैं, नारद से बोलते हैं भाई ये गुण, ये गुण, ये गुण, ये गुण किस में होने चाहिए, 100 गुण चीज़ें पूछते हैं वो. तो उसमें से वो एक चीज़ ये बोलते पूछते हैं कि समुद्र यु गांभीर्य
धैर्येण हिमवान युवा, कि व्यक्ति के अंदर, एंड एवरी वन ऑफ यू शुड ट्राई टू हैव दिस वन, समुद्र युग गांभीर्य, यानी इन ग्रेविटी, दैट लीडर शुड बी लाइक द ओशन, like the sea, and in resilience, in patience, he should be like the Himalayas. अब ये वाल्मीकि कहते हैं, और आज से 1200 साल पहले दक्षिण में पैदा हुए तमिल में लिखने वाले कंब ने भी अपने रामायण में हिमालय का वर्णन किया है। तो ये मैंने इसलिए कहा कि हमको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जरूर समझना चाहिए। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द पास्ट एंड इफ यू डू नॉट टेक प्रॉपर एक्शंस इन द प्रेजेंट, देन द फ्यूचर विल बी डार्क। इसलिए अतीत से कुछ सीख करके जब वर्तमान के कदम लेना, तो हिमालय का इशारा ऐसा वर्णन मैंने थोड़ा आपको इसलिए सुनाया कि उपाध्याय जी नोट कर लेंगे तो अपने भाषणों में भी बोल सकते हो, अच्छा लगेगा। उपाध्याय हो, तुम तो पंडित आदमी हो। अब मैं, मुश्किल है कि वैसे भी आजकल कम बोलता हूँ, इन्होंने कहा और कम बोलो। आजकल जो ये इन्होंने सब्जेक्ट दिया है, कॉपरेशन फॉर रेजिलेंट हिमालयाज एंड द डेवलपमेंट ऑफ हिमालयन कॉरिडोर। अब ये पहले शब्द है इसमें कॉपरेशन है, प्रेजेंट सब्जेक्ट, द टुडे सब्जेक्ट, इट इज द कॉपरेशन फॉर रेजिलेंट हिमालयन एंड डेवलपमेंट ऑफ हिमालयाज, हिमालयन कॉरिडोर। तो जो कॉपरेशन है, आप कितने ही बड़े क्यों न हो, यदि आप दूसरे का कॉपरेशन नहीं ले सकते हो तो आप जिंदा नहीं रह सकते हो। ट्रंप महोदय कितनी टीक हाँक ले वहां से, ये समझ लो कि अकेला चना भाड़ नहीं हो सकता, तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यू नीड द कॉपरेशन। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारे दुनिया की देशों ने देखा, यार हम लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, ये गांधी अच्छा है, बिना हथियार के ही जो है ये आज़ादी लेने की तैयारी में बैठा है, तो हमको भी जरा इकट्ठा होना चाहिए। जो हमारे संतों ने, कवियों ने कहा, थोड़ा विस्तार हो जाए तो ज़्यादा वो तो नहीं, टाइम दूसरा आपका, क्योंकि मैं 5 मिनट में भी ख़त्म कर सकता हूँ। मेरे को ये आदत है कम बोलने की। तो उस समय फिर उन्होंने कहा दुनिया के देशों सब एक उसमें बनो, तब जा करके यूएनओ की स्थापना की गई, ताकि हम एक जगह बैठें, एक जगह के विचार करें, और विचार केवल कि मेरा राज्य कैसे डेवलप करे इसलिए नहीं, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। यूएन में हर विषय पर चर्चा होती है, जैसे आपके COP3 अभी हुआ है 30, चलता है ऐसे। और जब मैं यूएन में बोलने के लिए मुझे भेजा गया तो मेरे को सब्जेक्ट दिया गया ट्रैफिकिंग, तो आई स्पोक अबाउट ट्रैफिकिंग यूएन। भेजते हैं, मनमोहन सिंह जी ने भेज दिया, मनमोहन सिंह जी यहाँ भी बैठे हैं, तो वो मनमोहन सिंह जी हम नहीं है, पर उन्होंने मुझे वहाँ भेजा, तब मैं आज मेंबर पार्लियामेंट था। तो बस चर्चा होती है। तो इसलिए ये जो कॉपरेशन की बात शुरू की है, जो आज का मेन विषय होना चाहिए कि विदाउट कॉपरेशन यू कांट डू एनीथिंग। तो कॉपरेशन में क्या है, अब मैंने आपको वाल्मीकि को उद्धृत किया, मैंने आपको कालिदास को उद्धृत किया। तो हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है वेदों का। एक बार इसको इंदिरा जी ने यूएन में भी आके वेस्ट में बोला था, और अटल जी और ये लोग तो बोलते रहते हैं, संगच्छद्वम संबद्धम सन्नो मनांसी जानदान।
अर्थात लेट अस स्पीक टुगेदर, लेट अस गो टुगेदर, लेट अस थिंक टुगेदर। यानी हम सब साथ चलें, साथ साथ बोलें, साथ साथ काम करें। ये वेद ने आज से 5000 साल पहले बोला है, और यूएन तो अभी अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए। तो ये जो चिंतन है, आप जैसे लोग, आप में से अधिकांश साइंटिस्ट होंगे, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर साइंटिस्ट, ऑल ऑफ यू, यस, some studying what you call art or commerce or this and that, जो भी हो। तो हमारे ये जो ऋषि बोल गए कि हम लोग साथ साथ रहें, साथ साथ करें, साथ साथ काम करें। अब हम दुनिया को साथ तो तब लाएंगे ना जब हम पहले साथ हों सब लोग। हमारी दिक्कत क्या है? हम मास्टर हैं, संघ बनाते हैं, उसके भी 2 धड़े होते हैं। हम प्रोफेसर हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, उसके भी 2 धड़े होते हैं। क्यों दुर्गेश जी, इजंट इट? ऐसा ही है? हम एडवोकेट्स हैं तो भी हमारे अलग अलग धड़े बन जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हाउ टू कोऑपरेट, वी शुड नो दिस। उसके लिए क्या करना होगा? मेरे IAS अफसर, मैं उनको बहुत से कहता हूँ, यू आर द क्रीम ऑफ आवर कंट्री, लेकिन क्या करें? तुम्हारा ईगो इतना अधिक होता है, करे कराई पर पानी फेर देते हो। बोलता हूँ, अभी नहीं, जब मैं बहुत छोटा था तब भी बोलता था, क्योंकि ये दुर्गा जी जानता है कि मुझे बोलने में कहीं जरा संकोच नहीं। जैसे उपाध्याय जी फट 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 कुछ भी बोल देते, ऐसे मैं भी कुछ भी बोल देता हूँ। तो हम लोग हिमालय बचाने की बात, हिमालय कॉरिडोर बनाने की बात करते हैं, तो उसका बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि, वी मस्ट नो द बैकग्राउंड। तो इसलिए अगर आप फ़ोन थोड़ा बंद कर दोगी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर मैं ही मौन हो जाऊंगा। तो हम सब लोग साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, थिंकर हैं। हम लोगों का जो थिंकिंग है, यानी सोक्रेटिस और प्लेटो तो कह गए हैं, अरिस्टोटल, कि द किंग शुड बी ए फिलोसोफर किंग, यानी जिसका चिंतन हो, आगे विचार हो, जो आज की नहीं। हम राजनेताओं, मैंने तो राजनीति छोड़ दी है, हमारे उपाध्याय जी हैं, तो जैसे राजनीतिज्ञ, द पॉलिटिशियन थिंक्स फॉर नेक्स्ट 5 years कि भैया अगली बार कैसे जीतूंगा, टिकट कैसे मिलेगा। एंड द स्टेट्समैन थिंक्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो मैं बहुत बार कहता हूं कि हमारे पॉलिटिशियन पूरे नेहरू जी, मोदी जी जैसे स्टेट्समैन न बने तो कुछ तो भी, तो चर्चिल जैसे न बने तो कुछ तो स्टेट्समैन सीखो, मैनशिप सीखो। तो हम आगे, इसलिए हमारा काम, जब हम हिमालय की बात बोलते हैं तो जिसको होलिस्टिक अप्रोच आजकल आप लोग बोलते हैं, तो ऐसा एक होलिस्टिक अप्रोच, ऐसा समग्र चिंतन, ये अगर हम करेंगे। अब उसका एक छोटा उदाहरण देता हूँ, बात भाटा लंबा हो जाएगा। अभी मुझे एक पत्रकार ने कहा, बोले आपके गुरु डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और आपके राजा कर्ण सिंह, शायद तुम भी हो गए उसमें, बोले ऐसे जजेस फला ने लिख के दे दिया कि ये हिमालय में जो डेवलपमेंट का काम है ये ख़त्म हो जाने चाहिए, इससे नुकसान हो रहा है। तो मैंने कहा उनसे बड़ा थोड़ी हूँ मैं, उनके तो चरण की धूल भी नहीं हूँ मैं। जब उन्होंने कहा तो ठीक ही कहा होगा, पर नचिकेता तो ऐसा था कि बाप ने ये क्वेश्चन करता रहा, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट नचिकेता, कम जानते हो, कोशिश करो नचिकेता के बारे में जानने के लिए।
पूछता रहा, बाप तंग आ गया। ही आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस कि उसका बाप तंग आ गया। उसने कहा लो मैं तुझे यमराज को दे देता हूँ। नचिकेता वॉज सेंट टू यमराज, द गॉड ऑफ डेथ। वहाँ गया। अब वहाँ उसने यमराज से ऐसे तर्क के उसने कहा नचिकेता मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, जा वापिस चले जा, तू जहाँ से आया है और मांग क्या मांगता है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं ये चीज़ें हैं, पर लास्ट में जरा मेरा बाप गुस्सा में हो, इतना ध्यान रख लेना। ये मैंने इसलिए कहा कि हमारे यहाँ इंक्विजिटिवनेस कितनी होनी चाहिए। हम लोग जब रिसर्च करते हैं, मैं आप लोगों के रिसर्च बुक्स कभी लोग देते हैं, तो मतलब वो नीचे रेफरेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि मुझे डर लगता है कि इतने रेफरेंसेस, इतने किताबें आप लोगों ने पढ़ी एक पीएचडी करने के लिए, तो आपको तो उतनी बात तो भगवान ही मिल जाना चाहिए थी, इतनी किताबें पढ़ ली तो इसलिए whatever little मेरा जो होना चाहिए, the humble effort, whatever I can do to whether I am doing it or not। बात बड़ी बड़ी हम कर देंगे, भाषण दे देंगे, व्याख्यान कर देंगे। मैं अगर आपसे कहूँ चलो मेरे साथ, अभी मैं 18,000 फीट मंगड़ा पे गया था 84 ईयर्स में, आपसे कहूँ चलो जरा, तो पहले बोलेंगे सर जरा उसका ऑक्सीजन का इंतजाम करिए, ये कहीं सांस चली न जाए। तो हम सब लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डू इट विथ फुल डेडिकेशन, फुल डिवोशन एंड विथ डिसिप्लिन। जब हम इस लाइन पर आप चलेंगे, वैसे मैं इतना भाषण आपको नहीं देता, बट बिकॉज यू आर ऑल ऋषिज। मुझे जब मैं गवर्नर था तो नागपुर में ऑल इंडिया क्या वर्ल्ड इंटरनेशनल साइंस हुई थी, तो वहाँ भी मैं नहीं बोला। जब टीम को बोलना था तो मैं 3-4 ही मिनट बोला। तो मैंने कहा ऑल यू साइंटिस्ट, आई पेन टू यू, आई ट्रिब्यूट माई हम्बल ट्रिब्यूट टू यू ऑल। और यू साइंटिस्ट आर नॉट मेयरली साइंटिस्ट, यू ऑल आर द सीयर्स। आप सब ऋषि हैं। तो ऋषि जैसे दृष्टि देख करके काम करता है, आपकी वो स्थिति है। तो हम उस स्टेज पर आकर के, आजकल तो हिमालय पर बोलना और पर्यावरण पर बोलना, इकोलॉजी पर बोलना, एनवायरनमेंट पर बोलना, इट हैज़ बिकम ए फैशन। जो कुछ भी नहीं जानता, अब जैसे आज के लिए एक नया शब्द आ गया है इकोसिस्टम। कोई मुझे बता सकता है कब इकोसिस्टम शुरू हुआ था? ये शब्द कब आया हमारे इस दुनिया में? इस इकोसिस्टम का शुरू कब हुआ? आई थिंक सम 5 or 6 ईयर बैक है। इनमें भी 1935 में भी है, पर प्रचलन कब हुआ उसका? अभी हुआ ना, तो यू आर तो सीनियर। प्रचलन अभी हुआ। अब अपने टॉम टिक हैरी विल से ओ इसका ये इकोसिस्टम है। कुछ समझते हो इको क्या है, इकोसिस्टम क्या है? तो हम विषयों की गहराई में जाएं तो हिमालय के बारे में हम सबको सोचना है। तो मेरा अपना एक कहना है कि कॉपरेशन, उसके लिए ठीक से सोच करके, ठीक से लोगों को जो हु आर रियली डेडिकेटेड, हु आर रियली इंटरेस्टेड, ऐसे लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। चोर गुंडे फटाफट इकट्ठा हो जाते हैं, भले ऋषि मुनि साइंस वो वाले लोग इकट्ठा नहीं होते। हाँ, मैंने देखा साइंटिस्ट भी आपस में लड़ते हैं। हाँ राउत, हाँ तो इसलिए हम सब लोग ये जो मैंने बेसिक प्रिंसिपल बताए, इस प्रिंसिपल से आगे बढ़ कर के फिर देन आप अगर चलेंगे तो फिर हम जो भी एजेंडा बनाएंगे और जो भी टेक्निक हम बनाएंगे, तो वो टेक्निक हमारी, वो एजेंडा हमारा सफल होगा। और जैसे दुनिया ने कहा कि भाई बहुत ही प्रदूषण हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो माने मोदी का कमाल देखो। इसलिए नहीं कि मैं उसकी पार्टी में रहा और उससे मुझे गवर्नर बना दिया। मैं गवर्नर कुछ नहीं मानता हूँ, ठीक है नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ
आदमी को पहले आदमी होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए। यदि आप मनुष्य नहीं है, आप इफ़ यू आर नॉट ए मैन, व्हाट एवर यू आर नथिंग। कितने हाई पोस्ट पर हो जाओ, हिटलर ने क्या किया, आज ट्रंप भी वही करने जा रहा है। पुतिन अलग बैठा हुआ है, चाइना तो है ही है। तो अपने को, इसलिए हम, मोदी जी ने जैसे कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी, आई डोंट नो वेदर आई एम करेक्ट और नॉट, पर रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, चाहे वो सोलार हो, विंड हो, या इवन आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, आज सोलार में इंडिया ने रिकॉर्ड बना दिया है। इज इट? रिकॉर्ड बना दिया। आप, मोदी जी ने बनाया क्या? बनाया आप लोगों ने, जिसने सोलार पैनल की सृष्टि की होगी। वैसे चिप्स अभी भी आप लोग बाहर से मंगाते हैं, मुझे पता है, लेकिन कुल मिला करके है, मोबाइल हम अभी भी बाहर से मंगाते हैं, पर सबसे मोबाइल ज़्यादा बनते तो हिंदुस्तान में। मोदी ने कहा मैं इसे भी रिकॉर्ड बनाऊंगा, तो सभी में रिकॉर्ड बनाने की उनकी इच्छा है और शक्ति भी है उनमें, वो ईश्वरीय शक्ति है। तो आज हम सब लोग, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ लोगों को बोलता हूँ भाई, ये जैसे मैं पलायन किसी ने बोला ना अभी, तो मैं सबको कहता हूँ चलो वापिस, चलो वापिस। मैं तो गवर्नरशिप छोड़ के वापिस आ गया, रिवर्स माइग्रेशन कर दिया। आप भी कर लेंगी तो अच्छा है। बॉम्बे से दोनों माताएं बैठी हैं, रिवर्स माइग्रेशन। तो यहाँ आने, जिसको आप सतत विकास या व्हाट यू कॉल सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल रहे हो, तो पिछले कुछ वर्षों में हमारा, अगर आप देखेंगे, इतना एक जगह सेब पैदा हो रहा है, कोई कीवी पैदा कर रहा है, कोई कुछ और पैदा कर रहा है। यानी मेरे तो गवर्नर के यहाँ भी जाने कितना बता रहे थे, 1 क्विंटल होगा, कितना होगा, शहद हो गया। और जब भी मैं जाता हूँ शहद देता है मेरा गवर्नर यहाँ का, है, बड़े अच्छे हैं सरदार जी, भले आदमी हैं। तो हम सब लोग अपने अपने स्तर पर, वो गवर्नर है 2 साल बाद चला जाएगा, 1.5 साल बाद चला जाएगा, लेकिन उसने कहा कि नहीं, हमारे जब मनमोहन सिंह जी अपने कृषि विश्वविद्यालय में बी कीपिंग कर रहे हैं, उसने कहा बेटा जरा मेरे यहाँ भी बी कीपिंग करा दे। देखो गवर्नर के यहाँ भी बी कीपिंग हो रही है। तो हम कैसे पर्सनली, इंडिविजुअली, व्हाट कैन यू कंट्रीब्यूट, व्हाट कैन आई कंट्रीब्यूट, तो इस दिशा में अगर सोचेंगे तो मुझे लगता है कि आप खुद ही इतना अच्छा काम कर लेंगे। जहाँ तक भाई आपके हिमालय का सवाल है, तो हिमालय आप सभी लोग बोलते इट इज़ वेरी फ्रेजाइल, एवरी अस नो, और आप सभी बोलते हो साइंटिस्ट। मैं तो जानता ना, मैं कोई जियोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ और कोई बड़ा विद्वान भी नहीं हूँ, लेकिन आपके जो रिसर्च करते हैं, जिनका हिमालयन पर अथॉरिटी है, वो सब कहते हैं कि हिमालय इज द यंगेस्ट, बोल दो ना उधर से, बोलोगे नहीं आपस में तो कैसे चलेगा, यंगेस्ट माउंटेन। लेकिन उस यंगेस्ट माउंटेन के साथ, उसकी फ्रेजिलिटी के साथ, बहुत सही है, वो सब बातें सब सही है, जितने भी जियोलॉजिस्ट कह रहे हैं वो सब सही है, लेकिन उस हिमालय के साथ एक ऐसी चीज़ है, हमारे उपाध्याय जी बहुत डरे रहते हैं। आपके जितने जियोलॉजिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी के, बाडिया के, जहाँ के, वो रोज़ लिखते रहते हैं, ये 5 किलोमीटर मिलम चला गया, वो कितना पीछे चला गया ग्लेशियर, फलां चला गया, फलां चला गया। वो कितने ही पीछे चला जाए, जैसे इंडिया, चाहे वो सिकंदर आए, चाहे अंग्रेज आए, चाहे औरंगजेब आए, कोई भी आए, उसके बाद भी क्या आपको लगता नहीं कि इंडिया आज टुडे फिर से जगत गुरु बनने की तैयारी में है? इसलिए कि इसके पास स्पिरिचुअल पावर है। The Prime Minister, the President, our sages, our sons, the saints, they do not go before the Prime Minister. The Prime Minister, the President, they bow before the
ऋषि बिफोर द संत बिफोर द सेंट, ये भारत की परंपरा है, इसलिए आज जिंदा है। इसलिए उपाध्याय जी ये अच्छा है, हिमालय गंगा बहुत अच्छा आपका, परंतु ये कतई डर मत करो कि खत्म हो जाएगा। साइंटिस्ट बोले ठीक है, उनका काम है वो देख रहे हैं इतने सन में ये हुआ, इतने में हुआ, इतना पीछे आ गया, इट इज़ देयर ड्यूटी एंड दे आर डूइंग वेल देयर ड्यूटी है। पर ये हमारा क्या कर्तव्य है कि क्यों खत्म होगा, गया पीछे कोई बात नहीं, हम प्रयास करेंगे। आप लोग जो प्रयास कर रहे हो साइंटिस्ट लोग, हम राजनेता लोग जो हैं राजनीति की पॉलिसी बनाते हैं, वो आप लोगों के हिसाब को जोड़ करके ही बनाते हैं। आपको माइनस करके क्या करेगा राजनेता, है वोट पाले करके थोड़ी काम कर लेगा, उससे तो नहीं होगा। देन वट एवर योर रिसर्च दैट इज वेरी मच वैल्यूएबल। इसलिए हर राजनेता, दुनिया का राजनेता नई नई खोज को बड़ा ऊंचा स्थान देता है। तो मुझे लगता है कि हमारा ये जो एंगस्ट माउंटेन है, ये इट इज़ वेरी वेरी रेजिलेंट मिस्टर दुर्गेश, हाँ इट्स वेरी वेरी रेजिलेंट, नोबडी कैन हार्म इट। उधर से ब्रह्मपुत्र में बना रहे पीछे से कितना ही बड़ा डैम, कुछ नहीं होगा। लोग डरते थे यहाँ गाने बंद कर दिया इनका, क्या भगा दिए इनके टिहरी के लोगों को, तो लोग बोलते ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। और 13 में 2013 में जो डिजास्टर आया, क्लाउड बस्ट हुआ, अगर ये नहीं होता टिहरी डैम तो आधे आपका हरिद्वार जय श्री राम खत्म हो जाता। अब फायदे भी नुकसान तो है ही है, जो बता रहे हैं नुकसान भी है, आई एग्री विद इट। हर एक चीज़ के लाभ होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो हम सब लोग ये कोशिश करें कि हमारा ये जो हिमालय है ये ऑलरेडी रेजिलेंट, मैंने कहा ना पहले शुरू में आपको बताया है कि धैर्य हिमवान युवा, एंड एवरीवन ऑफ अस शुड आल्सो ट्राई इन योर पर्सनल लाइफ आल्सो, डोंट बी इन ए हरी। बहुत बार लड़के बच्चे बहुत अच्छी खोज करते हैं तो कभी तो उनका गुरु ही चोर लेता है, ऐसा भी होता है यहाँ आजकल। प्रोफेसरों में कुछ ऐसे होते हैं गाते, वो बेचारा निराश हो जाता है, ऐसे भी होता है। तो हम जिस चीज़ के पीछे एक मिशन के रूप में लें कि हमें पूरे हिमालय की, मेरा तो संसद में भाषण भी है, प्रस्ताव भी है, उसके बाद उन्होंने कहा, मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी बनाओ। ये तब की बात है जब कांग्रेस का मनमोहन जी का शासन था, राज्यसभा में मैंने बोला है, और उसके बाद उन्होंने किया भी, पर अल्टीमेटली क्या हुआ, 100 करोड़ रुपया वो क्या है कटारमा कोसी उसको दे दिया, बाकी जय श्री राम फिर ख़त्म हो गया आगे को है। तो एक इसके लिए सॉलिड उपाय बताइए कि भाई आप इसी ढंग से करिए, क्योंकि वो आप बता सकते हैं, है ना। आप मत सोचना कि पीएम जो है हर चीज़ अपने बोलते हैं, पीएम तो एक बच्चे की राय को भी मानता है। आप ताजुब करेंगे, मेरा अनुभव है व्यक्तिगत, आप अच्छे राय दीजिए तो हम जो प्रशासक हैं वो भी करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से मेरा इतना निवेदन है भाई, ये बाकी टूरिज़्म, ट्रांसफॉर्मेशन, ये इकोलॉजी, फिकोलॉजी और पॉल्यूशन पर बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा कि हम ही अपने निर्माता हैं, हम ही अपने ख़त्म करने वाले भी हैं। किताब में यही कहा है, आत्म बंधुर आत्म रिपुरेव, आत्मा भी हम, अपने बंधु भी हमें, अच्छे चाहने वाले भी, और अपने दुश्मन भी हमें हैं। ये मान करके चलोगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छा रास्ता आप लोग खोजेंगे, और जो लोग अच्छा रास्ता खोजेंगे उसमें से मुझे लगता है कि भारत ही नहीं सारे विश्व को फ़ायदा होगा। और एक जो आपका सेमिनार किया है, दुर्गेश जी आपको बहुत बहुत मेरी बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और आपके इस सेमिनार से जो भी क्रीम निकले, जो भी अमृत निकले, क्योंकि मोदी जी के शब्दों में हम अमृत काल से चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अपने यहाँ भी यू कोस्ट में तुम्हारे रहते हम लोग अमृत काल को ही पूरा प्राप्त कर लें, ये मैं तुमको शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। We all are
ऑनर, हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं सर आपके बहुत ही सर्वोत्तम वाटर मैंने मतलब अपनी लाइफ में सुना है, आपने हिमालय के बारे में जो बात है। अब मैं अंत में प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी से अनुरोध करूंगा कि वो आकर धन्यवाद ज्ञापन भी कर दें और हाँ, कोई अगर किसी को एक आध प्रश्न है तो एक दो प्रश्न हम ले सकते हैं। प्रश्न अगर वो सब थक गए। हाँ 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 मेरा प्रश्न ये है कि जब हम डिजास्टर की बात करते हैं तो साइंटिस्ट की बात को खूब समझा जाता है। व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी मेकिंग उस समय कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, ये बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है हेमवती जी, यदि आप लोग तय कर लो साइंटिस्ट, कल मैं सोमनाथ जी को सुन रहा था विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में, तो आप लोग सोच लो तो प्रधानमंत्री आपको चंद्रमा में भेजने के लिए पूरा सहयोग देगा और आप लोग कोई सुझाव दो। ठीक है, हमारे जैसे जो छोटे मोटे लोग न समझाएं, पर राजनीति में भी ऐसे लोग हैं जो उसको समझते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इन फ्यूचर कोई ऐसी बात आई तो आप मुझे बता दीजिएगा, ये हमारे बैठे ना राजनेता। ठीक है सर्वोत्तम, मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर पंत से। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको हिमालय की भव्यता का एहसास होता है। आप समझते हैं कि भव्य हिमालय व्यक्तित्व के रूप में, कृतित्व के रूप में किस तरह से सामने और कितना आनंदित करेगा। तो आप माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी को देख लीजिए, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन भर हिमालय को जिया है और अपने जन्म स्थान से लेके पूरे, चाहे उनका दिल्ली का कार्यकाल हो, देहरादून का हो, पूरे प्रवास आवास हो और महाराष्ट्र का हो, उनमें एक जो हिमालय की छवि होती है वो आप हमेशा देख सकते हैं। इसीलिए जिस समय हिमालय की बात आई थी, मैंने डॉक्टर रावत से कहा कि इससे सर्वोत्तम क्या हो सकता है कि हमारे साथ कोश्यारी जी का आशीर्वाद होगा। तो आपका जिस कॉरिडोर का अर्थ ये है श्रीमान कि एक, क्योंकि किशोर उपाध्याय जी ने इस बात को कहा था कि क्यों ना हम ऐसा करें कि समन्वयन की बात करें, जिसकी बात आपने करी, मिलजुल के चलें, बात करें और हिमालय की चर्चा हम क्यों ना करें। सबसे बड़ी बात यह है, हिमालय की चर्चा कौन करेगा विश्व में? सब अपनी अपनी चर्चाएं भी करेंगे, बात ये होगी, लेकिन हिमालय की चर्चा को क्यों नहीं किया जाए, सवाल ये था। तो अगर हिमालय की चर्चा दिल्ली विश्वविद्यालय में डॉक्टर पांडे कर रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद है, आपने समय दिया है, इतना बड़ा आपका शोध रहा है, इतना काम आपने किया है, क्यों नहीं जुड़ सकते। और आज से नहीं, किशोर उपाध्याय जी दशकों से गंगा यमुना हिमालय की बात करते रहे। अब कौन ऐसा व्यक्ति, ये इंसाइक्लोपीडिया अगर इनका कलेक्टिव हिमालयन इन टर्म्स ऑफ, जैसे हम डिजिटल उसको रिपोजिटरी बनाते हैं, तो हिमालयन नॉलेज की रिपोजिटरी बनाई जाए तो वो अपने आप में हज़ारों वर्षों की हो जाएगी, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर विनोद शर्मा बैठे हुए हैं सिक्किम से लेके, आज देखिए कि 50 साल का आपका अनुभव है। आज भी सिक्किम का जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट से लेके जिस तरह से उन्होंने किया, ज़िंदगी भर का है ये जो नॉलेज बेस है। इस तरह से सभी हैं, प्रोफेसर जोशी से लेके प्रोफेसर लोहानी बैठे हुए हैं, तमाम लोगों ने पूरा जीवन इसमें लगाया हुआ है। डॉक्टर मनोज पंत पूरा प्लानिंग में है, डॉक्टर चौहान साहब, सबके अलग अलग डिसिप्लिन हैं, एरिया हैं। डॉक्टर रावत WII से लेके, अगर आप उनको माउंटेन गोट कहा जाता है, कितना उन्होंने चले हैं, गए हैं, ये ट्रेवर्सिंग थ्रू ऑल दीज हिमालयन रूट्स, और जो कॉरिडोर है पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट से लेके इतना काम किया है। तो बात ये थी श्रीमन कि हम उसको कैसे जोड़ सकते हैं, ये बात थी। और अगर उसको जोड़ के हम कोई एक ऐसा कर दें, लाइवलीहुड की एक बात जो कहीं नॉर्थ ईस्ट में चल रही है, कोई अच्छी प्रैक्टिस है, उसको हम क्या यहाँ कर सकते हैं। कश्मीर के आज हमारे, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे
इसमें जो ये पूरा क्योंकि विश्व पलक की बात हो रही है इसमें, हेमवती भाई, पूरे विश्व का कि तो इतने लोग जुड़ रहे हैं, बात हो रही है, हजारों लोग आए हुए हैं। आज भी जो हमारे पास अभी मैं एक सेशन से आया तो उसमें बच्चों के 95 ब्लॉक के बच्चे हैं, उत्तराखंड के 95 ब्लॉक के बच्चे, और उनमें डिजास्टर मैनेजमेंट, हिमालयन इंटेलिजेंस और इसकी क्लाइमेट चेंज और उस पर क्विज चल रहा था। यहाँ 13 टीम आई हुई हैं, अभी 3 टीमों में उनका अभी फाइनल हुआ है, पहली टीम। और अगर आप उनके प्रश्न उत्तर देखें आप अवाक रह जाएंगे जिस तरह की उनकी समझ है। ये छोटे बच्चे हैं। Many a times we wonder, we think we, the so-called elders, we know so much, but we got to learn so much from these youngsters. इतना कुछ है उनके पास। ये कनेक्ट बनाने की बात है कि हम किस तरह से जुड़ें। तो अभी उसमें पहली टीम आई है पौड़ी की, दूसरी चंपावत की, तीसरी रुद्रप्रयाग की, अभी मैं होके आया हूँ उनसे। कमाल की बात है, हज़ारों बच्चे जुड़े हुए हैं। अभी रीमा जी वो कर रही थी तमाम विश्वविद्यालयों में, स्कूल्स में, तो 10,000 वॉलंटियर्स बन रहे हैं जो DRR की बात कर रहे हैं श्रीमन। तो कुल मिला के ये एक बड़ा, मैं उस शब्द को इस्तेमाल करने में डर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से इकोसिस्टम कह रहा हूँ। नहीं, मैं तो ऑन लाइटर साइड, बट नहीं, आप तो आप इंसाइक्लोपीडिया। लेकिन कहने का आशय ये है कि कुल मिला के, और ये बहुत दूर दराज के हिमालय के माणा, मुंशियारी, अस्कोट, आराकोट के वो बच्चे अगर आप देखते तो आप अभिभूत हो जाते। मैं सही बता रहा हूँ, अभी भी आप मिलिएगा उनसे। और समिट का अर्थ ही ये होता है कि हम, ब्राज़ील का आदमी भी आके बात कर रहा है, भूटान के, यूके में, यूके टू यूके कॉरिडोर के, आई वाज टॉकिंग टू हिम व्हाइल आई वाज, व्हाई कांट वी डू दैट? इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ड। कितना छोटा प्लेनेट है, 35-36 हज़ार रुपये का रेडियस इसमें देखें इक्वेटोर में, और अगर पोल्स में देखिए और भी कम है, बहुत छोटा है। इथियोपिया में अगर कहीं पर हमारा वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो वो डेली इम्पैक्ट कर रहा है और यहाँ भी इम्पैक्ट कर रहा है। इतना छोटा है, उसमें अगर हम म्यूचुअल कोऑपरेशन की अगर हम बात नहीं कर रहे हैं तो बेकार हो गया, कुछ भी नहीं है। और पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन बहुत थोड़ा समय रहा है। वो बिल्कुल ठीक आपका था, अनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः, लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल अराउंड एवरीवेयर। क्यों नहीं हम बात कर सकते हैं? और ये प्लेटफॉर्म है, हम हिमालय की इसलिए बात कर रहे हैं कि शायद आपको यहाँ लगातार आना अच्छा लगेगा, डिपार्टमेंट का हो। और सबसे बड़ी बात, लगातार किशोर उपाध्याय जी लगातार उनका रहा है कि इसको आगे को बढ़ाओ, कुछ करते हैं इसमें। हो सकता है इन टाइम्स टू कम नेपाल से, अब आप लगातार आपने कहा कि नेपाल, हमारा ये ज्योग्राफीज़ तो हम लोगों ने बनाई हैं, और डिजास्टर्स में तो देयर आर नो ज्योग्राफीज एज सच, वी हैव डिफाइंड, अलग अलग करा है, लेकिन सबके दुख दर्द एक ही हैं। होमो सेपियंस जो एक ही मिला है, कुल मिला के तो एक ही है ना। तो उसके लिए हमको कुछ करने की ज़रूरत थी। आपसे सुंदर और कौन हो सकता था, इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हस्ताक्षर आप जैसे व्यक्ति के हुए हैं, इसलिए ये चीज़ आगे बढ़ेगी। किशोर उपाध्याय जी का बहुत धन्यवाद, डॉक्टर पांडे का बहुत धन्यवाद, प्रोफेसर चौहान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर मनोज पंत और पूरी प्लानिंग डिपार्टमेंट का, क्योंकि नाउ यू हैव टू टेक दिस मोमेंटम फॉरवर्ड। ये वाला नहीं है, ये सरकारी नहीं है, वो आपने पहले ही इशारा कर दिया था, ये सरकारी वाला नहीं है मामला, क्योंकि ये बड़ी एक तरह की आंधी है और लगातार पूरा नॉर्थ ईस्ट हमसे लगातार बात कर रहा है। आज कश्मीर वाले लगातार जुड़े थे, हिमाचल वाले जुड़े थे। तो ये वाला ये भी इसके साथ में रहेगा। और मैं डॉक्टर रावत का और आप सभी लोग आए, विशेष रूप से डॉक्टर विनोद शर्मा का आपका बहुत आभार, डॉक्टर जोशी का, सभी नेपाल से, यूके से और हमारे अन्य स्थानों से आए हुए सभी आगंतुकों का, प्रोफेसर लोहानी यहाँ पर हैं, आपका सभी का बहुत बहुत आभार। आपने हमको समय दिया, क्योंकि अगला सत्र हमारा बड़ा सुंदर है, इसी के क्रम में है, संस्कृत और संस्कृति और धरोहर पे है। उसके बाद बहुत सुंदर ढोल दमाऊ का कार्यक्रम है और नंदा राजजात का है, तो आप उसका बड़ा आनंद लीजिएगा। ये सब हिमालय से जुड़ी हुई संस्कृति से हैं। हम लोगों ने साइंस टेक्नोलॉजी, आज दिन में इसरो का भी था, तमाम थे,
टेक्नोलॉजी और इसका ब्लेंड तो है ही, लेकिन उसके साथ ये इसलिए जोड़ा है कि ये समागम हो सके साथ साथ में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेमेंटो है सर, 2 मिनट मेमेंटो है सर। कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। माननीय गरिमा मुख्य अतिथि महोदय की गरिमा में उपस्थिति है, कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। युग युग अजेय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या क्या निदान, मेरे नगपति मेरे विशाल। सर, हमें हिमालय की समस्या का समाधान करने के लिए हम सबको हिमालय बनना होगा। मेरी इस कविता का आशय यही था। मैं माननीय पंत जी से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। So as a gesture of honor and appreciation to Honorable Chief Guest, Honorable Special Guest. सर, एक ग्राफिकरा परिवार की तरफ से सर एक स्मृति चिन्ह। सर, धन्यवाद सर। आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वाद हेतु। जी सर, थैंक यू। Ladies and gentlemen, immediately after this session, after the dispersal of today's chief guest, we will be resuming the session, and it will be on resilience through traditional knowledge system, Sanskrit, Sanskriti, Parampara. The session partners are Indian Knowledge System Center, IIT Roorkee, and Sanskrit University, Haridwar.
on behalf of Uttarakhand Sanskrit University, welcome you all to this session entitled Resilience Through Traditional Knowledge Systems, Sanskrit, Samskriti, Parampara. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने दोनों छात्रों को आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ आएँ और एक विधिवत स्वागत के रूप में मंगलाचरण प्रस्तुत करें। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षोररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषदश्वा मारुताः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विधते भूयगमायाः अग्निः जीवा मानवाः शूद्रचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः। Our ancient Indian Sanskrit knowledge offers a vast body of knowledge encompassing the concept of disaster, apada, vipatti or pralay, not merely as a physical or natural calamity, but as a multidimensional event encompassing moral, cosmic and ecological imbalance. Similarly, Samskriti and Parampara represent the continuity of practices that have sustained communities through generations, promoting harmony between the individual, society, and nature. Nevertheless, this immense wisdom has been forgotten or neglected in modern times due to several reasons, including colonial education systems, modern science and technology, while undervaluing indigenous knowledge, perceiving ancient knowledge as outdated or mythological, etc. Over time, this temperament led to a disconnection from Sanskrit texts and the cultural context in which we thrived. Therefore, it becomes crucial to look back and rediscover the insights of our ancient literature, Samskriti and Parampara, not as a matter of nostalgia, but as a source of sustainable wisdom for the future. During this session, the deliberations by distinguished Sanskrit scholars shall seek to revisit and reinterpret the timeless sources to understand how ancient India conceptualized and addressed disasters, along with exploring how ancient knowledge systems contributed to the concept of disaster and its management. Also, the deliberations will seek to bridge the gap between traditional wisdom and modern science, underscoring that disaster management is not merely a technical or administrative exercise, but a civilizational ethos deeply embedded in India's spiritual and cultural consciousness. Each speaker will deliver an expert talk, followed by an interactive discussion. We'll have the question-answer round at the end of all the talks, towards the culmination of the session. Without much ado, I would like to invite our Secretary, Sanskrit Siksha, Deepak Kumar Gairola ji, to grace us with his words of wisdom. मैं आप सभी का इस वर्ल्ड समिट ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट में स्वागत करता हूं और आज के जो पैनल में हमारा
डिसास्टर मैनेजमेंट का सब्जेक्ट रखा गया है संस्कृति और जो हमारे पुरातन ग्रंथ हैं उसमें डिसास्टर मैनेजमेंट के बारे में, तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं। सबसे पहले तो मैं यूकॉस्ट का धन्यवाद प्रकट करूंगा पुनः यहाँ पे कि यूकॉस्ट इस बार ये जो 20वीं साइंस कांग्रेस हो रही है, इससे पूर्व जो 19वीं साइंस कांग्रेस थी पिछले वर्ष, तो पिछले वर्ष पहली बार हमने संस्कृत एवं विज्ञान पे इसी तरह की कांग्रेस में एक लगभग 3 घंटे की कार्यशाला की थी। दून यूनिवर्सिटी में पिछले वर्ष ये कार्यक्रम हुआ था और इस बार पुनः उन्होंने हमें ये सौभाग्य प्राप्त करवाया है कि आज हम संस्कृति और डिसास्टर मैनेजमेंट में अपने विचार यहाँ पे हमारे पैनलिस्ट व्यक्त करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारतीय ज्ञान प्रणाली में जो आपदा प्रबंधन विषय है वो केवल प्राकृतिक आपदाओं से बचाव तक सीमित नहीं है, बल्कि मनुष्य, समाज और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने का समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं जो आज के वैज्ञानिक आपदा प्रबंधन मॉडल से पूरी तरह संगत है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जल स्रोतों का जो संरक्षण है, या हम कहें जो वृक्षारोपण हम करते हैं, या उपयुक्त बसावट की बात आती है, सामुदायिक सहयोग और प्रकृति के संकेतों का अध्ययन, ये जो विभिन्न सिद्धांत हैं, इनका आधुनिक डिसास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसको हम डिसास्टर मिटिगेशन भी कहते हैं, ये उसके मूल तत्व हैं, जो ये मैंने आपको 5-6 चीज़ें ऊपर बताई। तो यह दर्शाता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा वैज्ञानिक समझ और अनुभव पे आधारित है। आज देश में सिर्फ संस्कृत के विद्वानों को ही नहीं, अपितु प्रत्येक व्यक्ति को इस ज्ञान को समझना आवश्यक है, क्योंकि आपदा प्रबंधन केवल सरकार का विषय नहीं है, ये एक हम सबका सामूहिक और सामाजिक दायित्व है। यदि समाज भारतीय ज्ञान प्रणाली के इन सिद्धांतों को अपनाएगा तो निश्चित रूप से वो अधिक सुरक्षित, सजग और लचीला बन सकता है। इसी भावना को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय एवं IIT रुड़की के संयुक्त तत्वाधान में इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में संस्कृत संस्कृति एवं परंपरा विशेषक, जो ये हमारा विषय है, एक विशेष सत्र इसका आयोजन किया जा रहा है। और यह सत्र भारतीय दर्शन तथा ज्ञान प्रणाली में आपदा प्रबंधन के निहित विभिन्न बिंदुओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करेगा। हमारे विद्वानों का पैनलिस्ट आपके सम्मुख है, तो मैं आशा करता हूं कि यह सत्र अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होगा। और इन शुभकामनाओं के साथ मेरा आप सभी को पुनः धन्यवाद और बधाई। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद। Thank you, sir. Our first speaker is Professor P.V.B. Subramaniam ji. Currently, he's serving as Director of Sri Raghunath Kirti Campus of Central Sanskrit University at Devprayag of Uttarakhand. He has been working as a principal investigator of a project titled Revival of Indian Calendars based on IKS and establishment of its social, environmental, academic, scientific, and universal acceptability. One of his keen areas of interest is Advait Vedant and its similarity with astrology. Posted a series of 85 videos on Bharat Vishwa Guru Kaise, 139 videos on Surya Siddhant to promote Anvekshanatmak Buddhi in Oriental students. Presently on the board of editors of Bhojraj Panchang, published by Central Sanskrit University, and Dean of School of Yogic Science and Holistic Health Practices of Central Sanskrit University. His topic today is World Peace, and I give you Professor Subramaniam ji. श्रीवेङ्कटाचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं श्रितचेतनमन्दारं श्रीनिवासमहं भजे। नमः सभायै।
जब आज के समय में कोई घोर दृश्य देखने को होता है तो हम सभी इतना ही कहते हैं कि कलयुग आ गया है, और उसकी तुलना हम पीछे के किसी दूसरे युग से नहीं कर पाते हैं। और वह दूसरे युग कैसे था कि नहीं था और क्या बताया है, और उसमें हम कभी टटोलने के प्रयास भी नहीं कर पाते हैं। और दूसरे बिंदु हाल ही में एक विशेषज्ञ के द्वारा दिया गया बिंदु है, हम प्राचीन ना कह के अक्षुण्ण कहें, एवरलास्टिंग वैदिक नॉलेज, एवरलास्टिंग इंडियन नॉलेज सिस्टम, वॉट एवर इट मे बी। क्योंकि जब हम प्राचीन कह रहे हैं तो हमसे आज के समय के लोग छूट जा रहे हैं। तो ये एक उदाहरण होता है जब वक्ता और श्रोता का जो संबंध है, और वहाँ के श्रोता जहाँ बैठते हैं तो वहाँ पर हम उस दायरे को एकीकृत नहीं कर पाते हैं। अर्थात हमारे श्रोता में उस विज्ञान के अथवा उस आधुनिक विधा के बहुत कम ही लोग सामने आ पाते हैं, क्योंकि वो सामने नाम देखते ही, वह संस्कृत हो, संस्कृति हो अथवा परंपरा हो, वो निकल जाते हैं। तो धीरे धीरे ये हमें और गर्त में ले जा रहा है। तो इसको अक्षुण्ण भारतीय वाङ्मय में, अक्षुण्ण वैदिक वाङ्मय में क्या बिंदु था अथवा क्या बिंदु हैं हमारे डीएनए में, क्योंकि हम जन्य सिद्धांत पे विश्वास रखते हैं। गोत्र भी बोलते हैं, अब किसी भी कारण से बोलते हैं गोत्र, भले हम प्रयास ना करें कि आखिर मैं कौंडिन्य गोत्र का कैसे हूँ और उस कौंडिन्य ऋषि से मेरा क्या लेना देना है, अथवा मेरे कौन सा ऐसे सेल्स में मैंने कौन सा ऐसे डाटा है जो अभी तक हम डिसिफर नहीं कर पाए हैं इत्यादि, भले हम विचार ना करें, किंतु जहाँ जहाँ आवश्यकता होता है वहाँ हम कहते हैं कि मैं अमुक वेद का हूँ, अमुक परंपरा का हूँ, मेरा अमुक सूत्र हैं इत्यादि हम बोलते हैं। कभी कलयुग कहते वक्त हम द्वापर और त्रेता और कृत तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस ना पहुंचने के कारण हमारे साथ क्या दिक्कत हो रहा है कि भगवान श्री राम 4000 वर्ष पहले और श्री कृष्ण 2000 वर्ष पहले आ जाते हैं। शोध बहुत सामने आता है और बहुत लोग प्रस्तुत करते हैं और प्रचार प्रसार होता है। पिछले कुछ दिन पहले मैं लेखक गांव में आया था, तो वहाँ एक लड़की बोल रही थी अपने शोधपत्र वाचन में कि सत्य को भी प्रचार चाहिए, क्योंकि जब आप प्रचार नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो वही हम लोगों के साथ भी बहुत हद तक हो रहा है। हम ब्रह्मा को जानते हैं, 100 वर्ष के हैं ब्रह्मा, और एक कल्प उनका एक दिन होता है, एक कल्प रात्रि होता है। उस हिसाब से आप गिन लीजिए कि 100 वर्ष में कितने कल्प होंगे, तो 72,000 वर्ष हो, 72,000 संख्या हुआ कल्प का। एक कल्प में 1000 महायुग हुए, और एक महायुग में कृत त्रेता द्वापर कली 4 हुआ। तो हम कितने पीछे जाते हैं, पीछे जा ही नहीं पाते हैं। हम कुछ ग्रंथ तक सीमित हैं और कुछ विषयों तक सीमित हैं। हम ये जानते हुए भी कि 1000 शाखाएं सामवेद के थे और ऋग्वेद के 121 थे, इतना कहते हुए जो 1-2 शाखाएं बचे हैं उनके अंदर भी हमारे लिए क्या संदेश हैं इसको हम समझ नहीं पाते हैं। महाभारत हो अथवा भागवत हो, यह हमें पुण्य कमाने के लिए हैं, और वहाँ पर हम ये इससे चूक जाते हैं कि ये पुण्य क्या चीज़ है। कर्म करते हैं तो हम यही कहते हैं कि जैसे करनी है वैसे भरनी है, किंतु ये जो भरनी वाली चीज़ माने डीड एक्यूमुलेशन कहाँ पर हो रहा है हम इसको पहचान नहीं पाते हैं। वराह मिहिर कहते हैं कि नरापचारान नियतम उपसर्गः प्रवर्तते। उत्पात जो होता है मनुष्य के अपचार से ही होते हैं। तो यहाँ अपचार का अर्थ ये लिखा हुआ ये नहीं करना वो नहीं करना नहीं है, कि अपचार वही हुआ है कि प्रकृति के जो संगठित माने जो घटक हैं, तत्व हैं, जिनको हम देवताओं का नाम दिए हैं, और प्रकृति के जो घटक हैं जो पंच महाभूतों के नाम से हम जान रहे हैं, उनके प्रति हमारा जो अत्याचार है वो उत्पात में परिवर्तित होता है।
तो इसलिए वहीं पर वराह मिहिर कहते हैं कि प्रकृतिर वैपरीत्यम उत्पातः। उत्पाद किसे कहते हैं? प्रकृति अपने प्रकृति से हटकर जब प्रवृत्त होने लगता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। वो जो विकृति ही है प्रकृति में वो उत्पाद हैं। उसमें जाने अनजाने में हम सभी दोषी हैं। और भारत मात्र एक ऐसे स्थान है और भारतीय संस्कृति एकमात्र ऐसी संस्कृति है जहाँ पर दैनंदिन जीवन शैली ही प्रकृति के साथ जोड़ने वाली थी। अब उस शैली से हम हट गए हैं। तो हम कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, मैं अचानक जाके किसी गिरते हुए पहाड़ को रोक नहीं सकता हूँ, मैं होने वाले क्लाउड बर्स्ट को रोक नहीं सकता हूँ, किंतु यदि विश्लेषण कर सकते हैं आखिर ये क्लाउड बर्स्ट कहाँ से हो रहा है अथवा ये विपरीत कहाँ से हो रहा है। तो पहले का एक समय था, पहले का एक समय इसलिए कहना पड़ रहा है, वह एक विकल्पा भाव है। जैसे मैं कहा ना अक्षुण्ण भारतीय संस्कृति, तब भी ये कहना पड़ता है पहले का समय था। पहले के समय में क्या था कि आप नया मंदिर बनाइए तो आपको पुण्य मिलेगा, किंतु पुराने मंदिर का आप जीर्णोद्धार कीजिए तो जो नया बनाने से जो 8 गुना ज़्यादा मिलेगा। और मंदिर का लक्षण क्या है? मंदिर सरोवर के बिना नहीं हो सकता है। सरोवर का लक्षण क्या है? वो बगीचे के बिना नहीं हो सकता है। यानी उद्यान और सरोवर ये दोनों के बिना मंदिर नहीं हो सकता है। तो वही वराह मिहिर कहते हैं कि देवताएं रमते कहाँ हैं, देवता कहाँ वास करना चाहते हैं? सलिलोद्यान युक्तेषु कृतेषु वकृतकेषु च। माने सलिल और उद्यान जहाँ होते हैं वहाँ होते हैं। आज हमारे भगवान संगमरमर में आ गया है, वहाँ चारों ओर हम कहीं मिट्टी रहने नहीं देते हैं और वहाँ पानी का संपर्क तो होता ही नहीं है। तो यानी हम अपने प्रकृति के साथ हम जो अपचार करते जा रहे हैं, हमें ये नहीं लग रहा है। 1 मई एसी चला लिया तो क्या हुआ, CFC इतने से क्या हो गया, 1 मई गाड़ी चलाया तो क्या हुआ, तो 1 मई इतना किया तो क्या हुआ। तो ये एक संबंध है प्रकृति के साथ। पहले क्या था, प्रकृति के नज़दीक तक रहना है, अर्थात आप तोरण बांधिए तो आम के पत्तों का, आप भोजन कीजिए तो पत्तों में, आप भोजन बनाइए तो उसी प्रकार से आप बैठिए नीचे और भोजन कीजिए। जो आज जापान, पूरा जापान अमल रखता है, वहाँ पर कोई ऊपर बैठ के बेंच पे नहीं खाते हैं। तो ये सब बातें हमारा कहाँ चले गए? आज हम कहीं पत्र में तो लाते ही नहीं हैं। तो अब दक्षिण तक भी धीरे धीरे ये बात बहुत फैल गया है कि केले के पत्ते जैसे ही प्लास्टिक को छाप के फिर उसमें खिलाते हैं। तो यानी हम धीरे धीरे छूटते हुए जा रहे हैं। कोई हमें बड़े वैज्ञानिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे भारतीय ज्ञान भंडार की जो वैज्ञानिकता है, जिस स्तर से विज्ञान भरा हुआ है, तो वो हमारे पहुंच से अभी बहुत दूर हैं। अब हमें उसको जन सामान्य तक कैसे लाना है, तो हमें सबसे पहले उसका अनुकरण करना होगा। हमारे जीवन शैली ही ऐसे चाहिए कि हमें उठने से लेकर, हमारे व्यवहार से लेकर, हमारे प्रकृति तक, उपयोग तक, जितने कस्टम्स, जितने रीति रिवाज हैं, आप कहीं भी देखिए उसमें पंचमहाभूतों के बिना कोई संबंध ही नहीं होता है। ग्राम का, गांव का उत्सव हो, ग्राम देवता का उत्सव हो, घर का उत्सव हो। अब आजकल गणेश चतुर्थी, उसमें एक बात आती है, एक जगह 21 पत्रों का पूजा होता है। गणेश चतुर्थी में भाद्रपद मास में जो आता है, उसमें ये नहीं होता है कि फूल ले आओ, उसमें सब पत्र ही होते हैं। तो उसमें देवदारू हैं, मरुवक हैं, माने इतना दाड़मी है, इतना पत्र आते हैं कि उन पत्रों का नाम तक अब हम अपने भाषा में नहीं जान पाते हैं। तो पेड़ को पहचानना तो अलग ही चीज़ है। तो ये बहुत दूर की बात नहीं है। प्रकृति में रहना है, प्रकृति के साथ रहना है, प्रकृति के साथ एक सिंक्रोनाइजेशन माने तादात्म्य संबंध बनाए रखने का ही जितने भी लिखा हुआ है। अब महाभारत में यदि वो कहते हैं कि आपको पेड़ पुत्रवत, माने आपको बेटे जैसे ही इस लोक में और अगले लोक में भी वो तारता है। तो इसी तरह आप किसी भी पुराण में चल जाए, दशपुत्र समो द्रुमः, फिर आगे जहाँ जहाँ आप चलेंगे, जहाँ पंचांग की जो प्रवृत्ति आया है, ये सब हमें एक प्रकृति के साथ
जोड़ के रखने की बात थी। तो अपचार कहाँ से हो रहा है? तो अपचार सबसे हो रहा है। मैं नहीं किया कहने से नहीं। इस समय में पर्यावरण में जो परिवर्तन आ रहा है उसमें हम सभी दोषी हैं। हम सभी इस कारण से दोषी हैं कि जो घर बनाने के नियमों से लेकर हमारे दैनंदिन विषयों में जिन पंचमहाभूतों को जिस तरीके से कद्र देना है, जिस तरीके से महत्व देना है, वहाँ जहाँ हम चूक रहे हैं तो उससे प्रकृति में बहुत परिवर्तन आते जा रहा है। कलयुग है, जैसे यदि ज़्यादा बोलने पर हम ही कहेंगे कि कलयुग है, तो इसलिए ऐसे ही होता है। तो मैं बहुत प्रवचन देना नहीं चाहूँगा। पंचांग हम सभी जानते हैं। इस समय हम केवल बेटा बेटी के जब शादी करना हो तभी पंचांग तक पहुंचते हैं कि एक ऐसे डिवाइस, एक ऐसे स्टोरेज डिवाइस, एक ऐसे मार्गदर्शक, अब वो मार्गदर्शक ना रह के वो हमारे लिए केवल कुछ समय के हमारे कार्य निकालने वाला वस्तु हो गया है। तो हमें अपने प्रवृत्ति में परिवर्तन ले आना होगा। भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार की जीवन शैली है, मैंने हम धीरे धीरे आ सकते हैं। आज अचानक आप भारतीय जीवन धारा अथवा भारतीय ज्ञान परंपरा को ला ही नहीं सकते हैं। भारत का कोई भी व्यक्ति निरक्षर नहीं हुआ करता था, अर्थात यहाँ पर जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी प्रकृति को पहचानने की क्षमता रखता था। वो किसान हो, वो जानता है कि कब जाके हल चलाना है। इसी प्रकार जितने भी विधाएं हम देखते हैं, जितने भी क्षेत्र देखते हैं, तो सभी को यह जानकारी हुआ करती थी। अब हम इस ये कहने में आ गए हैं कि हमारे दादी बोलती थी, हमारे दादाजी बोलते थे करके हम वहाँ से भी छूटते हुए आ रहे हैं। अब समय अपने ही तरीके से समय सबको सीधा करता है। तो इसलिए हमें बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हम चूक रहे हैं, क्योंकि प्रलय एक वस्तु है। अर्थात जिस तरीके से विज्ञान में द्रव्य और ऊर्जा का संबंध बताया हुआ है, इसी तरीके से हम जितने भी हैं, जैसे कहते हैं ना कि आत्मा मरता नहीं है तो जाता कहाँ है, और कर्म संचित होता है तो होता कहाँ है। तो इन सबका यदि बहुत गहराई से यदि हम चिंतन करते हैं तो यहाँ के विज्ञान वास्तव में आज के विज्ञान से बहुत परे हैं और हमारे पहुंच से बाहर हैं। तो इस पर कोई चिंतन, ये तो उसके लिए असीमित समय चाहिए होता है। केवल एक बात से मैं विराम लेता हूँ। गणितात् सिद्ध्यते कालः, काले तिष्ठन्ति देवताः। हम बहुत बार कहते हैं कि गणित का आविष्कार हमारे यहाँ हुआ है। उसी समय में हम बहकावे में भी आते हैं। हम ये कहते हैं कि शून्य का आविष्कारक आर्यभट्ट हैं। 5वीं सदी का आर्यभट्ट यदि शून्य का आविष्कार किए तो वैदिक वांग्मय में जो शून्य है वो कहाँ से आया? और यदि 5वीं सदी के आर्यभट्ट ही सब कुछ किया तो इस कलयुग के पहले का द्वापर, द्वापर के पहले का त्रेता, तो फिर हम कहानियों में समेट गए। तो इसलिए हमारे चिंतन में हम प्रश्न करते हैं कि कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि आज विज्ञान इतना आ गया है, इत्यादि जो बातें करते हैं। एक बार वैदिक वांग्मय तक पहुंचते हैं, एक बार वैदिक वांग्मय तक पहुंचते हैं तो फिर वास्तव में वो विज्ञान, विष्णु, ब्रह्मा, आप टीवी सीरियल में ही देखते हैं अभी, एक तो सहस्राक्ष हैं और एक तो चतुर्मुख हैं। तो वास्तव में विश्वव्यापकशीलत्वात् विष्णुरित्यभिधीयते। यूनिवर्स में जो तत्व हैं, विश्वव्यापकशीलता जहाँ है वो विष्णु हैं, वो परे हैं ब्रह्मा से। तो ब्रह्मा कौन होते? ब्रह्मते व्यापनोति ते ब्रह्मा। वो केवल और कुछ नहीं है, सूर्य के किरण जहाँ तक पहुँचते हैं उसको ब्रह्मांड कैसे नापे होंगे। और गणित प्रकृति के वही तत्व हैं। तो अब एक पत्थर ऊपर फेंकने पर नीचे गिरता है तो उसका कितने एंगल में हमने फेंका है, कितने वेग से हमने फेंका है, ये सब पत्थर को पता है, प्रकृति को पता है, भले हम विश्लेषण करने में नहीं कर पाते हैं। तो गणित का भी कोई आविष्कारक नहीं है। गणित प्रकृति का एक घटक है, प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियामक है, और जिसको अपने बौद्धिक क्षमता से ही जिसने अधिकार प्राप्त किया हुआ है, जो भारतीय ऋषि, आज वह
प्रथा वह विधा हमारे दृष्टिकोण में ही धूमिल हो गया है। तो अतः यहाँ पर एक दृष्टिकोण नवनिर्माण करने की आवश्यकता है। और प्रकृति बचाना नारे से नहीं होगा, प्रकृति बचाने का पहलू अपने से ही प्रारंभ होना है। मैं इतना ही कहकर सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने से ये कोई नारा नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है, केवल कहने से सभी सुखी होते हैं। वो सभी को सुखी बनाने का पहल अपने से चालू होता है। सर्वे सन्तु निरामयाः, जब प्रकृति निर्मल होगा, निश्चल होगा, तभी निरामय होते हैं। वहाँ पर भी अपना ही दायित्व है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये भद्र क्या वस्तु हैं, माने सब साकार आप अनुकूल ही देखें, फिर माँ कश्चित दुख भाग भवेत। ये कोई एक शांति मंत्र नहीं है, ये प्रतिदिन हमें याद दिलाता है कि हमारा कर्तव्य क्या है और प्रकृति से किस प्रकार से जुड़ना है। मैं इतना ही कहकर यहीं पर विराम लेता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मानव एवं प्रकृति के मध्य जो समन्वय और सामंजस्य आज आवश्यक है उसका हमें बोध कराया। आपने हमें ये महसूस कराया कि हमें अपनी जड़ों से जुड़ने की ज़रूरत है। और आज आपदाएं और समस्याएं जिस रूप में हमें दिख रही हैं उसके मूल में कहीं ना कहीं मानवीय गतिविधियां और उसका परिवर्तित स्वरूप जिम्मेदार है। अगर मैं दो पंक्तियों में सर आपके पूरे उद्बोधन को संक्षिप्त करना चाहूँ तो मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं कि वो शख्स बाअमल था मगर ज़िद पे अड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर ज़िद पे अड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। सर, हम अगर भारतीय संस्कृति से दूर हुए, भारतीय ज्ञान प्रणाली से दूर हुए तो निस्संदेह हमारा भविष्य खतरे में होगा। आने वाली पीढ़ियों के सामने हमें नतमस्तक होना होगा। आपके उद्बोधन के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी है अगले वक्ता की। पार्डन सर जी। अब बारी हमारे अगले पैनलिस्ट की, प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी। सर, आप बात करेंगे तीर्थाटन को लेकर। तीर्थाटन उत्तराखंड में मुख्य रूप से केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हमारे पास बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं। तीर्थयात्री किस प्रकार तीर्थ की मर्यादा को भंग करते हैं और वो किस तरह से आपदा से जुड़ता है, किन बातों का ध्यान रखकर तीर्थाटन को सही मायनों में किया जा सकता है और उसका पुण्य लाभ अर्जित किया जा सकता है। तो तीर्थाटन का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, क्या करें और क्या ना करें, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अधिमंचम विराजमानाः सम्मानिताः विद्वांसः उपमंचमपि विराजमाना मम पुरस्तात् येपि श्रोतृवृन्दे समुपस्थिताः छात्राः आचार्याश्च। वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात आपदा प्रबंधन, इस विषय को लेकर के ये जो समिट चल रही है ग्राफिकिरा यूनिवर्सिटी में, ये अपने में एक बहुत अच्छा प्रयास है, यूँ मैं कहना चाहूँगा। मुझसे पूर्व प्रोफेसर सुब्रमण्यम ने बहुत मूलभूत बातों को आपके समक्ष रखा है। हजारों वर्ष पूर्व महर्षि कपिल ने अपनी फिलॉसफी में 3 प्रकार के दुखों की चर्चा की है। कपिल दर्शन का प्रारंभ 3 दुखों से होता है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। दुख त्रय विघातात्
जिज्ञासा तदवघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चेत नई कांता अत्यंत तो भावात। पहला आध्यात्मिक दुख है, दूसरा आधिदैविक है और तीसरा आदि भौतिक है। आध्यात्मिक और आदि भौतिक दुखों का संबंध सीधा नहीं है, लेकिन इस समिट के साथ में आधिदैविक दुख का, जिसको आपदा कहते हैं, उसका डायरेक्ट संबंध है, ऐसा मैं मानता हूं। यह चिंता महर्षि कपिल को भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। मैं क्योंकि वेद का विद्यार्थी हूं, यजुर्वेद का 36वां अध्याय, यहां विद्यार्थी बैठे हुए हैं हमारे, 36वें अध्याय में कहा है, स्योना पृथ्वी नो भवा निरक्षरा निवेशनी। मेरी ये पृथ्वी सोना हो, सोनी माने सुंदर, ब्यूटीफुल हो। अब ब्यूटीफुल कोई क्रीम लगाने से ब्यूटीफुल नहीं होता जो है ये। वहां कहा है क्या, मित्रस्य हम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मैं मित्र की दृष्टि से सभी प्राणियों को देखूं। अब सभी प्राणी कौन से हैं? वो केवल मनुष्य नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए भी सृष्टि के कण कण में चैतन्य है जो है ये। प्रोफेसर MM बजाज ने दिल्ली विश्वविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, लगभग 42 वर्ष पूर्व उन्होंने शोध किया था। जितने भी कत्ल खाने हैं दुनिया के अंदर, बड़े बड़े कत्ल खाने जो है ये, इंस्ट्रूमेंट लगाए, 3 लोगों की टीम थी, उसमें एक मुस्लिम भी थे और वो उनका सिद्धांत बना जो है ये। और एनालिसिस उन्होंने किया, जो चीत्कार उन मूक बधिर पशुओं की निकलती है, उसका जब विश्लेषण किया, सचिव महोदय वो आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि जो पृथ्वी पर जो अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है पिछले 50 वर्षों में, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जो अर्थक्वेक की, उसके मूल में मांसाहार है जो ये उन्होंने सिद्ध किया, मैंने नहीं किया। प्रोफेसर MM बजाज ने, दिल्ली विश्वविद्यालय की फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ने इसको सिद्ध किया जो है ये। पृथ्वी कहां से ब्यूटीफुल होगी? आपदा प्रबंधन जो है ये। आपने अपनी जीवन शैली को बदल दिया, इस प्रकृति में पेड़ पौधों को आपने काट दिया जो है ये। इसलिए ये विचारणीय प्रश्न है कि जो ऋत का तंतु है, ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत का तंतु कॉस्मिक ट्रुथ का जो तंतु है, जो धागा है, जो इस सृष्टि के अंदर फैला हुआ है जो ये, उसको आप तोड़ना चाहते हो? आप तोड़ नहीं सकते, कोई ताकत नहीं है आप में जो तोड़ दें। और प्रकृति का एक झटका आपको 1 सेकंड में जो खत्म कर देता है, ये ऋत का तंतु है, इसको कहा। यजुर्वेद का मंत्र है 32वें अध्याय में, ऋतस्य तंतुम विततम विसृतम। ऋत का तंतु फैला हुआ है और आपका प्रबंधन उसी से जुड़ा हुआ है। आपने यदि सृष्टि के कॉस्मिक ट्रुथ का, रिवर्सेबल ट्रुथ का, यूनिवर्सल ट्रुथ का यदि आप उल्लंघन किया आपने, तो समझ लेना आप रह नहीं सकते बहुत समय तक जो है ये बहुत खतरे की घंटी है जो है ये। हमारा उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि होने पर हमारे बड़े बड़े यहाँ पर तीर्थ है, तीर्थ स्थल हैं, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये तो हमारे गढ़वाल में, और उधर देखो कुमायूं में, वहाँ भी बहुत से तीर्थ स्थल हमारे हैं। अब समस्या ये होती है कि हम कहते हैं स्पिरिचुअल टूरिज्म, शब्द दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं स्पिरिचुअल टूरिज्म। हमारा ये मानना है संस्कृत, क्योंकि ये विषय संस्कृत को लेकर के आपने रखा है, जितना पुराण साहित्य है और आचार्य शंकर के जीवन के ऊपर जो शंकर दिग्विजय लिखा गया, माधव ने जो लिखी, मैं उसको कोट करूंगा जो है ये। वो कहते हैं कि तीर्थ कहते किसको है, बताते हैं वो जो है। स्कंद पुराण भी कहती है और कई पुराण कहते हैं इस बात को कि तीर्थ कहते किसको है और तीर्थ में कैसे यात्रा करनी चाहिए। ये डूज और डोंट्स क्या है, आचरण संहिता क्या है। हमारी दृष्टि से, संस्कृत ग्रंथों की दृष्टि से पर्यटन एक अलग है और तीर्थाटन एक अलग है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तीर्थाटन पर्यटन नहीं हो सकता। कदाचित पर्यटन में यदि अच्छी भावना आपके अंदर है, आप पर्यटन करते करते आपके मन में आता है कि मैं तीर्थ देखूं, तो कुछ अंश में वो समाहित है। परंतु तीर्थ की आचरण संहिता क्या है? हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, महर्षियों ने, आज नहीं,
हजारों वर्ष पूर्व इसको देख लिया था जो है ये। मैं आपके समक्ष उसको रखना चाहता हूं। प्रिय बंधुओं, उसको ध्यान से सुनना आप जो है ये। सभ्य समाज कहने वाला आज का मनुष्य जो है ये, वो कितना नीचे चला गया है जो है ये। विवाह शादी करके हनीमून मनाने के लिए वो हमारे तीर्थों में जाता है। कल्पना करो आप जो है ये, मर्यादा का भंग आप कर रहे हैं जो है, अपने आप आपदाओं को बुला रहे हो आप जो है ये। तो हमारे शास्त्रों में तीर्थ कहते हैं उसको, पहला तीर्थ है गुरु, आचार्य, आपका उपाध्याय, वो आपका तीर्थ है। अर्थात तरती अनेनैति तीर्थम, जो आपको इस भवसागर से तार दे। असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। कौन करता है? गुरु ही तो बताएगा। ये अज्ञान है, ये तमस है, ये मृत्यु है। कौन बताएगा इसको? गुरु बताएगा। तो गुरुओं के जहां आश्रम होते थे, जो स्थान होते थे, वो कहां होते थे? नदियों के संगम पर होते थे। आप केंद्रीय विश्वविद्यालय का देवप्रयाग परिसर है, दो धाराओं का मिलन है, इसलिए वो प्रयाग है, इसलिए वहां उसको तीर्थ बोलते हैं हमारे यहाँ। वहां बैठ करके गुरुओं के चरणों में मनुष्य अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करता था जो है ये। और दूसरा कहा तरती पापादिकम यस्मात्, मैंने जो पाप किया उनका फल तो जरूर मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, पुराण में कहा, जो कर्म किए हैं उससे आप बच नहीं सकते। परंतु तीर्थ में जाकर के होगा क्या कि आगे के लिए आप अलर्ट हो जाओगे जो है ये, आगे आप नहीं करोगे। इसलिए कहा जो पाप से तार देता है उसको तीर्थ बोलते हैं। हमारे यहाँ विशेषकर हमने जो तीर्थाटन की जो आचरण संहिता बनाई है, उसमें हमने 11 डूज लिखे हैं और 11 हमने डोंट्स लिखे हैं। देखिए, पहला डू जो आचरण संहिता का पाठ है, तीर्थ में श्रद्धा और तीर्थ महात्म्य में विश्वास रखना चाहिए, पहला है जो है। सब प्रमाण दिए हमने, 31 प्रमाण हमने लिए हैं इसमें जो है। बिना श्रद्धा के यदि आप तीर्थ में जाओगे, है ना, अनमने मन से, तो आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, मन एवं इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए जो है ये। हम हरिद्वार में रहते हैं, रोज झगड़े देखते हैं हम जो है ये। गंगा स्नान हर की पौड़ी किया और मोहन पूड़ी वाले के यहाँ पूड़ी खाई और दुकानदारों से लड़ना झगड़ना प्रारंभ कर दिया जो है ये ठीक नहीं है जो है। ऐसे ही स्थिति और तीर्थों की भी है। तीर्थ में आराध्य देव का ध्यान करते हुए ऋषियों एवं गुरुजनों की संगत करनी चाहिए। जो भी आपका आराध्य है, आपका आराध्य शिव है, विष्णु है, आपका कोई भी है, उसका चिंतन होना चाहिए और संयम होना चाहिए। और जो भी आपके गुरुजन हैं उनकी संगति करनी चाहिए, उनका सत्संग करना चाहिए। और चौथी बात है, तीर्थ में पैदल यात्रा को परम तप कहा गया है। पैदल यात्रा जो है, तीर्थ पैदल होता था जो है, और आजकल क्या है, 1 घंटे में हम वहां पहुंच जाते हैं। ये तीर्थ की कोटि में नहीं आता जो है ये। धीरे धीरे नंगे पैर जो है ये, हमारी चट्टियां बनी हुई हैं, आज भी हनुमान चट्टी है, दुनिया भर की चट्टियां, वहां रुकते थे विश्राम के लिए। 1 महीना पहले से पैदल चलना प्रारंभ करते थे, पैर में ज्योति नहीं होती थी जो है ये। कितना फायदा होता था जो है ये। और फिर कहते हैं 5वां, तीर्थ में स्वाध्याय, तपश्चर्या, संध्योपासना, हवन आदि करना चाहिए जो है ये। संध्योपासना, हवन, ये सब करना चाहिए जो है ये। और हम क्या करते हैं? हम धूम्रपान करते हैं, हम ड्रिंक करते हैं जो है। क्या नहीं करते आप जो है, बताइए आप। कहने की आवश्यकता नहीं है, ये सब हो रहा है जो है, और उसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं जो है ये। और फिर कहते हैं आहार विहार में संयम रखना चाहिए जो है। आहार के विषय में बोल चुका, अब व्यवहार के विषय में भी संयम होना चाहिए। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है की भावना को आत्मसात करते हुए तीर्थ यात्री को संतोषी होना चाहिए जो है। सेटिस्फैक्टरी वो होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन उसको होना चाहिए जो है। अपने कार्यों के लिए स्वावलंबी होना चाहिए, सेल्फ डिपेंड जो है। अब करते क्या है कि दोनों कर साथ में चलेंगे जो है ये ठीक नहीं है जो है ये। फिर कहा तीर्थ में सर्वदा सत्य ही बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए जो है ये। और फिर कहते हैं तीर्थ यात्री को सभी प्राणियों के प्रति मैत्री, अहिंसा एवं आदर का भाव रखना चाहिए जो है ये। जीव जंतु मात्र पर जो है ये,
और तीर्थयात्री को यथाशक्ति दुखियों की अन्न, वस्त्र आदि से सहायता करनी चाहिए जो है ये हमने 11 डूज बनाए हैं और इसके प्रमाण हमने दिए हैं, 31 प्रमाण हमने दिए हैं। फिर कहते हैं क्या नहीं करना चाहिए। जब ये करना चाहिए तो ये सिद्ध हो जाता है सचिव महोदय कि ये नहीं करना चाहिए, विपरीत में जो है। फिर भी मैं आपके समक्ष रखूंगा कुछ विशेष बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए जो है ये। अब आप देख लीजिए, पर्यटन डिपार्टमेंट कहीं ऑब्जेक्शन ना करे जो है ये, लेकिन हम तो शास्त्र की बात कर रहे हैं जो है ये, क्योंकि शास्त्र क्या कहता है हमारा, ये हमारी मोरल ड्यूटी है बताना जो है ये। कहते हैं शास्त्रों के अनुसार गोवंश तथा अश्ववंश के द्वारा की गई तीर्थ यात्रा निष्फल हो जाती है जो है। चाहे आप वैष्णो देवी जाओ, चाहे कहीं भी जाओ जो है ये। गोवंश का मतलब है बैल आदि के ऊपर बैठना, अश्ववंश के होता है घोड़े या खच्चर के ऊपर बैठना जो है ये वर्जित है। किसी व्यावसायिक व्यक्ति, यदि ये नहीं है तो कुछ व्यक्ति भी पीछे अपनी कमर पर लोगों को लेकर के जाते हैं। नरयान, डोली, पालकी के माध्यम से तीर्थ यात्रा करने पर तीर्थ यात्री को आधा फल प्राप्त होता है, ये पुराणों में लिखा है। गोवंश, अश्ववंश तो बिल्कुल वर्जित है, लेकिन यदि मनुष्य पालकी आदि में लेके जाता है तो उसको पूरा फल प्राप्त नहीं होता। फिर कहते हैं तीर्थ में अभक्ष्य वस्तुएं जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, नशीली वस्तुएं आदि का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। और तीसरा है जूते का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है, नंगे पैर करना चाहिए। और यदि जूते का प्रयोग करता है तो चतुर्थांश फल की ही प्राप्ति होगी जो है ये। अब आप देखिए उन मुनियों ने कितनी दूर दृष्टि रखी होगी जो है ये, कि आगे आने वाला जो समय है वो कैसा होगा, ये हम सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकते। जो ऋषि होते हैं वो क्रांतदर्शी होते हैं, वो आगे का भी देख लेते हैं कि आगे क्या स्थिति होगी जो है। अपवित्र हाथों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपवित्र हाथों को गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों सहित तीर्थ के जल से कदापि नहीं धोना चाहिए। मैं हरिद्वार से आता हूँ, जब ये गंगा बंद होती है सफाई के लिए तो कितने गंदे नाले उसमें स्रोत मिल जाएंगे आपको जो है ये, आप देख सकते हो, उसके चित्र हैं, समय समय पर आते हैं जो ये। तीर्थ में गए हुए तीर्थ यात्री द्वारा दान लेना अनुचित माना गया है। जो तीर्थ में लोभवश दान लेता है उसका यह लोक तथा परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं जो ये। तीर्थ यात्रा पति पत्नी को परस्पर सहमति से करनी चाहिए, अर्थात पत्नी के बिना तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। भाई जिसकी शादी होगी उसके लिए लिखा है ये, जिसकी शादी नहीं हुई वो तो कभी भी तीर्थ यात्रा कर ले जो ये, कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त नहीं होता, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ कोट किया है। पवित्र तीर्थों में छुआछूत का विचार मन में नहीं रखना चाहिए। आज ये करंट टॉपिक है ना। अब बताइए प्रयागराज में है ना 66 करोड़ से अधिक तीर्थ यात्रियों ने जो स्नान किया था, पता था कि ये वो है, ये वो है, ये वो है, पता है किसी को नहीं। ऐसे तीर्थ यात्रा में अस्पृश्यता, छुआछूत का ध्यान नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी जो है ये कितना सामाजिक सद्भाव का उदाहरण है जो ये। फिर कहते हैं तीर्थ यात्री को तीर्थ स्थानों की गरिमा के प्रतिकूल परिधान धारण नहीं करना चाहिए जो है ये। कमाल की बात है, कहते हैं कि मैं तो ये कपड़े पहन के जाऊंगी। अरे तीर्थ की मर्यादा के अनुकूल शिष्ट वेशभूषा होनी चाहिए जो है ये, अशिष्ट नहीं होनी चाहिए जो है ये। आप समझदार हैं, शिष्ट क्या है अशिष्ट क्या है, मैं इस पर ज्यादा इशारा नहीं करूंगा, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। शरीर ढका हुआ होना आपका चाहिए जो है, जिसमें लज्जा वो स्थान है जो है, मतलब देख करके लगे कि हाँ ये व्यक्ति है जो है। ऐसे भड़काऊ वस्त्र नहीं होने चाहिए जो है। फिर कहते हैं कि तीर्थों के जल में कपड़ा धोना, जल पीटना, उसे तैरकर पार करना, रति क्रिया करना, हंसी मजाक करना, मैल छुड़ाना आदि कृत्य निषिद्ध बताए गए हैं। और रोज सोशल मीडिया पर देख लीजिए क्या क्या आ रहा है, क्या देख रहे हैं हम जो है। गंगा नदी में, यमुना में स्नान करते हुए वो क्या नहीं कर रहे जो है ये आपदाओं को बुला रहे हैं जो है ये। तीर्थ यात्री को तीर्थ यात्रा के समय दूसरे तीर्थ की महिमा के प्रति अनुराग नहीं रखना चाहिए। यदि आप बद्रीनाथ जा रहे हैं, हरिद्वार आ रहे हैं, तो वहाँ का ही ध्यान आप रखें तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और फिर अंत में कहा 11वां
डोंट्स क्या है? तीर्थ यात्री को अश्रद्धावान, सुरापाई, नास्तिक, संशय आत्मा, हेतु दृष्टा और कुतर्की नहीं होना चाहिए। जो कुतर्क है ना, तरह तरह के प्रश्न, वो नहीं होना चाहिए। ये 11 डूज और डोंट्स जो कि ये आपदा प्रबंधन से इनका सीधा संबंध है, ये मैंने आपके समक्ष रखे हैं। इस पर आप गहराई से विचार कीजिए। ये कहीं ना कहीं प्रकृति से संबंध कायम करते हैं। हमारे इस जीवन को, हमारी जीवन शैली बदलनी चाहिए, जो है बहुत आवश्यक है। जो है ये इन्हीं विचारों के साथ में मैं, यदि कोई प्रश्न हो तो बताएं। अच्छा, एक साथ लेंगे, ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने बहुत सरल शब्दों में हमें बताया कि तीर्थ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर एक सूत्र में उसे समझा जाए तो इंटरनल क्लेंजिंग उतनी ही ज़रूरी है जितनी आउटर क्लेंजिंग। लगभग हमेशा हम आउटर क्लेंजिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, आवर नेक्स्ट स्पीकर इन द रो इज़ प्रोफेसर माला कपाडिया. She is a highly accomplished scholar and practitioner with a distinguished career spanning research, education, journalism, human resources, and consulting. She is a passionate advocate for integrating ancient Indian wisdom with modern approaches to well-being, leadership, and organizational development, well-being, and happiness. Sustainability, individual and planetary flourishing, and indigenous psychology are some of her areas of interest and research. Professor Kapadia has recently published her work titled Sukha Sutra, an Indic well-being and happiness guide for flourishing. She is currently the director of Center for Indigenous Knowledge Systems at the Anadi Foundation. She has completed as the principal investigator for Ministry of Education India, Indian Knowledge Systems Research Project on well-being and happiness based on Ayurveda, the first well-being and happiness framework from India. I give you Professor Mala Kapadia. I may also request to our distinguished speakers to respect the shortage of time. Okay. नमस्कारम। पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ आयोजकों का इस कार्यक्रम के लिए। और कल से जो शुद्ध हिंदी कानों में पढ़ रही है, वरना ज़्यादातर कॉन्फ्रेंसेस अंग्रेज़ी में ही होती है, तो यहाँ अच्छा भी लग रहा है कि हिंदी में बात कर रहे हैं हम और इतने सारे विद्यार्थी हैं। सबसे पहले तो मैं एक कहानी से शुरुआत करूँगी। एक राजा था और पुराने ज़माने में राजा अपनी प्रजा के सुख दुख को देखने के लिए सामान्य मनुष्य की तरह निकलते थे ताकि किसी को पता ना चले वो राजा है। और ये राजा अपने घोड़े पे बैठकर प्रजा में घूमने गया था गांव में, और आगे निकल गया महल से बहुत दूर। मध्याह्न हो रही थी, सूरज सर पे था और प्यास लगी थी। तो खेत में उसने देखा कि कहीं दूर एक ग्राम्य माता, क्योंकि ये कविता है एक्चुअली और कविता का शीर्षक भी ग्राम्य माता है, ग्राम्य माता खेत में काम कर रही है। तो वहाँ जाके राजा ने पूछा कि मन में तो वो उसे पता है वो राजा है, इसलिए वो घोड़े से नहीं उतरा और उसने कहा कि पानी मिलेगा। तो माँ ने कहा पानी क्यों, गन्ना है यहाँ खेत में, गन्ने का रस पिलाती हूँ। माँ ने गन्ना निकाला, काट के रस निकाल के राजा को दे दिया। और गन्ना उसने जब काटा तभी भी बहुत सारा रस उससे निकल रहा था। तो राजा बेध्यानी से, प्यास लगी है, खेतों को देखते देखते पी गया गन्ने का रस। पर उसके मन में एक विचार आया कि फसल अच्छी हुई है, मुझे ज़्यादा कर लेना चाहिए मेरी प्रजा से। और बेध्यानी से उसने वो प्याला दे दिया माँ को और कहा एक और चाहिए, प्यास और है। माँ ने एक और गन्ना निकाला। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? गन्ने में रस नहीं था या कम हो गया।
तो राजा की समझ में कुछ नहीं आया, पर वो वृद्ध माँ थी, वो जमीन पे बैठ गई और रोने लगी। तो राजा ने कहा एक और गन्ना ले लो, इसमें क्या फर्क पड़ता है। बोली नहीं, आप नहीं समझोगे, धरती का रस सूख गया है, और वो इसलिए सूखा है क्योंकि हमारा जो राजा है उसके मन में लोभ जागृत हुआ है। अब राजा को एकदम से वो आहा फीलिंग कहते हैं ना, वो हो गई। घोड़े से उतर के माँ के चरण स्पर्श करके उसने माफी मांगी और कहा मैं ही वो राजा हूं जिसके मन में लोभ आ गया था। हम भारत में हमेशा, मुझे एक दुख होता है, आप लोगों को देखती हूँ, यंग स्टूडेंट्स को, कि अनफॉर्चुनेटली आप पूरा कॉलोनाइज्ड करिकुलम पढ़ रहे हो। भारतीय संस्कृति के बारे में आप ऐसी कॉन्फ्रेंस में ही जान पाते हो, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति एक तरफ क्वांटम फिजिक्स और दूसरी तरफ न्यूरो साइंस दोनों को जानती थी। अब सोचिए ये कितना न्यूरो साइंस है जो जमीन, उसके रस और राजा के मनोभाव यानी साइकोलॉजी को जोड़ती है। और ये अगर हम समझ ले तो आपदा प्रबंधन नहीं करना पड़ेगा। जब पेंडेमिक हुआ तो मेरे लिए तो आयुर्वेद मेरा शोध का विषय रहा है, चरक संहिता मेरे लिए भगवत गीता है। तो जब पेंडेमिक हुआ तो मैंने चरक संहिता खोली और मैंने देखा यहाँ क्या हमारे लिए है, कि इससे बड़ी आपदा क्या हो सकती है। तो उसमें एक पूरा प्रकरण है विमान स्थान में जनपदोध्वंस, और सूत्र में कुछ सूत्र ऐसे हैं जिनको, क्योंकि मैं मैनेजमेंट की प्राध्यापक रह चुकी हूँ, तो बच्चों तक बात पहुंचानी है तो 5P या 3T या तो एक फ्रेमवर्क बनाइए तो उनको आसानी से समझ में आ जाता है। तो उन्हीं सूत्रों से मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया है जनपदोध्वंस, जो हमारी वर्तमान आपदा का ही प्रतीक है। तो आचार्य चरक कहते हैं कि हम अभी है इस समय में जहां पेंडेमिक है, जनपदोध्वंस है, ये क्यों हुआ। तो समय में पीछे जाए तो विकृत वायु, जल, देश और काल की वजह से, क्लाइमेट चेंज की बात है। आयुर्वेद ने क्लाइमेट चेंज शब्द नहीं लिखा है, विकृत लिखा है सिर्फ, पर वायु, जल, देश और काल, 4 स्तर पे जब विकृति आ जाए तब समझिए ये पेंडेमिक आने वाला है। और ये भी क्यों हुआ, तो अधर्म का आचरण, व्यक्तिगत रूप पे इंडिविजुअल, धारण करता है, जो हमें सस्टेन करता है, वो धर्म है। और रित की बात हो चुकी है, तो रित से धर्म और धर्म से आचरण। तो धर्म का जब लोप होता है व्यक्तिगत रूप, सामाजिक रूप या राजकीय रूप पे, और आज हम देख रहे हैं कि जो सुपर पावर देश कहलाते हैं उनकी तो इकोनॉमी ही वॉर इकोनॉमी है। विश्व में कहीं ना कहीं युद्ध ना करवाए तो उनकी इकोनॉमी तो ठप हो जाए। तो अधर्म तो है ही, हर जगह है। और अब आचार्य चरक बात करते हैं कि इसका, उन्होंने तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऐसे कोई शब्द नहीं प्रयोग किए, पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे आएगा, तो अधर्म से धर्म की तरफ जाना है। व्यक्ति को, समाज को, उद्योग और उद्योगपतियों को, और आगे चल के राजकीय नेताओं को, अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो ये एक जब फ्रेमवर्क मैंने देखा तो मैंने कहा भारतीय ज्ञान परंपरा का यही है कि सबसे पहले वो हमें जीवन दृष्टि देते हैं, द वर्ल्ड व्यू।
how do you look at the world? Do you look at it as a resource or do you look at it as Mother Earth? क्योंकि जब हम माँ कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी सुप्त है हमारे यहाँ, भूमि सुप्त है, पृथ्वी को जब हम माँ कहते हैं तो उसको आप गंदा नहीं कर सकते, उसको आप अधर्म से, आचरण से कलुषित नहीं कर सकते। और वेस्टर्न वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 से 4 तक क्या रहा है? नेचर इज अ रिसोर्स and people are a resource. So we look at each other as a resource. And इसीलिए वो sacredness जो होनी चाहिए जीवन दृष्टि में, क्योंकि हम कहते हैं नदी माँ है, पर्वत पिता समान है, तो जब हम sacredness लाते हैं, और ये मैं तो देख रही हूँ हवाई से लेकर न्यूजीलैंड तक सारे इंडिजिनियस कल्चर्स में एक ही समानता है कि वहाँ मनुष्य केंद्र में नहीं है, केंद्र में प्रकृति है। और केंद्र में प्रकृति है इसलिए आपदा का विचार प्रबंधन तो बात की बात है, आपदा की सोच तक का भी हम अपनी जीवन शैली में प्रबंध करते हैं ऐसे कि आपदा ना हो। आपदा आए और फिर प्रबंधन करना ये तो बाद की बात है, पर आपदा ना हो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? और इसलिए हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में पंच ऋण की बात है। आप में से कुछ लोगों ने अपने घर में अपनी दादी माँ, नानी माँ को देखा होगा कि पहली रोटी खुद के लिए नहीं होती, परिवार के लिए भी नहीं होती। पहली रोटी गाय के लिए, कुत्ते के लिए होती है, कौवे के लिए होती है। तो हमारे ऋषियों ने प्रकृति का कैसे हम आपदा से बचाव करें, ये लोक व्यवहार में ही बुन लिया है। तो सबसे पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ या ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, मनुष्य ऋण और भूत ऋण। अभी समय का अभाव है इसलिए मैं इसको विस्तार से नहीं बता रही हूं, पर आप नोट कर लीजिए। अब तो आपको चैट जीपीटी की सब मिल जाएगा। तो भारतीय ज्ञान परंपरा सबसे पहले जीवन दृष्टि देती है। वो दृष्टि से, वर्ल्ड व्यू से हमारे मेंटल मॉडल्स बनते हैं। वो मेंटल मॉडल्स हमें जीवन मूल्य देते हैं और जीवन मूल्य से लौकिक प्रयोजन होता है, हमारी प्रैक्टिसेस होती है। हम हमेशा कर्तव्य बेस्ड, ड्यूटी बेस्ड समाज रहे हैं, हम राइट बेस्ड नहीं रहे। आजकल जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो राइट बेस्ड है, पर हम हमेशा कर्तव्य बेस्ड थे। और इसीलिए सिर्फ ह्यूमन राइट्स नहीं पर अर्थ राइट्स, ये हमारे भूमि सुक्त, पृथ्वी सुक्त में हम देख सकते। और लोका समझता सुखिनो भवन्तु की बात जो हुई है, तो लोक यानी सिर्फ पृथ्वी लोक नहीं, जितने भी लोक है वहां के सारे भूत, सारे समस्त प्राणी जो प्राण से जीते हैं वो प्राणी है। अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ अपने को प्राणी समझते हैं, बाकियों को तुच्छ समझते हैं। तो किसी को भी हम तुच्छ ना समझे, ऐसी जीवन शैली भारतीय ज्ञान परंपरा में है। और हमें कुछ नहीं करना, हमारा तो सौभाग्य क्या है कि हम भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। हमें सिर्फ एक यू टर्न लेना है। सारा ज्ञान और विज्ञान हमारे पास है, संस्कृत यूनिवर्सिटीज है हमारे पास जिनके पास ये ज्ञान है। हमें जो भी हमारे मेन स्ट्रीम के करिकुलम है उनमें इस करिकुलम को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करना है, यानी एक जीने की कला हमें मिलती है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत ही सरल शब्दों में आपने बताया कि किस तरह से अपनी जीवन शैली को नियोजित करके हम इन आपदाओं से बच सकते हैं।
आपने बताया कि कॉलोनाइज सिलेबस की वजह से आज की यंग जनरेशन बहुत दूर चली गई अपने ट्रेडिशंस, अपनी लाइफस्टाइल से। उसी कॉलोनाइज सिलेबस को पढ़ के हम भी बड़े हुए हैं मैम। फॉर्चुनेटली मैं एक संस्कृत यूनिवर्सिटी में हूँ आज, और उसके चलते आज ये अवसर है कि हम इन चीज़ों पर बात भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे अंतिम स्पीकर को, प्रोफेसर विंदुमती द्विवेदी जी फ्रॉम उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी। She has done extensive research in the field of Advait Vedant Upanishads and other fields of Sanskrit and Indian knowledge system. So please, ma'am, grace us. Thank you, ma'am. मंचस्थ सभी महानुभावों को अभिवादन के साथ मैं वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। अभी मैडम ने जिस कहानी के माध्यम से हमारी धरती माँ के प्रति वह संवेदना जो कि हम निर्जीव और जड़ मानते हुए महसूस नहीं कर पाते कि धरती जड़ है, लेकिन भावनाओं को किस तरह से ग्रहण करती हैं हमारे सभी पंच महाभूत, इसका सटीक उदाहरण हमें मिला। हम जानते हैं कि हमारा जो ये संस्कृति और परंपरा, ये हमें टॉपिक मिला है, इसमें धर्म के आधार पर आचरण अगर हम कर रहे हैं तो हम प्रकृति के साथ न्याय कर रहे हैं, क्योंकि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः हमारी अवधारणा है। और यत्र विश्वम भवत्येक नीडम की बात हम कहते हैं कि सारा विश्व ही एक नीड के समान है, एक घोंसला के समान है। अर्थात हम सभी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, किस तरह से हम सभी एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे से हैं, ये सारी बातें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। एक एक वस्तु हमारे पंच महाभूत जो कि हम कहते हैं कि जिनके बिना अस्तित्व संभव ही नहीं है, वह सत रज और तम के न्यूनता और अधिकता के आधार पर हम सजीव निर्जीव जड़ चर अचर इस रूप में विभाजित हो जाते हैं। संस्कार हमारे जो होते हैं वे सदैव हमें इस ओर प्रेरित करते हैं कि कैसे हम त्याज्य और ग्राह्य का दोनों का विभेद करते हुए त्याज्य को त्यागते ग्राह्य को अपनाते हुए चलें। और हम अभी हमारे वीसी सर ने यहाँ पे एक उदाहरण जो दिया कि किस तरह हम राम राज्य की जब परिकल्पना करते हैं तो कहते हैं कि फूल ही फल ही सदा तरु कानन रहें एक सत गज संग गज पंचानन, जो दोनों विरोधी माने जाते हैं, लेकिन जब भावनाएं पॉजिटिव हैं तो विरोध सारा समाप्त है। और इस तरह हमारे संस्कृत साहित्य में जो संस्कारों के और इस तरह पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है, तो हम सभी जानते हैं कि जब पर्यावरण हमें अनुकूल मिलता है तो हमारा कवि एक बात कहता है कि द्रुमा सपुष्पा सलिलम सपद्मम सरह सुरम्य पवन सुगंधि सुखा प्रदोषा दिवसाश्च रम्याः सर्वं सखे चारुतरं वसंते। इस तरह अगर हम पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए, अपने कर्तव्य पालन को करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षा के प्रति डिवोटेड रहेंगे तो सदैव स्वस्थ समृद्ध सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। और इसी के लिए हमारी ये जो समिट होती हैं, संगोष्ठी होती है, पर्यावरण संरक्षण की बात कही जाती है, हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में वेदों से लेकर के उपनिषदों से होते हुए ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, ये सारे आरण्यक ग्रंथ तो जंगलों में रह करके ही लिखे गए। वहाँ ऋषि कितने कठोर तपस्या करके वहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, लेकिन चूंकि पर्यावरण के साथ एक सकारात्मक संबंध था और दूरदृष्टि थी
और सब कुछ संपन्न हो सका, इतना ऋषियों ने हमें इतना अच्छा शास्त्र दिया, वेद पुराण उपनिषद सब हमारे सामने आए। उपहवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत, क्योंकि नदियों के संगम पर ही और पर्वत की गुफाओं में ही तो वह बुद्धि प्रस्फुटित हुई, जिसके लिए हम कहते हैं कि मनीषियों ने, ऋषियों ने जिसे अपने प्रज्ञा चक्षु से देखा, उसी को लिपिबद्ध करके, उसी को शब्दबद्ध करके मंत्र के रूप में हमें दिया। उसमें हमें देखते हैं हम कि किस तरह जन से जन, पशु पक्षी वनस्पति सभी के प्रति कितना डिवोटेड भाव था, कितना जो है अपनत्व का भाव था। आज है कि हम वृक्षों के कटान को देखते हैं तो उसके लिए एक वाक्य आता है, एक पंक्ति आती है कि कहलने को तो बारिश में एक सजर गया, न जाने कितने परिंदों का घर उजड़ गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सेशन में अब बारी है हमारे सम्मानित अतिथियों के सम्मान की, तो मैं अनुरोध करूंगी हमारे वाइस चांसलर सर प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी एवं इस सेशन के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनय सेठी जी से कि वे हमारे आज के अतिथि सुब्रमण्यम जी का सम्मान करें प्लीज़। अच्छा, हाँ, मैं आमंत्रित करती हूँ वाइस चांसलर ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी से, डीम्ड यूनिवर्सिटी से, कि वो भी आकर आपका सम्मान करें। हाँ। पहले आप आए। हमारे सचिव महोदय, प्रोफेसर सुब्रमण्यम सर, डॉक्टर सेठी और डॉक्टर निधि से अनुरोध है कि वो हमारे वाइस चांसलर, प्रोफेसर माला कपाटिया जी, प्रोफेसर विंदुमती द्विवेदी जी, हाँ जी, थैंक्स सर। और उसके बाद सबको ना इनवाइट कर दीजिएगा संध्या है बीटेक ऑडिटोरियम, मेरा आना बीच में अपनी पे है। अब मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर सेठी को वोट ऑफ थैंक्स के लिए। उसके बाद सभी सांस्कृतिक संध्या के लिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। मैं सर्वप्रथम उत्तराखंड स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट एंड टेक्नोलॉजी के डीजी सर, पंत सर और समस्त अधिकारियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय एवं IIT रुड़की के संयुक्त तत्वावधान में इस सत्र के आयोजन की अनुमति प्रदान की। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर, एडमिनिस्ट्रेशन
समस्त शिक्षकगण और विद्यार्थियों का, आप लोगों का बहुत भरपूर सहयोग हमें इस सत्र के संचालन में मिला। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे आदरणीय सचिव सर संस्कृत शिक्षा श्री दीपक गैरोला जी। इस पूरे सत्र के केंद्र में वही व्यक्ति हैं। लगभग 3 महीने पूर्व माननीय डीजी सर के साथ हमारी एक बैठक हुई और वहीं ये प्रस्ताव रखा गया जो आज मूर्त स्वरूप ले सका। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने समस्त पैनलिस्ट का जिनका परिचय हो चुका है। सर आपने बहुत सरल शब्दों में, बहुत कम समय में गूढ़ बातों को बहुत सरल तरीके से हमारे सामने रखा। साथ ही साथ ग्राफिकेरा से डॉक्टर निधि मैम और विधि मैम, आप लोगों का बहुत सहयोग हमें Day 1 से मिल रहा है। सभी उपस्थित अतिथियों का बहुत बहुत सम्मान, प्रेस मीडिया, नॉन टीचिंग स्टाफ, पर्दे के पीछे जो लोग भी इस सत्र के संयोजन में हमारा साथ दे रहे हैं, हम उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उनका हार्दिक वंदन, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र के बाद एक ढोल दमोह का एक अलग से कल्चरल सेशन ऑर्गेनाइज होगा। आप सबसे अनुरोध है हमारी पारंपरिक विरासत को नज़दीक से समझने के लिए उस सत्र में आप लोग अवश्य प्रतिभाग करें। और मैं सर की अनुमति से सत्र समाप्ति की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय बोला कैला सुगा बोला महादेवा जय बोला कैला सुगा बोला महादेवा जय बोला हीरा बोला
क्या बात है, क्या जानदार और रिलीजियस परफॉर्मेंस थी। अब हम आप सभी के सामने लाने वाले हैं गणेश वंदना, पहाड़ी बोलियों की मिठास के साथ एक शुभ आरंभ की प्रेरणा के साथ। अब आ रही है वो परफॉर्मेंस दैट ब्लेंड्स नेचर, एक्सप्रेशन और मूवमेंट को, जो हम याद दिलाते हैं कि लाइफ एंड नेचर आर डीपली कनेक्टेड। द ग्रेट्स ऑफ पीकॉक, the gentleness of a deer and the emotions of human life. Let's welcome Sahil Kathek with his solo performance on the stage with a huge round of applause.
What a good start, Sahil. What a good start. जो रहमान के वो यूनेस्को तक लेकर गए हैं, संगीत अकादमी अवार्ड से सुसज्जित है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर D.R. पुरोहित फॉर डोल धमाऊ परफॉर्मेंस। Can we have a huge round of applause for him? I invite on the dais Dr. Sonlal, the ढोल maestro. सोनलाल जी आ जाइए अपने साजबाज के साथ। सुकारू दास जी आप भी आ जाइए अपने साजबाज के साथ। साउंड हो जाएगी। इसके अलावा मैं मंच पे बुला रहा हूँ सुंदर राम जी जो लमगढ़ा अल्मोड़ा से आए हैं और उनके साथी गोपाल राम, किशन राम और मुकेश कुमार। मैं कभी कभी बीच में अंग्रेजी में बोलूँगा, आप मुझे माफ करेंगे। तो जो ये ढोल परफॉर्मेंस एक छोटा सा केस आपको दिखा रहे हैं, इसमें 750 के करीब ताल है। आप थोड़ा सा इसका इको माइक का कंट्रोल इसके पास प्लीज। ये नौचंदी के जैसा सिस्टम बहुत जोर से आवाज आ रही है, इसका इको कम कर दीजिए, इको एकदम कम कर दीजिए जब तक हम बोल रहे हैं। और एक माइक और देते हैं, बहुत ज़्यादा इको हो रही है। वैसे ही ये जो ऊपर का चल रहा है इको इसमें ज़्यादा है, अब इको कम है। तो साउंड इसको चाहिए, एक माइक और रखिए साउंड के लिए। फिर भी आपने इको कम नहीं किया, इको कम कर दीजिए, एकदम कम कर दीजिए। तो हम एक साथ थोड़ा सा शब्द नौबत
जो नौमत लमगढ़ा के इलाके की है, सुंदर राम जी ये इसके बहुत जानकार है नौमत के, क्योंकि एक एक करके हम बहुत बार बताएंगे। आप थोड़ा धोया हुए डॉक्टर सोहनलाल को HND गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर में उनके ढोल ज्ञान के आधार पर उनको डी.लिट की उपाधि प्रदान की है 2 साल पहले। वातावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में जितने देवी देवता होते हैं, इसलिए इसको पंच नाम कहते हैं। हर एक क्षेत्र में 5 प्रमुख देवता होते हैं, इसलिए पंच नाम देवताओं के ताले बजाए जाते हैं। इसके बाद में तो जल्दी 2020 का मैच है ये। मैं सुंदर राम जी से प्रार्थना करूंगा कि नौमत बजाए, नौमत और फिर दोबारा बजाए। ये जो ढोल का एक पूरा शास्त्र है, इस विषय पर लोग की शास्त्रज्ञों की बहुत रुचि रही है। And in 1926, the first book was written and published on ढोल सागर by भवानी Parvati. In 1932, the second book was published by Brahmanand Thapia on ढोल सागर. In 1956, some material was published by Govind Jatak and Mohanlal Babur on ढोल सागर. In 1968, some research was conducted, PhD research was conducted by Professor Vijay Singh of Kumaon University, Vijay Krishna Kumaon University. In 1995, a book was published by this press, what is the name of that press code? Press Dugatta. And then in the year 2002, I also published a book. In 2004, Vichar Das published a book. In 2008, Professor Andrew B. Otter of Macquarie University published a book. And in 2015, Stefan Fiol also published some material on the book. So therefore, Jubilee Sari around 2010 published a book on ढोल सागर. So dear friends, it has drawn the interest, very like interest of many, because the taal of ढोल has attracted many scholars, many artists of this region. It is putting across the caste and creed. So therefore, it is a very important science. And Sonlal and Sukaradas, ये उनका सिलेक्शन सिलसिलानी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर के लिए भी हुआ। अब ढोल का मैं आपको थोड़ा फटाफट बताता हूँ। ये ढोल है, इसके कुछ पार्ट्स हैं। इसको कहते क्या कहते हैं? कुंडली, जो रिंग है नाग कुंडली, जिसमें ये पूरे खींचे रहते हैं। ये उठेंगे तो ढोल अच्छा बजेगा, दबेंगे तो नहीं बजेगा। और इसको जोड़ने वाले सर है 12 सर, ठीक है। और इसको थामने वाली ये है, ठीक है।
यहाँ पर अंग्रेजी में जिसे रिजोनेटर कहते हैं, जिसे आवाज होती है। और मैं आपको बताता हूँ मेरा आवाज तक है पूरी से पूरी है। जो आवाज उंगलियां है इसे भी तो लगता ये दबाव है, इसमें बोलना है एक रोग है, एक रोग है। को बोलूंगा कि मंगल स्नान के बाजे के सुर बताइए। मंगल 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 आपके सामने है। बोल के बोलेंगे, कान सुनने में बोलेंगे। ये मैं विभाग के 10-15 बाजे और बिकॉज सेमिनार ऑन द रिलेशनशिप ऑफ नेचर, इंडस्ट्री एंड सोसाइटी। ये जो है मछली के ऊपर से होके, जो नदी के ऊपर से होके बारात गुजरती है, तो मछलियां ताकि प्रसन्न हो उनके लिए एक विशेष ताल बजाया जाता है जिसको कहते हैं मच्छी फाट। बारात के बहुत सारे बाजे होते हैं, बहुत सारे ताल होते हैं, और कोई भी आदमी गांव के किसी भी कोने में बैठा हुआ उसको पता चल जाता है बारात कहां पे है। जैसे बारात चलने वाली है तो ये शब्द नहीं, बारात चल पड़ी है, आप भी बारात चलने वाला बाजा बनेगा। रास्ते पे चल देखिए, बारात जब चढ़ाई में चढ़ती है तो हर ताल में एक मजाक की एक जोक भी है। लोग कहते हैं ढोल बोलता है गढ़वाली में, उडिंगो कैची कर, उडिंगो कैची कर, और तमाम बोलता है चुमीकन पे निकल, चुमीकन पे निकल, चुमीकन पे निकल। जब बजे बजाई उतर नहीं करता।
स्नान के बाजे में, जरा मंगल स्नान का बाजा आप बजाइए, मंगल स्नान का बाजा। मंगल स्नान का देखिए, शादी के कुछ जोक्स भी बीच बीच में चलते रहेंगे। पुराने जमाने में लड़का लड़की को नहीं देखता था और लड़की लड़के को नहीं देखते थे, तो के बाजू में लड़की कभी लड़की वाले को ठगा जाता था, कभी लड़के वाले को ठगा जाता था। तो एक लड़का एक आंख से काना था, उसकी शादी हो गई, ले गए वो जो झालर वाला था कि ले गए दिखाने किसी ने। तो जब बारात चलने लग गई तो ढोल वाले ने संकेत में ताल बजाया। ताल का था कि काना भाई ने जग जीत लिया, काना जीता था जग जीत ले, काना जीता था जग जीत ले, काना जीता था जग जीत ले। और उधर से लड़की जो थी उसके पैर ठीक नहीं थे, तो लड़की वाला ताल बजा रहा, जब चलेगी तब दिखेगी, जब चलेगी तब दिखेगी, जब चलेगी तब देखेंगे। ऐसे संकेत भी चलते थे ढोल के साथ। तो बहुत सारी चीजें ढोल के साथ जुड़ी हुई है। और मैं ढोल पे जो क्या बोला, बहुत सारे ताल है, मुझे लगता है कि ये पूरा दिन लग जाएगा इतने तालों को सुनाने के लिए। 2000 में हमने बीज संस्था की मदद से एक महीने का एक वर्कशॉप आयोजित किया था, और उस वर्कशॉप में हम लोगों ने पाया कि 750 ताले ढोल की हैं। तब देखिए कुल 150 ताले हैं ढोल की, 750 ताले हैं। अलग अलग उत्सव की, अलग अलग गीतों की ताले हैं। मैं आखिर में मैं चाहूंगा छोलिया शादी के अवसर पर कुछ नाचने वाले लोग होते हैं, उनको छोलिया आगे आगे से नाचते हैं। लेकिन छोलिया बेसिकली ओरिजिनली युद्ध भूमि में जाने का एक बाजा था। और बारात की हमारे पहाड़ों में, हमारे देश में ऐसा लगता है कि वॉरिंग पार्टी जा रही है लड़की को लेके, इतने तड़क भड़क के साथ जाते हो जैसे कि वहां किसी से युद्ध करना हो। वैसे ही हमारे पुराने जमाने में छोलिया जो है एक तरह से युद्ध में जाने का एक बाजा था, जो शादी में प्रयोग किया जाने वाला। तो ये छोलिया का ताल आपने बताया। अब आखिर में मैं देखिए ढोल के साथ एक बहुत बड़ा गायकी का तंत्र जुड़ा हुआ है। हजारों गीत इन लोगों ने गाया है, हजारों गीतों को, हजारों गाथाओं को, इतिहास को इन लोगों ने अपने गीतों में संरक्षित रखा है। Since this is a technical university and this is a university, I must address the students that dhol should be understood in its entirety. And there is some dhol shastra and dhol beating system. So in the end, एक आप लोगों ने पांडवास वालों का एक सदैव गाना सुना होगा। उस गाने को मैंने अपने डिपार्टमेंट में सुवरलाल जी को बुला करके इनसे उन बच्चों को सिखाया था। और शिवचरण एक वादी थे, बेड़े बाढ़ थे, उनसे सिखाया था। आज वो चलते चलते कहाँ चला गया। सदैव का गीत, ये इनके गीत इतने ट्रैवल कर रहे हैं
और जो ये बच्चे अभी गा रहे थे, जय भगवती नंदा नंदा ऊंचा कैलाश की, सन 2000 में कल्याण सिंह रावत जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैंने उसके इस पहले गीत के अलावा सारे 2 घंटे गीतों का कलेक्शन नेगी जी को दिया था। अब सदैई का गीत गाया था। थोड़ा एक मंडान का ताल है, उसके बाद सदैई पहले तो वो साउंड दे दो ना। ये आपसे गढ़वाली में बोले हैं कि हिंदी माँ, गढ़वाली माँ की हिंदी माँ हमारी गढ़ का था गढ़वाली छन, और हम गढ़वाली माँ बोल रहा तब तो यू जिन्ना रहो कल्चर। तो गढ़वाली चैत का महीना, चैत वाली थोड़ा और कम करें। चैत के महीने में जिसमें ऋतुरहण गाई जाती है हमारे कई अंचलों में, उस जमाने में यहाँ चैती के गीत गाए जाते थे और सदैई गीत उनमें से एक प्रमुख था, इसलिए मैंने इसको आप लोगों के सामने रखा। तो बच्चों, इनका बहुत बड़ा शास्त्र गायकी का है, बहुत बड़ा शास्त्र बजाने का है। और मैं आखिर में, आप सब लोग दूसरे मूड में यहाँ बैठे हुए हैं, बेडूपा को 12 मासा की धुन के साथ इस पूरे कार्यक्रम का समापन कर। बेडूपा को 12 मासा, हाँ धुन साउंड लाओ यार हमारे लिए। अब एक मन्नाड़ जो बहुत कॉमन हमारा एक डांस प्रैक्टिस है पूरे गढ़वाल में, जिसमें अनाड़ी खिलाड़ी सारे एक साथ नाचते हैं, उसको मन्नाड़ कहते हैं। तो मन्नाड़ के ताल के साथ, बहुत ही कॉमन ताल है, हम लोग इसे मंच से प्रस्थान करेंगे। मुझे लग रहा है कि इस धुन में सभी लोग नाचेंगे और ये नाचने वाला करंट आपको मिल रहा है।
हो गया भाई। ढोल की प्रस्तुति के लिए बहुत कम समय था और जो हमारा जो बेडू पार्क के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। ये अब इस पूरे ये गीत इंटरनेशनल हो चुका है। ये इंग्लैंड के स्कूलों में भी गाया जाता है, ये अमेरिका के स्कूलों में भी गाया जाता है। और इस गीत की छोटी सी शुरुआत थी अल्मोड़ा के एक लाल बाजार के एक ढाबे से। वहाँ पे मोहन उप्रेती बैठे हुए थे और ब्रिजेंद्रलाल शाह तो एक नेपाली मजदूर आके ये गाना गा रहा था इस धुन में, 2 लाइन, बेडूपा को 12 मासों। तो मोहन उप्रेती ब्रिजेंद्र के पास गए कि यार ब्रिजेंद्र यार ये गीत कुछ और आगे बढ़ाओ यार, बढ़िया गीत है। उस समय वो गीत लिखा गया था और सबसे पहले मोहन उप्रेती ने इसको गाया था। अब ये पूरे समाज में एक इंटरनेशनल सॉन्ग बन चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आनंद नहीं है, साधना है। एक माइक का है। हेलो हेलो। क्या बात है, क्या बात है, क्या परफॉर्मेंस थी। अब हम राजस्थान के वाइब्रेंट रंगों में जा रहे हैं, जहां कल्चर अपने आप में एक सेलिब्रेशन होता है। दिस परफॉर्मेंस विल ब्रिंग टू द लाइफ द एलिगेंस एंड रिदम ऑफ घूमर, अ डांस दैट इज बोथ ग्रेसफुल एंड पावरफुल, रॉयल एंड रूटेड. Please welcome Team Sadhana with their duo performance with a huge round of applause.
What an amazing performance by Team Sadhna. Now we have to move to the hills again, to the rhythm and to the echo through the borderlands of Himachal and Uttarakhand, a group that has spent years preserving, practicing and presenting the folk spirit of the mountains, bringing authenticity, energy and the fragrance of the hills. Let's welcome on stage Team Devasthali with a huge round of applause. आंखों में चमक, हाथों में श्रम, साक्षात जैसे जगदम्बा। पुरुष खामोश पहरेदार है इन घाटियों के, थकान से आगे बढ़ना ही इनकी परंपरा है। मुश्किलों के बीच भी ये लोग पर्व मनाते हैं, संस्कृति और सम्मान सहित दुख भी गीत बन जाते हैं। ओ धानो जो दे सुल की रूणो क्यों दे, ओ गुणो कन करियो सकने तू है मेरे भादरे। ओरे शूनो के भद्रे, ओरे पापो जन्मा बिजलू कोटि भादरे, ओ साए भादरे, ओ साए कोटि भादरे, ओरे साए भादरे, ओ साए कोटि भादरे, ओ साए भादरे, ओ
सबके मन में बसते हैं। ये रिश्ता पूजा का नहीं, पहचान का है। यही देवभूमि की आत्मा है, सरल, सच्ची और पवित्र। What an outstanding performance by Team Devasthali. Next we experience a dance form that is full of colors, storytelling and cultural pride. The traditional Maruni dance of the Gorkha community. It is expressive, vibrant and visually beautiful. A performance that carries years of tradition. Presenting to you the team Gorkha Paltan. जाता है कि गाने समय एक राजा ने महिलाओं का नृत्य देखा, प्रभावित होकर स्वयं स्त्री बनकर नृत्य किया और तभी से यह परंपरा। यह नृत्य एकता और समानता का प्रतीक है। तो आइए हम प्रस्तुत करते हैं मारूनी नृत्य।
समय में यह नृत्य पैसाझरी मारूनी के नाम से जाना जाता है। यह नृत्य खासकर दसई, दशहरा और तिहार, दीपावली के अवसर पर किया जाता है और यह नेपाल के साथ साथ सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र में भी बहुत लोगों को यह नृत्य पसंद आता है तो वे आदर और सम्मान के रूप में उन्हें पैसे देते हैं। इसी कारण इसे पैसाझरी मारूनी कहा जाता है। तो आइए हम प्रस्तुत करते हैं पैसाझरी मारूनी नृत्य। performance by you. और अब आज की शाम के अंत की तरफ बढ़ते हुए, which takes us into the cultural and devotional traditions that celebrates Goddess Nanda Devi, a symbol of strength, grace and divinity. From Chandigarh to Narayani, Jagdamba to Bhagwati, this performance captured devotion in its own many forms. Please welcome on stage team Day2 from NSS.
देवस्थले. So now for more grooving and dance, let's welcome on stage Samriddhi Sharma, Research Associate in UCOS, with a huge round of applause. Before having a huge round of applause for Samriddhi, जो मेरे से कुछ गलतियां हो गई हैं स्टेज पर, मैं उनके लिए माफी मांगना चाहूंगी. So, जो पिछली परफॉर्मेंस थी वो थी टीम देवभूमि. अब देवस्थली को तो उसकी तालियों की गड़गड़ाहट मिल गई थी. क्या हम टीम देवभूमि के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं? So now, let's welcome on stage Sakshi, PM Shri Kendriya Vidyalaya, IIT Bhogampur.